हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो? दिस वाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो? आर्कन क्वेस्ट कंटिन्यूज। यस, आर्कन क्वेस्ट फिनिश करना है आज गाइस। हे ब्रिजेश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। लेट नहीं, मैं जल्दी आया वैसे ब्रिजेश भाई, नो लेट, एकदम टाइम पे आया, काइंड ऑफ लाइक अर्ली आया मैं तो वैसे। कैसे हो ब्रिजेश भाई? कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहा सुदेश भाई आपका दिन? मजा आया आज? मजे लिए कि नहीं पहले ये बताओ। तो आज फिर भी लेट। अच्छा ठीक है भाई, चलो ओके, कोई ना, लेट ठीक है, एज यू विश। जिस भाई हम लेट, कोई बात नहीं। तो गाइस आज लाइक नहीं किया, दैट लाइक बटन लॉन्डो फटाफट। हाँ, तो आज क्या करना अपने को? पहले अपने को फरीना सीटू निकालना है, ठीक है? निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो भाई हेलो टेटली भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। कैसे हो, क्या हालचाल, कैसा रहा आज का दिन? तो आज हमें करना है सीटू फरीना निकालना है, आर्कन क्वेस्ट करना है, एंड मे बी लास्ट में देखते हैं क्या करते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया क्योंकि आर्कन क्वेस्ट ही काफ़ी लंबा चलने वाला है। कॉलेज बंक मार के स्ट्रीम किया, मजा आ गया। अरे भाई डैम ब्रिजेश भाई, जॉड बोलते भाई, जॉड बंक मार के स्ट्रीम, ठीक है भाई, ये कर लो आप वैसे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कभी कभी यार यही मेमोरीज तो बनती है ना। कैसा लगा वैसे फर्स्ट टाइम स्ट्रीम करके? हाउ डू यू फील? प्रॉपर स्ट्रीमर वाली फीलिंग आ रही थी कि या फटके हाथ में आई हुई थी? क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब स्ट्रीम किया था भाई, मेरी तो फटी पड़ी थी, पता नहीं क्यों इतना क्यों डर रखा था, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। तो बिना कोई और बकचोदी करते हुए भाई चलते गेम में सीधे, क्योंकि अपने को आर्कन क्वेस्ट करना है, फरीना सीटू निकालना है, वो ज़्यादा मेन फोकस है हमारा, ठीक है? तो लेट्स गो अहेड विदाउट एनी बकचोदी, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम पे स्टैंडर्ड से वो स्काइवर्ड कैटलिस्ट वाली वेपन निकल। अरे जॉड बोलते भाई, पहले स्ट्रीमर लग लेके घूम रहे हो क्या? स्ट्रीमर लग कर वो स्ट्रीमर लग बोलते। एक सेकंड, मेरा लाइव चैट किधर गया बे? इतना टाइम क्यों लगाता है ये खुलने में? हेलो 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 हेलो, हाँ आ गया। कुछ सेकंड ले लेता भाई स्ट्रीमर, आई मीन लाइव ये खुलने में। हाँ फर्स्ट नहीं है, अराउंड थर्ड या फोर्थ स्ट्रीम में। ओके फर्स्ट नहीं है, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मतलब अच्छा लगा ना करके, ऐसा फील हुआ। आई मीन नया पीसी में फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, राइट? न्यू पीसी है ना आपका, तो आपने नया पीसी लिया भाई, पैसा वाले लोग देख रहे हो भाई, 1.5 लाख का पीसी दिया भाई ब्रिजेश भाई। हमें भी स्पॉन्सर कर दो यार ब्रिजेश भाई, गरीब का भला लगेगा, आपको दुआ लग जाएगी। खुल जा भाई यार, अपने को ना एक ये लेना पड़ेगा यार, एग्जिट लैग, वी नीड एग्जिट लैग भाई, विदाउट एग्जिट लैग मज़ा नहीं आएगा भाई। 250 पिंग आ रहे हैं भाई, वो दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, एग्जिट लैग का नशा लग गया भाई। बात करता हूँ डीमन। अरे जीवन में दूध पीने के पैसे नहीं हैं। अरे किस कौन सा दूध पीने की बात कर रहे हो, पहले ये तो बताओ हमें।
सा दूध पीने की बात कर रहे हो? मेरा एक दोस्त था लॉकडाउन में इतने वीडियोस बनाया, फोर्टनाइट पे 70 के सब्स हो गए, फिर उस गांडू ने वाईटी छोड़ दिया। लिटरली कैरियर बनाता था, कैरियर बना सकता था वो, उससे एक्चुअली फोर्टनाइट गेम डेड है यार, फोर्टनाइट गेम ही डेड है। केवाईसी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। एवरीवेयर आई गो आई सी मोए मोए, यस भाई मोए मोए, जो भी आप समझो भाई। हाँ ठीक है भाई। Solidify order guide. नॉटी हो रहा है जाड़ में है ब्रजेश भाई, नॉटी नॉटी हो रहे हो। outlines your fate. Gather. The bond is strong. ओके भाई, कमीशन डन। रेजिन अपने को क्या करना है आज? अपने को रेजिन में क्या करना था? मोए मोए तो हर एक जगह चल रहा है यार, मोए मोए तो हर एक जगह चल रहा है। पास बोला भाई दूध पीने के लिए पैसे नहीं है, मजा आ गया। अरे ये बताओ क्रिएटली भाई, तुमको ये किसी ने गिफ्ट नहीं किया क्या? यार मेरे पास तो खुद ब्राउन नहीं है यार, तो मैं दूसरों को क्या ही गिफ्ट करेगा। आज सारे रील्स खत्म कर दिए क्या? लेगलेस नॉन फिशिंग क्रिएचर, यार ये तो सारे भाई इधर इधर पड़े हुए हैं। इनाजुमा में है कुछ, इधर कुछ डेजर्ट में है। लेट्स ट्राई। मेरे को थोड़े बहुत प्लेसेस के तो पता है कहाँ है। आज बॉस मारना था। हाँ किसका बॉस वैसे? क्रेटली का, सॉरी क्रेटली कह रहा मैं, रिजली का बॉस मारना था। गोभी ले ले, लाई लाई लाई, मोए मोए, गोभी ले ले। एक सेकंड, मैंने ये वाला मीम नहीं देखा वैसे तो। व्हाट इज गोभी ले ले? औकात दिखा दी वाला मीम देखा मैंने, वो काफी मस्त लगा मेरे को भाई। और भाई औकात दिखाती हैं, ठीक है भाई। औकात दिखा देने वाला मीम भाई। अरे उसको सोच रहा था मैं डालूं रे रिडीम में, 3-4 रिडीम डालने। सैटरडे को बैठ के मैं सारे रिडीम्स डालने वाला हूँ। नाहिदा का बॉस, नाहिदा लेवल 90 है ऑलरेडी। 90 है नाहिदा। टैलेंट अप करना है। ये वाला बॉस कह रहे हो? ये वाला ना, ये तो मारना ही है। मेरे को लगा लेवल 90 है नाहिदा तो। यो किरितो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। यो सब प्रियांश बिरादर, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं बिरादर, तुम कैसे हो बिरादर? टैलेंट अप मटेरियल का हो ना। रुको इसको पेल के आया भाई। स्टार्ट बॉस मारने, तीनों बॉस मार लेते, कोई दिक्कत ना है। ये भी मार लेंगे, इसको भी मार लेंगे, सबको मारेगा भाई, एक एक करके सबको पेलेगा मैं। वेक अप यू स्कारामुशी, वेक अप। पैसा चल रहा है गिरी तो भाई। हाँ। और कोई परेशान तो नहीं किया ना आपको? हाँ अरे यार ये कब भाई, ये कब ट्रिगर होगा भाई? भाई पेस्ट बोल दिस भाई पेस्ट। अरे हाइपर ब्लूम जा क्यों रहा है मेरा, ये तो बताओ पहले। आई एम कंफ्यूज। मेरा हाइपर ब्लूम तक के जा कर रहे हैं। मेरे हाइपर ब्लूम देखो रे, कहाँ चिटक के जा रहे हो? सैक्रिफिशियल नहीं ना है, सॉरी क्या बोलते हैं, चलो भाई मैं आता। हॉस्टल मिनी मिलिशिया में जाना पड़ेगा। हॉस्टल मिनी मिलिशिया में, मिनी मिलिशिया भी खेलते हैं भाई, अच्छे ही हैं बिरादर। आप बताओ न्यू शोकेस चल रहा है क्या? नहीं न्यू शोकेस नहीं चल रहा। मैं बस नाहिदा के लिए मटेरियल फार्म कर रहा है इस अकाउंट में।
नाइदा का टैलेंट अप करना है, फिर जोंगली को लेवल अप करना है यार। इस पीछे कहूँ मैं काफी थोड़ी चल हाय 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 Filth! Let's change tactics. अबे भाई फोटो ऑन होगी इस भाई। Your eyes have been opened. भाई कैमरा ऑन हो गया भाई। व्हाट इज दिस गेम? व्हाट इज दिस गेम भाई? गड़बड़ घोटाला हो गया मेरे साथ भाई। Reality? Solidify! हाँ सीरियसली जोंगली चिट्टा। Good riddance, cruel world. फोटो खींच लिया मार रहे। अरे स्केम हो गया मेरे साथ तो भाई। Stabilize. Grow. No, my soul. Commit it to memory. अरे मैं सोचा क्या हो गया उसको, कैसे नहीं लगा झटके? व्हाट द हेल? अरे अभी मरता हुआ है उसके क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से। मैं कहा उसके बाजू से क्यों निकल गया भाई? Solidify. Ring cutter. Out of my way. Grow. I will have भाई बहुत लो डीपीएस है रे कैरेक्टर के भाई। बिल्कुल भी भाई एकदम औकात दिखा दी भाई इसने तो। Outlines your fate. kneel. Reality? Stabilize. डे 2 अब 7 बजे रेगुलर डैमेज कहाँ है? थोड़े से कैरेक्टर्स भाई लो हैं, इसमें बिल्ड नहीं है ना इसलिए डैमेज नहीं है। अबे मैं क्या देख रहा भाई? मैं देख रही I was भाई मेरी नाइदा भाई दूसरी बार मर गई भाई इस बॉस को मारने के चक्कर में भाई। व्हाट द हेल इज दिस भाई? व्हाट इज दिस ब्रो? व्हाट इज दिस एचपी? ओके लॉक कर देते ठीक है। एक मिला इधर भाई, एक मिला इधर। डैमेज बहुत कम है भाई कैरेक्टर्स के। आई गेस नाइदा को भाई अभी टैलेंट अप करना पड़ेगा। है फैंडम भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। वैसे सुधांश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो? दोनों का दिन कैसा रहा आज का? कार्ड भेजे थे रियांश भाई। कार्ड भेजे थे रियांश भाई। सालों ने आज ही इवेंट खत्म कर दिया। ऐसे इवेंट है रे अभी 24 घंटे हैं शायद इवेंट में। गेम गॉड भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। मोय यस मोय गाइस मोय हो गया भाई पूरा फुल मोय हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं क्या। अरे भाई किधर है? हाँ अरे ये इवेंट अभी भी है। भैंस की टांग अभी है भाई 6 घंटे में जाने में भाई। किधर है भाई? मेरे को ना खाना वाला वो लगाने दो भाई। लुल रे। अरे ये वाला क्वेस्ट कर रे मेरे भाई। वैसे क्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ और है।
ओके मैं सोच रहा किधर गया वो। ये अकाउंट हमारे क्रेटली भाई का है। क्रेटली भाई का अकाउंट में थोड़ा सा ग्राइंडिंग चल रहा है। स्कारा इज बेटर देन नाइदा। अरे भाई हाँ हाँ क्योंकि का एक ही लहर है। रियान भाई फूड क्यों खाया? ध्यान नहीं आया भाई, मेरा ध्यान अभी भटका पड़ा है। लॉन्डो हम क्या करें, माय बैड। थोड़ा सा ध्यान भटका पड़ा भाई लॉलीपॉप खाने में। भाई ध्यान भटका पड़ा मेरा लग रहा है। कोई बात समझ में तक नहीं आया भाई मेरे सिंचो पे क्या है उसका। क्रेटली अगर लॉगिन करना ना अकाउंट तो वेपन अपग्रेड करना, ठीक है ना? वेपन अपग्रेड जरूरी है, ठीक है? भाई ने नाहिदा को कोई सीरियस नहीं ले रहा भाई। Solidify. Body strong. No, my soul. Gather. Everyone okay? देखो नाहिदा कितना स्ट्रगल कर रही है यार। Make yourself a room. Hey. हेलो थैंक्स वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल, कैसे हो? Stabilize. Row. No, my sword. अरे कौन से फेजेस देखने को मिल रहे हैं इस बॉस के जो मैंने कभी देखे नहीं भाई। This is order. 700 का ब्लूम क्या देख रहा है क्योंकि क्या हारे पता नहीं क्योंकि भी बिल्डिंग है ना प्रॉपर। कैरेक्टर इस अकाउंट में कैरेक्टर बिल्ड करने बाकी नहीं यार। रुको कुकी देखने दो, रुको कुकी का ईएम देखो रे। कुकी का ईएम बिल्कुल नहीं है, देख रहा हो कुकी को क्या बिल्ड रखा है मैंने। एचपी बिल्ड है कुकी मेरी। अरे इसका मैंने इसको एलिमेंटल मास्टरी दिया था ना। टिकनाहारी छोड़ो सबसे पहले, टिकनाहारी तो बिल्ड करेंगे बाद में। एंड्रॉइड वेलकम टू द स्ट्रीम। सीटू फुरीना मिली नहीं मिली रे भाई, अभी कुछ देर में निकालेगा मैं सीटू फुरीना। होप तो मिल जाए। Solidify. Body and not. Let me read you a verse. Rain outlines your distance. The Temple of Wisdom. Hey. Gather. I will have order. Power football. Out of my way. Stand with me. Come on, let's go. Why so slow? Everyone hold hands. Stabilize. Rain outlines your fate. Bond is strong. This is order. Gather. Rain cutter. I see everything. Everyone hold hands. भाई कितना टाइम लगेगा यार। नो फकिंग वे भाई।
अगले बार से ये डोमेन कर। अरे यार ये डोमेन खुला भी तो नहीं है ना यार, अकेले ही करना पड़ेगा मेरे को, ये दिक्कत। I see everything. फाइनली लेट्स गो। नो C2 स्किल इशू। अरे जितेंद्र भाई क्या करे वैसे। वेलकम टू द स्ट्रीम। एंड्रोस कैसा है रे, कैसा रहा आज तेरा दिन? C2 NHK गाइस आज C2 निकाल लेगा मैं, ठीक है। कोई सारे NHK वाले लोगों को भाई सबको एक एक करके देख लेगा मैं, ठीक है। सबको देख लेगा मैं सब जितने। अबे भाई ये क्या है? ओके ओके टैग हो गया था, मेरे को लगा टैग नहीं हुआ। Know my soul. Time to act. Witness the power. Bond is drawn. Here my love. Committed to memory. Solidify. Let's change tactics. हाँ अरे भाई उसको इसके अंदर था फिर भी मेरे को डैमेज पड़ गया भाई। I will have जोंगली का शील्ड भाई, जोंगली का टैलेंट क्या है भाई शील्ड दिखाने को, देखने दो भाई। पूरा खिचड़ी पक रखा है इसे काम में भाई, पता नहीं कैसे कैसे करेगा मैं। solidify. Body and कम ऑन प्रॉक हो जा भाई। सैक्री क्या कर रहा भाई? हेलो भाई फवोनियस प्रॉक ही नहीं हो रहा, व्हाट द हेल। Stabilize. I see everything. Solidify. Know my soul. Ring cutter. Stand with me. Terrified. गाइस तुम लोगों ना आज नए नए। अबे चुमतिया है क्या ये बॉस? Now kill. साले मैं तेरे को ना वन शॉट करेगा अपने वन में भाई। कितना इधर उधर भाग रहा भाई ये। Make yourself a room. अरे मेरे भाई एक जगह Outlines your fate. इतना भागेगा भाई तू, ठीक है यार। Stabilize. भाई ये बॉस एक जगह नहीं रुक के भाई इसने औकात दिखा दी भाई। गाइस ये बॉस एक जगह नहीं रुक रहा है, इसने औकात दिखा दी भाई अपनी। Bond is drawn. Everyone hold hands. I let my guard down. Know my soul. Witness the power. This way turn a little. चलो गाइस पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं। श्रेष भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। डैम डूड ओह स्ट्रगल भाई स्ट्रगल। डैम भाई नो फकिंग वे भाई। सारा इस बॉस को भाई मुश्किल से दूसरे फेज में जाने देता हूँ भाई। ये देखो इधर भाई तीसरा चौथा पता नहीं कौन सा फेज कर लिया इसने तो। गेट गिजरा C2 के लिए अभी भी। श्रेष भाई एक काम करो ना यार, ये कर दो यार, टॉप अप कर दो यार। हाँ गेट नहीं घिसेगा मैं फिर। टॉप अप कर दो, हाँ, गरीब की दुआ लग जाएगी। हो गया भाई, बहुत घिस लिया भाई बॉस में भाई, बहुत घिस लिया भाई। कुकी का औकात दिख गई भाई, कुकी का औकात दिख गई गाइस, कुकी का औकात दिख गई। सबसे पहला काम भाई कुकी को फिक्स करना है। तुम टिकनहारी को बिल्ड किया ना, तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देगा मैं पहले बता दे रहा। नहीं बताओ, आने का कोई फायदा नहीं। अभी रुको मेरे को कैरेक्टर बिल्ड कर लेने दो। एलिमेंटल मास्टरी है क्या कोई दूसरा? हाँ HP भाई, क्रिट डैमेज, HP क्रिट रेट भाई। अरे इतना फार्म किया रे मैंने, उसमें अभी तक नहीं मिला। नो फकिंग वे। 4 पीस गिल्डेड नहीं हो रहा है क्या भाई अपने पास? ट्रेडिंग में
दुआ और मोए मोए हेड से ठीक है भाई। नाइदा एक्ट 2 से बोनस अनलॉक होगा मे बी। हाँ अंश भाई वैसे वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? ग्रेटली भाई करेंगे वो तो इतने टाइम से। अरे भाई ये गेम में इतने टाइम से खेल रहा हूँ पर वन ऑफ द बेसिक चीज़ मंथ पता चली है, सैक्रिफिशियल वेपन शील्ड वाले एनिमीज पे काम नहीं करता। क्या बात कर रहा हो, अभी आपको पता चला? सीरियसली शील्ड वाले एनिमीज पे सैक्रिफिशियल प्रॉक नहीं होता है? डैम AR60 प्लेयर हो आप, क्या बात कर रहे हो? आपको ये बात नहीं पता थी भाई? ये कर रहे हो तो थैनोस भाई गेम डिलीट मार दो तुम। हाँ ऑल डिफेंस नहीं रे, EM चाहिए गाइस। डिफेंस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। EM मांगता भाई लेकिन अपने को ये वांती है। अबे HP में क्यों जा रहा? वैसे HP पे भी हील करती है वैसे तो, बट वी नीड EM अटैक्शन। क्या भी AR है ना यहाँ। ये है इस अकाउंट का अलग HP एंड डिफेंस में गया। कोई ना इस अगर मैं अपने जैसे अकाउंट को फिक्स कर सकता हूँ, इतना अच्छा बिल्ड कर सकता हूँ, तो तुम्हारे अकाउंट भी फिक्स हो सकता है। सो डोंट वरी, कोई भी अकाउंट एक इससे बाहर नहीं जा सकता, फिक्स हो जाएगा। बस कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, धीरे धीरे आर्टिफैक्ट मिल जाएंगे सब। पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि कैरेक्टर पहले 90 हो, उनका वेपन 90 हो, उसके बाद आर्टिफैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहले कैरेक्टर एंड वेपन। डैमेज फाइनली ठीक है आई गेस। और एक कौन सा है भाई इधर? इसको फिलहाल के लिए लॉक करेंगे। और ध्यान रखना पहले जब भी आपको टाइम मिले ना तो आप काम करो, जो वेपन है सारे लेवल 90 करने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? इसका भी टैलेंट अप करना भाई, बहुत फार्म। नया कैरेक्टर आया तो तुरंत उसको बिल्ड करने मत लग जाना, ठीक है? सिंपल सी बात। नया कैरेक्टर आया तो उसको फटाक से बिल्ड करने मत रहना। और इसको भी रोक के रखना पड़ेगा अभी, ठीक है? अभी अपने को सबसे पहला काम है कि हाइपर ब्लू में एक टीम तैयार हो जाए तुम्हारी। सबसे पहले तो जोंगली लेवल 70 पे है, देख रहे हो गाइस? लेवल 70 जोंगली देखा है तुमने? टैलेंट देखोगे इसका 6 है भाई, 6 है टैलेंट लेवल 6। क्या शील्ड बनाएगा ये जोंगली? इसका अकाउंट है क्रेटली का है। आ जाओ फार्म करते हैं। रुको एक सेकंड, मेरे को चेक करना है। अरे स्ट्रॉन्ग बॉक्स में डीपूट आ रखा है क्या? आ गया ना स्ट्रॉन्ग बॉक्स में डीपूट की नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया ना स्ट्रॉन्ग बॉक्स में। एक बार क्रॉस चेक करना। अगर स्ट्रॉन्ग बॉक्स में डीपूट आया तो फिर हम लोग ये वाला डोमेन फार्म करेंगे, न्यू वाला, और सारे फीड करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉक्स में। डीपूट तो है अपने पास वैसे। No depot on strong box। नहीं आया। ओके आई सी। मेरे को वैसे अभी डीपूट फार्म करने की जरूरत नहीं है सच्ची बताऊं तो। कोई और दूसरा कैरेक्टर दिख नहीं रहा है मेरे को हाइपर ब्लूम में बिल्ड करने के लिए, ठीक है? तो आई गेस अभी फिलहाल के लिए मैं क्या फार्म करूं मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं कौन सा कैरेक्टर बिल्ड करूं? टेनेसिटी पे बिल्ड है जोंगली ऑलरेडी, ठीक है? टेनेसिटी पे है, ट्रिपल HP पे है, ठीक है? टेनेसिटी पे ऑलरेडी बिल्ड है जोंगली। अगर मेरा सिंपल सा देखे तो यार आय का फ्रीज पहले बिल्ड कर लेना चाहिए, लेकिन आय का भी ठीक ही बिल्ड है यार। डैम काइंड ऑफ ओके सब बिल्ड है। आर्टिफैक्ट ब्लिजर्ड देख रहे हो, ये पीसेस हैं आय का पे। क्या मारेगी आय का यार? अटैक। ओह माय व्हाट इज दिस? डबल अटैक चला रही है आय का हमारी। सिंचू गिल्डेड पे है। एम्बलम में ठूसना पड़ेगा गाइज मेरे को।
वही डोमेन करके एम्बलम में ठूसना पड़ेगा, सिंचो शंगलिंग बिल्ड करना पड़ेगा, फिर बेनेट। ये 3 कैरेक्टर सबसे पहले बिल्ड करने, कोई भी अकाउंट फिक्स करने से पहले। चेकआउट माय फुरीना मैन। अरे कितना बार चेक कराओगे यार? कि तो भाई हर एक तीसरे दिन आप फुरीना ही दिखा रहे हो यार, क्या करूँ मैं? किसी भाई की स्ट्रीम पे देखा तुम्हारी फुरीना भाई? वेलकम बैक टू दिस। कुछ मेंबर्स अब कर रहे हैं आज? नहीं कर रहा वैसे तो करना है क्या आपका? आ जाओ आ रहे हो क्या? क्रेटली भाई आ रहे हो क्या? डोमेन में आ जाओ जरा। किरी तो आईडी सोच नहीं करना है क्या आपका? खुश भाई करना है तो भेजो, मैं कर देगा, आया कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर्कन क्वेस्ट कर लेगा। अगर आपका है अब इस करना तो आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम नहीं। रिव्यू से याद आया, मेरे भी देख लेना आईडी। ठीक है गाइस, तो ये वेट करना पड़ेगा। लाइक करो यार, कितने लोगों ने नहीं किया? कितने लोगों ने लाइक नहीं किया? गाइस हिट दैट लाइक बटन, दो लाइक करो रे। अरे नहीं, अरे तो बोलो ना, बोलो। हमें लगा आप पूछ रहे हो तो आपका बिस करना है। एक्सेप्ट करो। सुदेश भाई का साबुन स्लो है गाइस, सुदेश भाई हमारे सबसे स्लो है। ठीक, हाइपर ब्लूम टीम ले लेना गाइस। मेरी फुरीना रिव्यू बेस्ट फुरीना इन द वर्ल्ड, नो द यूनिवर्स। ठीक है भाई, वेरी फनी ब्यूटीफुल। अरे हीलर भी चाहिए क्या? पिछवाड़े में आग लगवाओगे क्या ये लेके सुदेश भाई? एक तो अपने भाई इस खुशी से कैरेक्टर है इधर, और तुम भाई फुरीना लेके एचपी खा जाओ। हीलर चाहिए? हीलर ले लो। हेलो, पिटवाएगा ये आदमी। ओ भाई ये टेररिस्ट क्या कर रही है इधर इस अकाउंट में भाई? तभी तो कहूँ भाई लक क्यों इतना खराब चल रहा है बीसी भाई। ये टेररिस्ट जो है भाई इस अकाउंट में भाई, अब समझ में आया भाई क्यों इतना लक खराब चल रहा है। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Ride and shoot Stories gun, really make for terribly dull reading. अरे क्या कर रहे हो? I see the value in my दिस भाई फुरीना लेके फिर राइडर पे स्विच कर लिया। गजब आदमी हो तुम यार, मानना पड़ेगा भाई। लो फिर ये ले लो, क्या बोलते कोई हाइड्रो कैरेक्टर ले लो। रेडली भाई कोई हाइड्रो कैरेक्टर ले लो। सुदेश भाई तुम तो गजब आदमी हो भाई। वो टेररिस्ट फर्स्ट कैरेक्टर है इस अकाउंट पे भाई, तभी तो कहूँ भाई ये अकाउंट की तरह कस्ट है भाई। वो टेररिस्ट है भाई इस अकाउंट में भाई। अभी मैंने फोकस किया कि भाई टेररिस्ट है इधर। तो राइडन शोगन बेस्ट C3 करने वाला हूँ मैं तो उसका भाई। राइडन मॉमी को C3 करने वाला भाई। C3 आएगी तो 4.3 में आ रही है भाई। जितने विश होंगे भाई उस पे लगा देगा मैं C3 के लिए। आई नो अगर अर्ली मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुनने में है मैंने सुना है क्लिप हाँ रे हाँ भाई सुना है भाई। पढ़ रखे तो आई वांट क्लिप बट लॉस्ट 52 टाइम्स ऑन हर। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें टेररिस्ट चाहिए भाई? जान पे यूज कर लो भाई, वो तो भाई लॉयर है कम से कम। ये तो टेररिस्ट है भाई, टेररिस्ट। व्हाई यू नीड टेररिस्ट? चलो मार देना फटाफट। मैं अरे नहीं यार अभी 2 फेज है ना यार इनके। अरे बंदे नहीं मर रहे क्या? हेलो इससे अच्छा मैं सोलो कर लेता। क्या फायदा तुम लोगों को बुला के भाई, इतना टाइम लगा रहे हो। इतना टाइम तो मैं सोलो में लगाता हूँ। अरे तो इसको मार लो। NH के गाइस जो प्रो बंदे आए हैं वो भी प्रो नहीं निकले भाई। ये कौन यूज कर रहा भाई? लो फाइव वेपन कौन यूज कर रहा पहले ये बताओ। अब देख रहा मैं बीटी नहीं है आज चैट में, बिल्कुल नहीं है भाई। चैट में बीटी नहीं है भाई, बीटी नहीं है। एलिमेंटल मास्टर ठीक है भाई। देख रहे हो गाइस कैसे कैसे आर्टिफैक्ट लॉक करने पड़ रहे हैं मेरे को। यू सी
श्रेयस भाई मत देखो यार, मत देखो ऐसे भी क्या बोलते हैं नाइदा सब कुछ देख लेती है, कहती है आई सी एवरीथिंग। एक तो ऐसे ही डर लगता है भाई, किसी दिन दिमाग पढ़ ली तो भाई पता नहीं क्या क्या देख लेगी दिमाग में, हमारे क्या क्या ख्याल रखे हुए हैं हमारे दिमाग में, गया पता नहीं, आई डोंट नो। गिव अवे का दिन दिखेगा भाई, पता है फिर क्या कहेगा, ए रेयांश मेरे को वेलकिन दे दे यार, मेरे को वेलकिन दे दे। और भाई और दूसरे दिन किसी दिन नहीं दिखेगा भाई स्ट्रीम पे, जिस दिन गिव अवे होगा उसी दिन आएगा भाई वो बंदा, लिख के दे रहा मैं, और कहेगा मेरे को दे दे यार वेलकिन प्लीज रेयांश, मेरे को दे दे। Stabilize. बफर और या बीसी बफर हो रहा वो वाईटी का प्रॉब्लम है रे। बिटरेट कम करूँ क्या? बिटरेट कम करूँगा फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक तो चल रहा है यार, वाईटी का प्रॉब्लम है। Solidify. Everyone hold hands. आटा दे दी। ठीक है, पक्का क्या देगा, एंड्रोस ने बोला भाई मैं दे देगा, 100% देगा ये। अब मैं बोल देगा एंड्रोस ने बोला ये चीजें, ठीक है। नाइस पीस, ये टोटली ट्रैश। जरा रुको रे, कंडेंस बना लूं। क्या रेसिस्ट हो रहा भाई, मैं थोड़ी रेसिस्ट हो रहा भाई, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हो रहा भाई है। कंडेंस कर लेने दे भाई, कंडेंस 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 कंडेंस, वेयर इज कंडेंस। इस अकाउंट पे बस CR/CD मिल रहा, इस अकाउंट में सीरियसली रेसिस्ट तो मैं हूँ, देख रहा हूँ। एक काम करो डिलीट कर दो, फिर क्या ही फर्क पड़ता है यार, कंडेंस रहने देते, कल यूज कर लेंगे, क्या बोलते हो गाइस? एक रन कर लेते, लास्ट रन 2 कंडेंस बचा लेते कल के लिए, इधर 1 रन और हो जाएगा अपना, क्योंकि 20 रेजिन पड़े हुए थे, 1 रन और कर। कल तो सब मस्त यार, आर्कन क्वेस्ट एंजॉय कर रहे थे, मजा आ रहा था भाई देख के। एक्सप्लेन भी करना है आज आर्कन क्वेस्ट गाइस, कितने लोगों ने, वैसे मैंने सब मेरे ख्याल से सबने आर्कन क्वेस्ट कर ही लिया। Personally, आदित्य मोय मोय किया है तो लाइक भी करना पड़ेगा फिर, मोय मतलब लाइक, फटाफट लाइक करो। चलो कैसे आदित्य, वेलकम टू स्ट्रीम। मोय आदित्य, हाउ यू मोय एवरीथिंग मोय, हाँ लॉन्ग टाइम मोय, हाँ एक सेकेंड पढ़ रहा अंश में, पढ़ रहा आपका भाई, मैं कुछ पढ़ रहा। अब मारने दो। मैंने फर्स्ट टाइम गेंशिन 2020 में देखा तो शायद खेला भी था, मुझे तब नहीं समझ में आया कुछ, फिर मैंने छोड़ दिया था, और अब 2030 में खेल रहा। उस टाइम एडवर्टाइजमेंट में भी शायद, एडवर्टाइजमेंट में शायद, ओके उधर देखा था क्या। सबसे पहले लाइक करता मैं, थैंक्स अलॉट आदित्य मोय। पूरा वर्ल्ड कप कोई मैच नहीं देखा है, इंडिया सब जीती, फाइनल मैच देखी इंडिया हार गई। मोय साले तेरे को देखना ही नहीं था भाई, तू ही पनौती था हरामी, सबसे बड़ा पनौती तू ही था भाई, सबसे बड़ा पनौती भाई। इसका मतलब तभी इंडिया मैच हारी। प्लीज अरे गलत बटन दब गया यार, कंडेंस यूज हो गया। किडिंग मी, अरे कहाँ भाग लिए भाई, रुको बे अबे वापस से करना है। हेलो गाइस, किधर निकल लिए तुम लोग पहली फुर्सत में भाई? कौन भागा भाई? ग्रेडली भाई तुम तो पहली फुर्सत में निकल लेते हो यार, गजब आदमी हो तुम तो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो यार। रियांश हर सेंटेंस के बाद मोय बोल, क्यों बे? मोय करा ले तू मेरे से।
तेरे को नहीं देखना तेरे एड्रेस साले, तेरे को उस दिन भी मैच नहीं देखना था हरामी, तू हाईलाइट देख लेता भाई, हाईलाइट्स देख लेता हरामी, हाईलाइट्स। हाईलाइट से सेटिस्फैक्शन नहीं होता हा? तेरी वजह से हारी बीसी इंडिया। अरे रेडी करो सर, फटाफट रेडी मारो, सुदेश भाई गए हमारे, रेडी करो, टाइम नहीं है अपने पास गाइस। अरे रेडी करो क्रेडली भाई, कोई भी टीम लेकर रेडी कर। हाँ इसे मार लोगे, काजुआ का को चाहिए इस डोमेन में। हेलो वी डोंट नीड काजुआ, कोई और टीम लो। आई डोंट नो मेरा मेंबरशिप कहाँ है, परचेज करो भाई, परचेज करो तब होगा। गिविंग कमेंट्स आई एम डन। अरे रेंज एक और फ्री मेंबरशिप दे दे, कहाँ से दूं मैं? हीलिंग, अरे हीलिंग चाहिए क्या आपको? ओके ठीक है, निपट मत जाना सुदेश भाई, तब तक वर्ल्ड घूम लो। सुदेश भाई भी लाइक भाई, ये तो भाई रियांश ने औकात दिखा दी भाई, रियांश औकात दिखा दी भाई। रियांश ने डोमेन में नहीं लेके मेरे को औकात दिखा दी। अरे रुको बस मार के भाई, बस इधर से निकल ही रहे हम लोग। एंड्रस मोहित्रा भी शेर को मैंने मोटिवेशन दी थी 5.5। हाँ यस भाई तूने ही दी थी भाई मोटिवेशन, वही है मोटिवेशन देने वाला भाई। थोड़ा वर्ल्ड कप का बात नहीं करेंगे भैंसियाँ, इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, लिख के ले लो ठीक है भाई। इंडिया नहीं जीतने वाली वर्ल्ड कप, ठीक है, क्योंकि भाई मेन मैच में ही जाके हारते हैं भाई। ये सिर्फ भाई क्या बोलते हैं भाई, ये लीग्स जीतेंगे, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है भाई, ट्राई सीरीज, वो क्या बोलते हैं भाई, वनडे, ये सब नॉर्मली जीतेंगे भाई, ये इनसे और कुछ नहीं होता भाई। अरे अल्ट किधर मार रिया? अरे निपट लिए, मैं तो जा रहा था कलेक्ट करने। व्हाट द हेल? अरे तुम तो निपट लिए भाई, मैं तो भाई मैं सवार कलेक्ट करने जा रहा था भाई कि वो फिनिश हो जाएगी। ओ भाई ये तो निपट लिए भाई। लल भाई टेम्पल ऑफ विस्डम ऑर्डर गाइड यू ग्रो। इंडिया का एंड बंदा भी उसके जैसा खेल लेता। बीसी आज वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता। छोड़ मत बात कर, तेरी गेट तोड़ देगा मैं। अगला एक और वर्ड लिखा तो अगर वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है, एक और वर्ड लिखा ना तूने वर्ल्ड कप के बारे में, साले तेरे को 4 गाली देगा भाई और अलग से, ठीक है। तो नो वर्ल्ड कप के बारे में बिल्कुल बात मत कर मेरे हिसाब से। ओके गाइस, दुख दर्द पीड़ा, चलते हम अकाउंट लॉग आउट करते हैं, चलते अपने एसीसी में। थोड़ा सा सफरिंग कम हुआ, जो बचा खुचा कल करेंगे भाई, दुख दर्द पीड़ा। अब तो करेगा, बिल्कुल मत कर, तेरे को टाइम आउट देगा मैं पक्का। 4 मिनट का टाइम आउट चिपकाएगा मैं तेरे को, बाकी तू सोच ले, तेरी मर्जी। गाइस लाइक नहीं हो रहा क्या? लॉन्डो लाइक नहीं हो रहा क्या तुमसे? मोए मोए हो गया क्या गाइस तुम लोग के साथ? हाँ मोए मोए हो गया, जस्ट लॉग आउट करने दो भाई। मोए मोए गाइस, मोए मोए, इंडिया के साथ मोए मोए हो गया वर्ल्ड कप में। मैं दूं टाइम आउट, जाने दो, छोड़ दो, रोने लग जाएगा एंड्रूस चैट में गले पकड़ के मेरा। मेरे भाई वेलकम स्ट्रीम, कैसे हो मेरे भाई? हेलो 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 हेलो, कैसे नर भाई? कैसा रहा आज का दिन आपका? नर भाई एक दवा था जो स्टैमिना इंक्रीज करता है, वो दवा चाहिए क्या आपको नर भाई? इफ यू नीड सो, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है।
नेर भाई भी लग रहा है तो ज्यादा बोल रहा, तू ज्यादा बोल रिया। भाई एंड्रूस इग्नोर कर देता है। एक सेकंड, क्या हो गया? हेलो, कौन इग्नोर कर दिया भाई? इसका मोए मोए करना होगा। ये एंड्रूस का मोए मोए करना पड़ेगा भाई। इसका तो मोए मोए करना ही पड़ेगा भाई। शर्म नहीं आती? अब बड़ों को जरूरत है तो फिर तो मदद करना पड़ेगा ना। नोर भाई स्टैच्यू ऑफ 7 जैसा कुछ चाहिए। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? ये थानस भाई ने बोला है। हेलो, ये देखो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? मैंने कुछ नहीं बोला। नोर भाई देख लो, ये थानस भाई की तरफ से है। ईरान तो बंगाली हो, काइंड ऑफ बंगाली बिहारी दोनों मिक्सअप है भाई। बोलो बोलो, इग्नोर किया। मोए 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 भाई, मोए मोए, ठीक है भाई। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ लिखा है, ठीक है? क्या मतलब बोला है लिखा है? वो दोनों एक ही में काउंट होता है, ठीक है? बहुत नॉटी हो रहे हो आप। अरे गाइस कोई गिफ्ट सैंपल भेज दो, मैं गरीब का भला हो जाएगा। हेलो, अरे लुल भाई, गाइस कोई ब्राउन भेज रहे हैं मेरे को? ब्राउन ये भेज दो रे लॉर्डो। अरे लुल भाई, उसके अकाउंट में मैंने किया भी नहीं यार। अरे इधर ही कहीं होते हैं ना, स्पॉन होते हैं। रुको फोटो लेना यार, हमको बहुत मजा आ रहा है। डैम यार, हाई 2-3 दिन से नोयर भाई हमें इतना अच्छा वाला एक्सक्यूज दे रखे है ना भाई। मेरे को बहुत थैंक यू नोयर भाई, थैंक्स अ लॉट यार, इतना फनी मोमेंट देने के लिए थैंक यू। नोयर भाई जॉड बोलते यार, नोयर भाई जॉड आदमी। ओके, ये 2 छोटे छोटे तो भाई ले लिया हमने। कहाँ कहाँ होते हैं यार ये है? किधर होते भाई? नजुमा में भाई, इधर कहीं होते भाई, इधर ही कहीं होते यार। अपने को याद भी नहीं आ रहा किधर निकलते ये साले। इधर होते हैं ना। If you want more stuff, नहीं होता काउंट, दोनों अलग चीजें हैं। मैं आपको भेजता हूँ सब। रुको लाल, कौन कौन सा कार्ड चाहिए? मेरे को ब्राउन कार्ड चाहिए गाइस। किसी के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं ब्राउन कार्ड तो दे दो यार प्लीज। नीड सम ब्राउन कार्ड, लोन दो। मेरे को 3-3 सब। ओके, भागना नहीं, भागना नहीं प्लीज, भागना नहीं। कट गया भाई अपना। भाई ब्राउन नहीं दे रहे हैं यार ये। मेरे पास कितने रील्स बचे हैं वैसे? जस्ट 6 बचे हुए यार अभी भी मेरे पास। नोयर भाई चलेगा गाइस, देखो नोयर भाई गुस्सा होकर चलेगा भाई। गलत बात यार, हमने नोयर भाई को आते ही परेशान। सॉरी नोयर भाई, ऐसा करोगे यार? छोड़ के चले जाओगे स्ट्रीम? गलत बात, दिल से बुरा लगा नोयर भाई, ऐसे करोगे आप? भाई इसमें तो फुरीना भी नहीं है, पानी पे चल सकूँ मैं साला। हट पे। अरे काम करो रे, जाओ रे, अपना काम करो। तुम लोग इधर मेरे पीछे, तुम लोग का चक्कर में भैंस क्या कोई भाग गया मेरे यहाँ से। अभी मेरे को ध्यान दिखा भाई वो। भाई इसके चक्कर में एक यहाँ पे था यार। शिट, निकल लिया ना हाथ से भाई। इन सालों के चक्कर में भाई ऐसे की तैसी भाई। सिमा पाजी वेलकम। सिम भेज दिया। क्या भेज दिया नोयर भाई? ओह थैंक यू थैंक यू। सिमा पाजी आप ये वाला इवेंट किया क्या? नहीं किया है तो भेजो मेरे को जरा। थैंक यू नोयर भाई, थैंक्स अ लॉट। हे नो मजदूरी, एक्स्ट्रा मजदूरी अब नहीं करनी पड़ेगी गाइस। चलो 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 भाई, चलो चलो। नो एक्स्ट्रा मजदूरी। किधर गया वो? कैसा सिमर पाजी, कैसा रहा आज का दिन आपका? ऑफिस नो ऑफिस वर्क या आज वर्क फ्रॉम होम? ओह सिमुरा है। अरे 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 पता नहीं रियांश है। वेट व्हाट डिड आई मिस समथिंग सिमर पाजी? सायु लेके घूमो, सायु लेके कहाँ लेके घूमू मैं? अच्छा आपने ये नहीं किया है सिमा पाजी, फिर आपने इवेंट नहीं किया है, पता चल जाता फिर तो। देखो देखो ऑफिस का काम घर जे करूँ ना। डेम, कल मेरा है वर्क फ्रॉम होम मस्त वाला।
गाइस आई नीड ब्लू वन प्लीज, वन ओनली वन ब्लू वन प्लीज, कोई दे दो रे ब्लू वाला। गाइस किसी के पास ब्लू एक्स्ट्रा पड़ा है, गिव मी प्लीज ब्लू वन। आई जस्ट नीड ब्लू वन। गाइस क्या लगता है फुरीना आएगी क्या? ये देखो सिमर पाजी आया तो हमें फुरीना दे के जाएंगे। कुछ नहीं मिला भाई। सिमर पाजी मैजिक गार्ड दिलाया आपने TTDS, ठीक है। हमें लगा सिमर पाजी आए तो हमें फुरीना निकल जाएगी भाई। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, इतनी गरीबी भैंस की टें। थैंक यू नोर बाय गाइस, डन। लेट्स गो ऑल रिवॉर्ड क्लेम। किसको चाहिए गाइस, किसको चाहिए? मेरे पास ये क्या बोलते हैं रेड वाला 6 पड़े हैं, ये 2 पड़े हुए एक्स्ट्रा, 3 इधर पड़े हुए एक्स्ट्रा। किसी को चाहिए तो ले लो। मेरा स्पाइरल कर दो, सेंड कर लेना खुद ब्लू वन खुद को। और क्या, ठीक है कर देगा गाइस। एक और स्पाइरल अब इसका आ चुका है, सिमर पाजी का स्पाइरल करना है। उनके पास तो C2 फुरीना है भाई, मजा आएगा C2 फुरीना यूज करके। लेट्स गो। पढ़ रहा नूर भाई आपका चैट, ऊपर से पढ़ रहा। डांस मोए आईडी रिव्यू करना। ओके ठीक है, स्ट्रेस बच कर। तूने तो निकलोडियन वाला GF नहीं डाला अभी, एंडर सैटरडे को डाल रहा मैं भी कल डालता हूँ। कल मैं फ्री रहेगा ना, आई मीन वर्क फ्रॉम होम है तो कल कर देगा। कितने कार्ड चाहिए? 3 से ज़्यादा है मेरे पास, सारे कार्ड्स नहीं हो गया ऑलमोस्ट डन गाइस, डन। अपने को नहीं चाहिए अब। थैंक यू नूर भाई। जिस भाई क्या हो गया, मैं कैसे लेट हो गया? हेलो सारे भेज दो, बिल्कुल नहीं भूल जाओ, मैं नहीं भेज रहा तुम्हें। मेरे ख्याल से नोयर भाई को जरूरत पड़ेगी मेरे को तो। अरे तुमको चाहिए लुल भाई? रुको गाइस देख रहे तो यार, किसको चाहिए सच्ची में? किसको चाहिए यार? किसी को चाहिए तो बोलो रे भाई, मैं दे देगा। एनीवन नीड? सबके पास तो पड़े हैं भाई, मेरे को तो दिख तो रहे हैं भाई सबके पास पड़े हुए हैं। पढ़ रहा नूर भाई, रुको। मैं नहीं होता तो इस पेंडू का क्या होगा? और उल्टा ये मेरी बुराई करता। आपसे नहीं करेगा डोयर भाई, पक्का नहीं करेगा। डोयर भाई जॉर्ड आपसे पक्का बुराई नहीं करेगा। हम लोग गिगली आया क्या? किधर है गिगली? हेलो गिगली, वेयर आर यू? हाँ अच्छा ये गिगली है, ब्रिजेस के आईडी से गिगली है। किंग चैन में एक सेकंड, अरे किसको चैट नहीं दिख रहा मेरे को? किंग चैन भाई, ओके अब दिखा किंग चैन का चैट। किंग चैन भाई बिल्कुल स्ट्रीम, कैसे हो? ठीक है मिस, मेरे को 2 येलो 6 रेड और 3 पर्पल चाहिए। नहीं दे रहा मैं तेरे को, बिल्कुल नहीं दे रहा भाई। येलो या ब्राउन नेक्स्ट आया तो दिला दो। अरे रुको यार, मैं खुद नहीं समझ में मैं किसको दूं गाइस, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया। रुको तुमको चाहिए राइट रेडली भाई? रुको, तुम तो मेरे इस अकाउंट में फ्रेंड ही नहीं हो। अरे लोल ब्रिजेश भाई कैसे हो? अरे 2 ब्रिजेस हैं बाय द वे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। 2 ब्रिजेस है, जिंदा हूँ आप बताओ? मैं भी जिंदा हूँ किंग चैन भाई, बस चल रही है जिंदगी। C2 फुरीना नहीं मिल रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कोई C2 फुरीना दिला दो यार, कब से रो रहा। सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने ब्रिजेस बोल। मैं सोचा गिगली इधर क्या कर रहा है, गिगली कैसे आ गया? अरे यहाँ से इग्नोर कर दिया। अरे नहीं क्या रे, कितने कार्ड चाहिए? 3 है, ये पढ़ लिया हमने। मैंने सारे फिल्म एक लड़की को दे, साले लड़की के चक्कर में तूने फिल्म दी है भाई। अब तो नहीं दे रहा मैं तेरे को हरामी, बिल्कुल नहीं दे रहा भाई। लड़की को फिल्म दे रहा है, टॉप अप करो। किंग चैन भाई कर दो ना यार, गरीब का भला हो जाएगा। हेलो क्या कर दो ना किंग चैन भाई, आईडी भेज रहा मैं 8383। ज्यादा नहीं, बस छोटा वाला जिससे 10 पुल मिल जाए, बस 10 पुल चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं चाहिए। बस वो 10 पुल वाला जो है ना, जिसमें 1200-1600 मिलते हैं प्रीमो, वो दिला दो। मेरे को 2 येलो 6 रेड और 3 पर्पल। नेक्स्ट पुल में तेरे को फरीना। चल भाग, कार्ड स्वाइप इजी। नहीं भाई ऐसे कैसे कार्ड स्वाइप भाई? हाँ जिंदगी झंड चल रही है भाई, पैसे सेविंग कर रहे हैं हम, ठीक है कल आता हूँ। नहीं ऐसे थोड़ी था किंग चैन भाई, गलत बात। हेलो ऐसे बात करो यार। रुको रे कैसे हो गया? अरे रुको भाई, मेरे को भाई मैं अभी क्यों लॉग आउट हो रहा था भाई, मैं कंडेंस कुछ नहीं किया इस अकाउंट में भाई। अभी तो स्कैम हो जाता मेरे साथ।
नोयर भाई को बोला मेरे को वो बग ढूंढवा दो। नोयर भाई भी लाइक मैं नहीं ढूंढ रहा भाई, तू खुद ढूंढ भाई। नोयर भाई भी भाई मेरे को औकात दिखा दिया भाई। नोयर भाई ने कहा कि नहीं खुद से बग ढूंढ भाई। नोयर भाई ऐसे करोगे यार? मेरे को आज कंडेंस का कोई काम तो नहीं ना है? नहीं है, कल कर लेगा मैं कंडेंस यूज करेगा कल, अपने पास थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा तो आज बचा लेते हैं इसको। और इधर सॉरी मैंने तेरे को इंटरप्ट किया यार, तेरी रियली सॉरी लुल भाई। किंगचैन भाई ऐसे करोगे? कार्ड डिटेल भेजो ना अपना ओटीपी के साथ। मिली भाई वेपन मैं हार गया, वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज किया पर 50-50 हार गया। हेलो वरुण भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या मिली? डोनट। वो तो सबसे यूजलेस वेपन है, अकाउंट डिलीट कर दो, मैं पहले बता दे रहा। अगर डोनट मिला ना बाइसू का, डिलीट मार दो गेम। इसके बाद से वो कर्स हो गया, वो आपका अकाउंट कर्स हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा चलो गाइज अभी लॉग आउट करते हैं, सिमा पाजी का अकाउंट लॉगिन करते हैं, वहाँ पे अबिस करना है। C2 फुरीना मिलने को मतलब यूज करने को मिलेगा भाई अपने को, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सिमर पाजी का मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे को नहीं लगता सिमा पाजी स्ट्रीम करने वाले हैं। सिमा पाजी हमारे बिजी आदमी। सिमा भाई जरा मेरे को मैसेज करना डिस्कॉर्ड पे आप, क्योंकि आपका बहुत नीचे चला गया मैसेज मेरे को, बहुत 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 ज्यादा नीचे। एक जरा हाई लिख देना सिमा जी। सिमा पाजी कितने नीचे चले गए हो आप सिमा पाजी? ये देखो पीसी खोल रखा है कि मेरे को ढूंढना पड़ेगा, रुको सर्च ही मार ले रहा। हाँ आ गया सिमा पाजी। गाइस सिमा पाजी को जिसको आईडी पासवर्ड चाहिए भाई 2000 रुपए भेजो भाई। अभी तुमको आईडी पासवर्ड भेज रहा मैं सिमा पाजी। वैसे सिमा पाजी आपने तो इधर आईडी पासवर्ड भेजा ही नहीं, आपने तो दूसरे जगह मेरे को आईडी पासवर्ड भेजा है। लोल गाइस रुको रे लॉन्डो, इधर आईडी पासवर्ड आई नहीं सिमर पाजी का। इधर कहाँ बैठ डिस्कॉर्ड ढूंढने में बैठा भाई। किधर गए? कोई ना, मैं खोल लिया। क्या ही हो गया समय पाजी लॉगिन। थैंक यू। डन। ओके मेरा कुछ देर के लिए वीट्यूबर गाइस चुप बैठा होगा, एकदम हिल डुल नहीं रहा हूँ। मैसेज करता हो गया लॉगिन पाजी का। तो वाली होगी। एक सेकेंड। मोदी जी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 19 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई। मोदी जी वर्सेस टी सीरीज 7। सीरियसली? और बताओ अब। ओके ठीक है, ये तो पढ़ लिया। मैं C0 में खुश हूँ, आप भी रहो। नहीं ऐसे कैसे खुश रहूँ मैं हंगरी भाई, मैं हंगरी। कॉन्सुलेशन के लिए हंगरी है मैं। ऐसे करोगे किंग चैन भाई? यार कर दो यार छोटू सा टॉपअप यार, भाई का भला हो जाएगा। 2 वेलकनी मार दो टॉपअप है। पाजी ये चाइल्ड देखने को मिल रहा है, क्या चक्कर है? चाइल्ड को लेकर घूम रहे हो?
व्हाट इज दिस? ये चोमू क्या कर रहा है? सीमा पाजी के राइडन शोगन देखोगे गाइस, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। राइडन शोगन बनाना है मेरे को भाई, पता नहीं कब आज तक मिलेंगे यार ऐसे। पर एक गलत है, एक चीज सिंपाजी हमारे गलत यूज करते हैं, यहाँ पे अटैक यूज करते हैं, जबकि उनको यूज करना चाहिए इलेक्ट्रो डैमेज गॉबलेट। और सिमारी पाजी के पास अच्छा इलेक्ट्रो डैमेज गॉबलेट है नहीं। आई सी, अभी दुख दर्द पीड़ा भाई। दुख सिमर पाजी देख के दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ। कोई ना, हम अटैक से ही काम चला लेंगे। तो ओके गाइस, चलते भाई अपन सीधे डायरेक्ट भाई अबिस में। वेट रोहित खेलता है चाइल्ड से। रोहित खेलता है क्या मतलब? चाइल्ड से खेल रहा है वो? ठीक है भाई, आने तो रोहित की लेते हैं भाई। क्या मतलब तू चाइल्ड खेलता है भाई? चाइल्ड से खेल रहा आजकल? ठीक। हाँ, लास्ट फ्लोर उसने क्यों नहीं किया? फुरीना लेवल अप हो गई ना? ओके, बहुत बढ़िया। सस्टेन डिजायर, एनर्जी रिचार्ज के साथ डबल एचपी, हाइड्रो डैमेज गॉबलेट, वेरी नाइस, एकदम परफेक्ट। गाइस ये देखो, ये फुरीना देखो तुम, ये फुरीना देख रहे हो? क्रिट रेट फुरीना का तुम लोग देख रहे हो? 12% ऐड कर देना भाई। इट्स अ 90% क्रिट रेट, 176 क्रिट डैमेज, 164 ईआर के साथ। आइए फुरीना भाई, अब इसमें तबाही मचाने वाली है लॉर्ड। रोहित इसलिए अटैक यूज करता हूँ, समझे? अभी कहाँ गेमिंग, अभी जस्ट टाइम पास कर लेता हूँ मोबाइल से। वेट व्हाट? जी कुछ मैसेज मिस किया क्या? इसलिए अटैक यूज करता हूँ। ओके, आप आई मीन आपके पास अच्छा गॉबलेट नहीं है इसलिए। अगर मैं भी अटैक यूज करूंगा तो मेरा भी रेशियो काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के ये करता हूँ, जानबूझ के नहीं, काइंड ऑफ लाइक मेरे पास गॉबलेट अच्छा है, बस मेरे को सैंड अच्छा चाहिए एनर्जी रिचार्ज वाला, पर मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है मेरे को। तो मिलने से याद आया, मेरे को इधर काजुआ चाहिए, इधर यलान चाहिए, इधर कुकुमी है ना आपके पास? वेट, आपने कुकुमी नहीं निकाला है क्या? लेकिन जीन चल जाएगी। रुको एक सेकंड, मेरे को जीन चेक करने दो। आपने जीन बिल्ड कर रखी है? सीमा पाजी जीन बिल्ड ना करे ऐसे हो ही नहीं सकता भाई। हाँ ओके, इसका इधर है भाई, पवोनियस पे ये है। ओके कोई दूसरा ईआर वेपन नहीं है आपके पास? सिंचो मैं सेकेंड हाफ में यूज करने का सोच रहा था। काजुआ, एक काम करते, काजुआ को ये दे देते हैं। हाँ मच बेटर, जीन फवोनिस चला लेंगे। अटैक की जगह हम इसको क्रिट रेट दे देते हैं एनर्जी रिचार्ज के साथ, जिससे काम चल जाएगा फुल भाई। एनर्जी 8, ठीक है। नो कोको सीडी कुछ और जगह से मिलता तो बढ़िया हो जाएगा। इवन में मिड इलेक्ट्रो गॉबलेट शुड बी बेटर देन अटैक गॉबलेट, अगर तो हाइपर कैरी कर रहा है। एग्जैक्टली, इसीलिए इसके वजह से भी तो आई मीन ठीक है, नॉट बैड, उतना भी कुछ ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है वो। वेयर इज जीन बेबी गर्ल, वेयर आर यू? चलो गाइस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी भाई, एकदम विदाउट एनी रीट्राई भाई कर लेंगे हम तो भाई इसको। तो उसको उसका ये रिक्वायरमेंट हाई है। किसको फैब दे दूं? इसको बे, इसको फैब दे मैं। ये गुब्बारे ही फेल लेंगे।
ओए Barbados, guide us. Gotcha. वेट कभी कभी खेल लो भाई वरना दिमाग खराब हो जाएगा वर्क से। खेलते हैं हमारे दिमाग पाजी, कभी कभी गेम खेल ही लेते हैं। कोई ना गिव अवे कर दो लैपटॉप। पाजी ऑफिस में खेलता है PS5 पे टाइम पास के लिए। ये क्या DPS है? हाँ ये क्या DPS है? क्या मतलब ये क्या DPS है? इतना छोटे किधर में Stabilize. Temple of Wisdom. Let me lead you a breath. Stand with me. बच के भाग जाएगा क्या मेरे से? हैं Out of my way. Grow. Just stay free a little. Gather. Witness the power of the rock. Share my knowledge. Grow. Know my soul. अबे चोमू इसकी तो ऐसी की तैसी भाई धकेल दी भाई मेरे को। Solidify. किधर भाग रहा है बे? हैं तू मेरे से बच के भाग जाएगा। Time to act. Rain outlines your fate. Just stay free a little. Commit to memory. तो अरे तो फिर तो ओपी NH के काय को लिखा है? पहले ये बताओ NH के क्यों लिखा? अब तो विदाउट कोई NH के भी नहीं गाइस। इतना अच्छा रोटेशन, इतना बढ़िया भाई। उसको तो भाई हम देख भी रहे थे मजे से। मैक्स HP भाई, मैक्स HP। लेट्स गो। ओ भाई मेरी जीन भाई, नो फकिंग वे भाई मेरी जीन। Time to shine. Stop that. Into the wind. Here comes the test. Busted. I swear by my sword. Gotcha. Wind strike. Clouds high. Birds call. Things are about to get dicey. Barbados, guide us. Strike close. Busted. अरे फुरीना हंस रही है तुम, खड़ी हो गई फिर तो। Adorn my night. Stand back. Gotcha. I swear by my sword. Quiet now. Shower me with flames. Michael bro, welcome to the stream. Bhai check Discord server. Wait, just give me a second. Just give me a second, guys. Just give me a second. Michael bro ने क्या भेजा भाई? Oh my god. Is that sushi? Sushi bhai? Nice. 9386. Damn, that's a good one. Almost million. Damn. That's a series. Damn, Michael bro. That's why I will go for C3 Raiden Shogun. Don't worry, I will also go for C3 Raiden Shogun. Murgi. Everyone hold in. Temple of Wisdom. Stabilize. Let me lead you first. Know my sword. Rain outlines your fate. This way. Terrified. Grow.
Just stay pretty little. Let's go. मुर्गी बिरयानी सबने बटी का आज भाई ऑस्ट्रिच बिरयानी सॉरी नॉट मुर्गी बिरयानी खड़े खड़े होके टैंक कर लेती तो कितना अच्छा रहता भाई। हाँ मैंने कुछ डीएम क्या हाँ देखा आपका डीएम आया हुआ जस्ट गिव मी अ सेकंड मैं देखता हूँ। So guys, अरे माइकल वाज द इंडियन दिस होल टाइम। यस माइकल भाई हमारी इंडियन है इनको इंडियन इनका आधार कार्ड है इंडिया का, टेंशन ना लो। माइकल ब्रो का आधार कार्ड है। C2 फोरिना ना रे गेंशी वेलकम टू द स्ट्रीम। नहीं हुई रे भाई निकाल रहा हूँ निकाल भी कुछ देर में रुको मैं चेक ही कर लेता रुको जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या भेजा रेविन भाई ने हमारा क्या भेजा What the fuck is going on in Naruto भाई? Damn मैं अभी follow नहीं करता Naruto लेकिन what the hell is this भाई? Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. What is Might going we on add in a Naruto? small detour to our adventure? होला नेक्स्ट मेरा अभी साले एंड्रोस तो कर रखा है अभी। ए एमपी ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट्स अप लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर हाउ आर यू? यार नारुतो में चल क्या रहा भाई? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा नारुतो में चल क्या रहा है? Time to go. The wind's rosy. One with wind and cloud. Hear me. Wind strike. ये है पावर भाई C2 फुरीना की भाई। डैम फुरीना इसलिए गाइस आई एम गोइंग फॉर C2 फुरीना। देख रहे हो तुम लोग? हाँ Here comes the challenge. Fallen leaves. Adorn my night. Barbados. ये देखो भाई एकदम फुल स्टैक भाई फटाक से बन गया भाई। ओए तेरी ऐसी की तैसी भाई। अबे कहाँ Wind strike. Quiet now. भाई बड़े गुलाटी खिलाते हैं ये। Time to shine. Strike close. Hear me. One with wind and cloud. Gotcha. Shower you with grace. Barbados. Wellness. Quiet now. माइकल लेट्स गो माइकल ब्रो। साले मुल्क तो फिर से आ गया साले तो। Make yourself a move. Solidify. Ring cutter. Rain outlines your fate. Bond is strong. Run. Terrified. Order guide. Let's stay pretty little. Temple of Wisdom. Witness the power of the wild. Know my sword. Grow. कितना दूर फेंकेगी भाई? लेट्स गो जॉर्ड बोलते हैं मिल्की को बैन बधाई हो एंड्रो टेट।
कांग्रेचुलेशन जिब्रपात जी, हमने आपको भाई रन कर दिया इजी पीसी, लेमन स्क्वीजी रन भाई। डीएम कैसे लगा? डैम मैं क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, मेरे को बताओ जरा रेविन भाई, ये चल क्या रहा है? माइकल को क्या हो रहा है? माइकल ब्रो, माइकल भाई जस्ट माइकल ब्रो जस्ट मजे ले रहे, नथिंग। शिवपाल जी इतने सारे पुल्स देख के मन कर रहा पुल करने का, कर दूं क्या? फुरीना C3 लेट्स गो, क्या बोलते हो? आरिगातो शिवपाल जी फुरीना C3 बोलते, क्या बोलते? आईडी रिव्यू कर रहा है गाइस, आईडी रिव्यू कर रहा। कल रहा शिवपाल जी फुरीना C3 क्या बोलते? इतने सारे पुल्स देख के। रुको जरा मैं अकाउंट रिव्यू कर दूं। यू आईडी भेजो गाइस, किसका अकाउंट रिव्यू था भाई? फटाफट बोलो भाई, फटाफट हम अकाउंट रिव्यू करें भाई। किसका था गाइस? कर दे C3 फुरीना। नाउ मी वेल C5 कचिंग। अबे नूब आदमी लोग कचिंग लेके घूमते हैं भाई। व्हाट इज कचिंग भाई? अबे चीची कर, चीची पे वेल करना है तो चीची पे वेल कर। मेरे पास है भाई चीची C4। किसका था अकाउंट रिव्यू? मेरा अबिस कर अकाउंट रिव्यू नहीं, बक साले तेरा ऑलरेडी तूने अबिस कर लिया तो मैं नहीं कर रहा तेरा। गाइस किसका था? सुरेश भाई आईडी भेजो ना अपना। सुरेश भाई आईडी भेजो, आपका मैसेज आ रहा है मेरे को डिस्कॉर्ड पे, आईडी भेजो ना। ओके वेट, इधर तुम आईडी पासवर्ड भेज रहे हो, उधर भेज दो ना। लोल भाई 846185788। डिलीट हो रहा बार बार, कौन डिलीट कर रहा? वैसे थोड़ी डिलीट हो जाएगा, यही है ना? फुरीना देखना आपका, राइट? हाँ नाइस। 61 क्रिट डैमेज लो है, कुछ ज्यादा ही लो है क्रिट डैमेज। क्या दे रखा है आपने? HP क्रिट रेट, वाई क्रिट रेट। रेशियो अच्छा मैनेज नहीं हो रहा क्या आपका? डैम ओके नाउ आई सी, रेशियो मैनेज नहीं हो रहा आपका। क्रिट डैमेज को वर्क करना है, यू नीड 150 क्रिट डैमेज। फुरीना क्रिट रेट पे सेंड करती है, ठीक है? डबल HP चला रहे हो, लेकिन ये वाला टोटली ट्रैश पीस है, ठीक है? इसको फेंक देना बाहर उठा के भाई। ये वाला ठीक है, ये अच्छा पीस है। ये भी फेंक देना, काइंड ऑफ लाइक फेंकना नहीं, वैसे क्रिट डैमेज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डबल HP चला रहे हो ना आप, तो आपको ज़्यादा HP की ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी पीस ओके सा है, ठीक है? आपको आर्टिफैक्ट फार्म करने की ज़रूरत है। ये अच्छा पीस है, काइंड ऑफ बहुत अच्छा पीस है ये, ठीक है? ये यहाँ आपको क्रिट डैमेज चाहिए, और ये वाला ठीक है, और यहाँ पे क्रिट डैमेज चाहिए, ठीक है? आपका क्रिट रेट ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस अच्छे रेशियो वाले पीसेस चाहिए, 30-35 पीसेस, जो क्रिट वैल्यू पीसेस है ना, वैसे पीस चाहिए। आपका इजीली 60-150 का रेशियो कर लोगे आप फुरीना का। रियांश भाई कोई गेमर गर्ल तो ढूंढ के दो। कहाँ से ढूंढ के दूँ? हाँ मिल्की का C2 फुरीना का स्ट्रीम पर देख, आज नहीं देखेगा ना सब कुछ। वेट, सब कुछ डैम टाइम लग जाएगा फिर तो। चिंगलेस 47 172 ठीक है। क्रिट रेट थोड़ा स्लो है, C1 नहीं रहा था तो मैं इतना क्रिट रेट पे काम चला लेता, लेकिन C0 है तो क्या बोलूँ मैं, काइंड ऑफ ओके सा है। एलिमेंटल स्किल एंड एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज, ये तो चार्ज अटैक में काउंट होता है ना इसका। एलिमेंटल जो चार्ज वो मारोगे तो वो तो चार्ज में होता है। बर्स्ट का डैमेज ठीक है, आई सी, काइंड ऑफ चल जाएगा काम तो। वैसे अटैक नहीं, यहाँ पे एलिमेंटल मास्टरी चाहिए इसको। EM दो आप, EM ठीक है? वैसे वेपन से मिल रखा है EM तो कोई दिक्कत ना है। 245 EM ठीक है, नाइस। 988 ओके। आयटो देखे भाई, आयटो हार्ट ऑफ डेप्थ ओके। 63212 नाइस। ये पीस अच्छा है, ये भी पीस अच्छा है, नॉइस। एंड आई सी, ये वाला थोड़ा सा बेकार पीस है, थोड़ा सा नहीं पूरा बेकार पीस है। आई विल से इसको चेंज कर देना आप, ठीक है? एंड ये अच्छा पीस है, ये डेफिनेटली बदल देना, क्योंकि इस पर कोई मतलब अटैक मिल रहा है लेकिन ना ही क्रिट डैमेज ना क्रिट रेट, और भी रेशियो आपका अच्छा जा सकता है इसका मतलब, और रेशियो अच्छा पुश कर सकते हो आप। गान्यू विथ ओके, फ्रीज गान्यू बाय द वे गाइस, ठीक है? इट्स अ फ्रीज गान्यू। नाइस नाइस, वेरी नाइस।
ये भी अच्छा पीस है। डैम गान्यू आपकी बहुत मस्त, गान्यू मस्त, प्लीज गान्यू जॉर्ड। अटैक भी बहुत अच्छा है गान्यू का। C0 टैलेंट उनका विथ होमा 56 268। क्रिट रेट थोड़ा सा लो है, क्रिट रेट थोड़ा सा लो है। क्रिम्सन वीच ओके ओके वेट व्हाट क्या क्रिट रेट था? 17% भाई, ऑलमोस्ट 18% क्रिट रेट। डैम नाइस ओके। एलिमेंटल मास्टर एचपी कितना है फिर? 28 के डबल हाइब्रिड चलाना पड़ेगा आपको टीम में। ओके नाइस क्रिट रेट पीस एलिमेंटल मास्टरी एचपी एंड भाई क्या पीसेस मिल रखे हैं यार। डैम आपकी उता भी अच्छी है, बहुत अच्छी। बहुत लो सबस्टैट आपके, मतलब बेकार सबस्टैट बहुत कम मिल रखे हैं आपको। डैम उता अच्छी है, बस क्रिट रेट और चाहिए थोड़ा सा, काइंड ऑफ लाइक 65 क्रिट रेट गुड। थोड़ा सा क्रिट डैमेज लो करके क्रिट रेट ले लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हुता भी बहुत क्रिट मिस करती है। और C1 है और भी बेटर। फिर तो मैं कहूँगा क्रिट रेट C1 है तो आपको थोड़ा सा और क्रिट रेट बढ़ाना चाहिए, और क्रिट डैमेज थोड़ा सा लूज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्हितम 36 एंड 200 नाइस। EM 392 गिल्डेड पे है। वेरी जॉर्ड नाइस। एलिमेंटल मास्टरी डेंडो डैमेज गॉबलेट। इसको चेंज कर देना, ये टोटली ट्रैश पीस है। एलिमेंटल मास्टरी है ठीक है, आई कैन से ओके ओके नॉट। ये वेपन 28% देता है क्रिट रेट, तो ऐड करते हैं तो इट्स लाइक 64 राइट। 64 क्रिट रेट और 200 क्रिट डैमेज, ठीक है नॉट बैड नॉट बैड। अलितम ट्रिपल क्राउन ओके नहीं सिंगल क्राउन है। आई सी अलितम भी ठीक है, और भी बेटर हो सकता है वैसे आपको। ओके साइनो भी है 65 to 30 नो। आर्टिफैक्ट थंडर फ्यूरी C0 डबल क्राउन कर रखा है साइनो को। डैम साइनो मेन और व्हाट। एलिमेंटल मास्टरी डैम इलेक्ट्रो डैमेज गॉबलेट। ओके आपके गॉबलेट सारे ट्रैश हैं यार, कुछ को छोड़ के आपके सारे गॉबलेट ट्रैश। आपको गॉबलेट नहीं मिलता क्या रेविन भाई? गेम चो होता भाई, सब मजा माया ऐसा न हो चुन चुन भाई। ऐसन बा आपके सारे गॉबलेट जितने भी देखा किसी भी कैरेक्टर पे, आई मीन वो क्योंकि सा गॉबलेट नहीं है, ये सारे ट्रैश हैं। फन है वो, टिक टिक फन है वो, ठीक है यस फन तो है, ठीक है आई गेस। ना एक गॉबलेट नंबर है। एक सेकेंड, नंबर कहने का मतलब अच्छा कह रहे हो क्या? आपके जितने भी अभी मैंने गॉबलेट देखे सब पे आई मीन काइंड ऑफ लाइक ओके सा है। एम्बलम ओके कैच के साथ है। हाँ डैम तो बुरा लगा राइडन शोगन को। राइडन शोगन को कैच नहीं दिया आपने, सिंगलिंग को पकड़ा दिया, ठीक है भाई। अटैक ओके पायरो गॉबलेट, हाँ ये गॉबलेट अच्छा है काइंड ऑफ। एंड क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज एनर्जी रिचार्ज HP ठीक है। ये सिंगलिंग अच्छी लगी अपन को। C6 ऑफ कोर्स एंड क्राउन है नाइस वेरी नाइस। है ही नहीं, अरे कोई ना योई मैं ठीक है ब्रिजेश पे देखता मैं, योई मैं भी देख लेता। 81503800 हो गया क्या? 12 जिस भाई हमारी वैसे आप वेट कर लेते यार, आप मेरे अकाउंट में फ्रेंड हो। 65 75 169 डैम बहुत अच्छा वेरी नाइस। ये 33 नाइस। ये भी नाइस। क्रिट रेट है तो आई गेस अच्छा पीस है। 17% क्रिट रेट रोल करना भाई, गैम्बल किया आपने, डैम मानना पड़ेगा आपने गैम्बल किया ये पीस को लेके। हम रहते तो भाई फीड कर देते भाई, एक क्रिट रेट देख के डबल HP एंड क्रिट डिफेंस देख के हम तो फीड कर देते भाई। पायरो डैमेज गॉबलेट वेरी नाइस। ऑन सेट है भाई, क्या पीस है भाई, डैम ऑन सेट अटैक एंड क्रिट डैमेज भाई गॉड भाई। ये भाई ठीक है, बस थोड़ा सा और क्रिट डैमेज पुश कर सकते हो, लेकिन आई गेस ये योमिया R5 रश 75 170 होता तो आई मीन 180 होता तो काफी अच्छा रहता, लेकिन 75 169 ये भी अच्छा था। C0 टैलेंट क्राउन कर दो, क्राउन कर दोगे तो आपको डैमेज डिफरेंस दिख जाएगा। डबल क्राउन कर दो योमिया को, अटैक और क्या बोलते हैं ई और उसका अल्ट नहीं, ई और उसका नॉर्मल अटैक कर दो, आपको डैमेज डिफरेंस दिख जाएगा। 2.2 के अटैक वेरी नाइस। क्या चल रहा है आइजन? कुछ नहीं बे साले, कुछ नहीं चल रहा। तेरे को अभी हम किडनैप करवाएंगे भाई, रुक टेंशन ना ले। और किसी का तो नहीं है गाइस। अब चलो भाई हम चलते अपन
हाँ मैंने उस अकाउंट में कर दिया, हाँ उधर भी हो गया, सिमर पाजी का भी अपडेट हो गया। अब चलते भाई अपना चलते गाइस कहाँ, अब हम जाते हैं आर्कन क्वेस्ट करने। मुल्कू भाग गया साला, इसको किसी ने टाइम आउट चिपका दिया। माइकल दैट जापानीज नेम वेयर, अरे वेट व्हाट, थानोस भाई यू देयर, मेरे फुरीना बिल्ड देख लो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अरिगातो गोजाइमा। अरे अरे अरिगातो, तेरा पिटी क्या चल रही है? काइंड ऑफ लाइक 67 नहीं 67 नहीं 68 चल रही है। 68 की पिटी, 68 जब 68 10 पुल चाहिए मेरे को, जस्ट 10। मेरे फुरीना बिल्ड देख लो, सिग्नेचर फाइनल मिल गया है। ओके ठीक है चलो थैंक गॉड मैंने अभी लॉग आउट नहीं किया, ये तो अगर लॉग आउट कर देता फिर तो दिक्कत हो जाता। फिर दूसरे अकाउंट में 84351292। There we go, फुरीना अनस्पाइकी सिग्नेचर के साथ 64 to 65 बहुत अच्छा, एनर्जी रिचार्ज के साथ, आर्टिफैक्ट गोल्डन ट्रूप C1। डैम फुरीना तो अच्छे बिल्ड कर रखे हो यार, नो वे ब्रो, इतनी अच्छी फुरीना। एचपी कितना है? 32 के एचपी भाई। अब तुम्हारी फुरीना देख रहा मैं भाई, क्या पीस है बे डूड, एनर्जी रिचार्ज एचपी, डैम ब्रो डैम डूड फुरीना मस्त है रे, क्या फुरीना है बे, एनर्जी रिचार्ज एचपी क्रिट डैमेज भाई फुल परफेक्ट यार, परफेक्ट फुरीना। C1 के साथ क्राउन कर देना अल्ट को, पहले अल्ट उसके बाद ई, ठीक है पहले अल्ट इसका करना उसके बाद ई, ठीक है अंश भाई पहले अल्ट इसका उसके बाद ई। ओके डैम परफेक्ट फुरीना। भाई सपोर्ट मोना पे स्काईवर्ड चलता है क्या? नहीं यार, मोना को सपोर्ट मोना पे स्काईवर्ड क्यों दोगे आप ही बताओ, एटलस क्यों दोगे मोना को स्काईवर्ड एटलस? वाई? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, चलते अपन थोड़ा मैं PS5 ऑन कर लूँ, फिर उधर अपन पुल कर लेंगे, क्वेस्ट करके पुल कर सिमर पाजी का पहले लॉग आउट कर देना, सिमर पाजी का लॉग आउट, गेम क्लोज। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, तुम लोग को ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी करने वाले हैं हम अपना गेम कैप्चर ऑफ एल्गातो ऑन, गेम कैप्चर ऑफ एक्टिवेट, हियर वी गो। आ गया हमारा आर्कन क्वेस्ट करेंगे तो फिर ये, ओए मेरा देख ले रिव्यू, बग साले यूरोप अदर सर्वर वाले बाद में, अदर सर्वर। ओ यो आई एम बैक, वेलकम बैक सिमोपाजी, वेलकम बैक। बस अब वेट करो, अब हो गया आपका अकाउंट, लॉगिन कर लिया मैंने सिमोपाजी। एलगाटो कितने का पड़ा? एलगाटो कितने का आता है यार सुरेश भाई, तुम ही बताओ, जितने का आता उतने का पड़ा यार। थ्रिलिंग टेल्स ठीक है, थ्रिलिंग टेल्स ठीक है, नो प्रॉब्लम। TTDS ही ठीक है, TTDS काफी अच्छे, सपोर्ट मोना TTDS बेस्ट। अरे सिमोपाजी आप थैंक्स बोलोगे? तूने सोल्डरमैन 2 ले ली? सोल्डरमैन स्पाइडरमैन कह रहे हो क्या? स्पाइडरमैन 2 तो बहुत पहले ले लिया मैं, फर्स्ट डे मैंने तो प्री ऑर्डर कर रखा था स्पाइडरमैन। मैं तो फर्स्ट डे खेला था, वो भी रात को 12 बजे जैसे लॉन्च हुआ था, मैं तो उसी दिन स्ट्रीम भी किया था। मैंने 10 का लिया था। हाँ सुरेश भाई उतने का आता है, 10 का ही लिया मैंने भी। सुरेश भाई कैसे हो? मेरा एग्जाम है बे कल, इसलिए बोला करने को, मैं ज्यादा टाइम नहीं रह पाऊंगा इसके। अरे एग्जाम कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कर लेगा रिव्यू, काय को टेंशन ले रहा तू, रिलैक्स। अरे डैम मेरे को इतना गिफ्ट क्यों कर दिया गाइस, मेरा हो रखा है रे, इस अकाउंट में मेरा हो रखा है गाइस। किसी को चाहिए तो बोलना गाइस, आई विल गिफ्ट यू। मेरा ऑलरेडी 7 out of 7 हो रखा है, पता नहीं क्यों दिया मुझे। किसी को चाहिए तो बोलना गाइस, ठीक है? मेरे को बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा गिफ्ट कर दिया। हिस्ट्री चेक कर लेते गाइस, जस्ट एक बार हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। डेली
4-5 विश कर रहा है यार, 3-4 विश भाई, गरीबी चल रही है भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 65 66 67 68 68 पीटी है गाइस। ओ माय गॉड प्लीज फरीना 68 69 पीटी पे आ जाना यार, कम ऑन। 69 पीटी से पहले भाई अपने को डेली कमीशन रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। और ओके कंडेंस भी अपना हो रखा है, फिर तो अभी कंडेंस के लिए वेट। अरे इससे क्यों बात कर रहा है, मैं पागल हो गया कि? सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। अमोगस मैंने फाइनल फैंटेसी ली थी स्पाइडरमैन लेने से पहले। अरे डैम फिट, फाइनल फैंटेसी मैंने फाइनल फैंटेसी नहीं लिया। मैं अभी अगला गेम लेने वाला हूँ साइबरपंक। Welcome. साइबरपंक का टोटल बंडल लेगा मैं। Thank you for completing. और Ad अभी Astra. इसके बाद अभी क्या बोलते हैं, अभी मैं खेल रहा गोस्ट ऑफ सुशिमा, वो कंप्लीट करने के बाद साइबरपंक खेलूंगा ऑन स्ट्रीम। साइबरपंक जॉर्ज दोनों पहले उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सेकंड पार्ट। मजा आ जाएगा साइबरपंक खेल के। तो भाई पीसी पे खेल दूं ना, पीसी का भाई वॉट लग जाएगा। और पीएस पे खेल दूं भाई, पीएस भाई साइबरपंक की वॉट लगा देता है। पीएस भी लाइक क्या गुंडा बनेगा रे साइबरपंक तू है, क्या गुंडा बनेगा तू? हाँ सुशिमा प्यारी गेम है, बहुत प्यारी गेम है। सीटी हुई या नहीं? अरे करने वाला हूँ गाइस, करने वाला हूँ। सब आके पूछ रहे सीटी हुई तो कोई गाइस इतना पूछ रहे हो, एक बार कार्ड स्वाइप कर दो मेरे लिए, ठीक है? अरे रुको रे, मेरे पास क्रिस्टल्स तो होने चाहिए भाई, आई होप तो। पर यार PS5 में क्रिस्टल्स वो यूज भी नहीं कर सकता मैं। क्रिस्टल्स हैं मेरे पास थोड़े बहुत, आई गेस मैंने सेव करके रखे थे। आई कैन यूज क्रिस्टल। गाइस टाइम टू पुल। नहीं मैंने ऑन लॉन्च नहीं ली थी उसको, तो चैट में प्रोजेक्ट पे पढ़ रहा। अरे आज 12 सेकंड का 4K वीडियो किया एक्सपोर्ट दा विंची रिजॉल्व से, सीधा टेम्परेचर चला गया था 95। क्या बात कर रहे हो, 4K कर रहा हो? ठीक है भाई। आज तू भी वो रोप हीरो 2 खेलता है? कौन सा रोप हीरो पे साले, रोप हीरो बोल रहा। मिलेगी गाइस, लेट्स गो। फुरीना आएगी 69 पीटी पे भाई, फुरीना 69 पे आएगी। आई नो फुरीना लव्स मी ऑन 69। फुरीना आएगी भाई 69 पे आएगी फुरीना गाइस। देखो देखो कैसे आएगी फुरीना 69 पे। मिलेगी गाइस, मिलेगी। कम ऑन। नो फकिंग वे। क्या मतलब कल जाना पड़ेगा क्या फुरीना C2 के लिए? No, please no. कितना हुआ गाइस? 71 है राइट? 71 राइट? 70 2 पुल किया मैंने अभी 70। Oh my goodness, मोए हो रहा मेरे साथ गाइस, मोए हो रहा। नो कार्ड स्वाइप रियलिटी हिटेड बैलेंस नहीं। Oh no guys, 75। Oh no fucking Oh no, जिसका डर था वही हुआ गाइस। Oh goodness, खत्म भाई। डेली 1-2 पुल्स निकालता भाई, सोचता आज निकल जाएगी भाई, आज निकल। गाइस 27 and 26। ओके वेट, फाउंटेन ऑफ लूसिंग जाना है अपने को। रुको रे, यहाँ से कुछ निकालते हैं रिवॉर्ड। जाओ अभी कार्ड से, बिल्कुल नहीं। 90 पर 90 मत जाना बस। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। गेम की वॉट लगा देगा मैं 90 गया तो। 75 प्लस भी गया तो मैं गेम को बहुत गाली देगा मैं। नहीं यार ऐसे तो नहीं होने वाला भाई, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मुझे 2-3 बिल्कुल लेना पड़ जाएगा फिर। ओह नो गाइस, अपने पास है लॉर्ड। हो जाएगा भाई अपना काम। पांच पुल इधर है, पहले इधर करेंगे 5 पुल, ठीक है? इधर से 5 स्टार निकालेंगे, ठीक है? उधर फिर बाद में जाएंगे। धक हो रहा है गाइस।
नोयर भाई वेलकम बैक। अरे इधर 4 स्टार भी दे दो यार, कुछ तो करो भाई, गेम क्या कर रहे हो। हाँ फाइनली 4 स्टार दिया भाई। अबे थॉमस द टैंक इंजन यूजलेस फेलो। हाँ चल मिल जाएगी, डोंट वरी। नोयर भाई ने कहा मिल जाएगी, लेट्स सी। C4 इनका, हाँ C4 नोयर सिमर पाजी इधर C2 नहीं हो रही, आप C4 का और ठीक है। गरीबी में आटा गीला करने वाला बात कर रहे हो आप, ठीक है। सोचो गलती से बाइजू में विश हो जाए तो भाई क्या दिमाग खराब होगा मेरा। 72 राइट, 72 73 रोड आ रहा है गाइस। 73 अबे 4 स्टार तक नहीं दिया भाई तूने, इसकी बाका साकी नाका भाई। शिट ब्रो। मोए हो गया लॉर्ड, मोए हो गया। वैसे क्या मोए हो गया मेरे साथ भाई। शिट भाई 4 स्टार भी दे देते एक तो कुछ भी मिल जाता भाई। तो एक पुल और हो जाता यार। मोए हो गया गाइस। अब तो भाई क्या है, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है गाइस मोए के अलावा भाई। 75 पे निकलेगी, ये कमी है फरीदा भाई। ये राइड एंड शोगन, फिर ये भाई, ये दोनों बहुत कमीने हैं भाई, ये दोनों के दोनों कमीने हैं भाई। मोए करा दिया मेरे साथ भाई। मोए हो गया गाइस, मोए। नयर भाई कर रहे हो क्या? 10 पे फेंक के मारो। नयर भाई प्लीज पीसी और करके क्रिस्टल उड़ा ले। आई मीन काइंड ऑफ मेरा मन कर रहा सीरियसली, पर मैं करेगा नहीं, मैं सेव कर रहा गाइस क्रिस्टल, ठीक है। पीसी ऑन करके क्रिस्टल उड़ा सकता हूँ, लेकिन यार बट बहुत बड़ा बट, बिग वाला बट करेगा नहीं मैं, ठीक है। अपन आर्कन क्वेस्ट से निकालेंगे गाइस एक पुल, ठीक है। अभी अपने को आर्कन क्वेस्ट करना है, आर्कन क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग चल रहा है आर्कन क्वेस्ट, ठीक है। आर्कन क्वेस्ट से पहले मेरे को रेजिन चेक करना है, तो रेजिन कितना है पहले वो खत्म करना है मेरे को। जस्ट लेट मी चेक रेजिन कितने मेरे। कंडेंस एक हो रखा है। ओए अपने पास एक चाबी। ओके नहीं नाम नहीं चेंज करना। ओए गाइस अपने पास चाबी है, लेट्स गो। चाबी है। रुक मैंने मार्क कर रखा था किधर। अपने पास एक चाबी है भाई, चाबी। Oh my God, we have key guys, let's go. We have key, we can get one more pull. गंबरे भाई, गंबरे। Time to go. तो सामने दिख गया भाई, दौड़ बोलते भाई। भाई मैं 60 प्रीमोस क्यों सोच रहा था। शिट भाई, अबे 40 ही मिलते रहो भाई इधर से। ओह फक, शिट बुलशिट भाई, यार गरीबी में आटा गीली होगी भाई। मैं 60 सोच रहा था साला भाई। गेम वालों ने औकात दिखा दी भाई, औकात दिखा दी। C2NH को रहा लॉर्डो। अरे यार इतना मजदूरी करना पड़ रहा है बीसी मेरे को। व्हाट द फक। आप चेस्ट दिख रहा लॉर्डो, छोड़ो रहने दो, बाद में करेगा भाई। चेस्ट वगैरह नहीं लेगा भाई, अभी आर्कन क्वेस्ट पे फोकस करता है, ठीक। वी विल फोकस ऑन आर्कन क्वेस्ट, ओके। वी विल फोकस ऑन आर्कन क्वेस्ट। मोए हो रहा है मेरे साथ गाइस भाई, मोए। अरे सब कर लिया मैं, ठीक है मैं सब भाई। अरे हंस लो भाई, ठीक है, हंस लो भाई, सब हंस लो भाई। बंद तो कर रहा हूँ भाई जाके मैं पीसी ऑन करके भाई। वो मैं नहीं कर रहा भाई, लेकिन नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। क्रिस्टल सेव कर रहा भाई। उंगली का स्किन आने वाला है, काफी अच्छे कैरेक्टर्स के स्किन आने वाले हैं भाई, तो इसकी वजह से मैं सेव करेगा।
हंस लो गाइस, हंस लो, ठीक है लौंडो, हंस लो, सब हंस लो, हंस लो नोयर भाई, हंस लो। मोए मोए गाइस, सब मोए मोए कर लो चैट में गाइस, मोए मोए कर लो। अरे रुको गाइस, पहले मेरे को ना ये स्ट्रीम लेवल बंद करने दो, आर्कन क्वेस्ट कंटिन्यू करने वाले हम, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लेवल हमने बंद कर दिया। हंस लो गाइस, सब हंस लो भाई। लाइक नहीं कर रहे गाइस, गलत बात, लाइक नहीं कर रहे हो क्या तुम्हें? एकदम बुरा लगा गाइस, हिट लाइक बटन डोंट डो, लाइक क्यों हो रहा है क्या तुम लोग से? गाइस कितने लाइक्स हुए यार, पता है डैम 17 गाइस, 17 लाइक्स है यार, कम ऑन गाइस, ऐसे करोगे तुम लोग? सेकंड लास्ट चैट प्लीज वेट, हैंग आउट को टैप करके खत्म करो, 20 मिल जाएंगे। आई मीन कर सकता है, उससे अच्छा आर्कन क्वेस्ट कर लूंगा, मेरे को एक फुल मिल जाएगा यार। Michael sent one welcome to Ryan's right now. Wait, what? Moy. Michael Sabas, अरे डैम। नहीं। One welcome to Ryan's right now. So Ryan game full street to Furina. लोला ऐसे मत बोलो। लंबा आर्कन क्वेस्ट है, उससे अच्छा है हैंग आउट कर रहे नहीं, आर्कन क्वेस्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग। We will go for सबका फर्स्ट क्वेस्ट कर लो। लेट्स गो रहा पढ़ाई में कोई ना आइसो निश्चित देख ले, नेक्स्ट हो रहा था। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूँ मैं? मेरा वेलकिन कितना दिन बचा वो भी चेक कर लें तो। ऐसे वेलकिन तो है अभी 12 दिन। इट्स ओके। मोए गाइस, मोए मोमिला, एक सेकंड, मोमिला भाई, मोए भाई, फुल मोए। माइकल व्हाट इज दिस बिहेवियर है, ऐसे मत बोल। चलो गाइस आर्कन क्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अपने बंद कर दिया, या भी को एक सेकंड, जस्ट गिव मी से आर्कन क्वेस्ट करने वाले हैं तो गेम का म्यूजिक ऑन करते हैं, क्योंकि भाई गेम का म्यूजिक गॉड आर्कन क्वेस्ट में। और अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करते हैं अभी को गाइस। एच को रहा लाइफ में रिश्तेदारों ने ले रखा यार, कोई ना मॉमी मॉडल कर भाई। कौन मॉमी मॉडल? हेलो, कैसा मॉमी मॉडल? या भी को गाइस लाइक एनएच के हो रहा है, 30 लाइक्स तो करो गाइस, 30 लाइक्स के लिए चलते गाइस। या भी को गाइस, नोयर भाई स्ट्रीम देखो, भागो मत। Our names are written in this newspaper. What's going on? Let Paimon see. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead. Thanos bhai, वैसे भी that sure seems to be the case. Seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. आइजन भाई ये कभी भी मुंह उठाकर आ जाते, एक सेकंड, सेम भाई ये कभी भी मुंह उठाकर आ जाते। अरे यार मुंह उठाकर तो आते हैं भाई, बाद में बोलते भी तो है ना, वो भी तो दिमाग खराब होता है ना भाई। मुंह उठा के आए हो तो चुपचाप आओ, बात करो और जाओ, हमारे बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, हमने कभी बोला तुम्हारे बेटे का शकल गोबर जैसा है? नहीं ना, फिर हमारे बीच में मत बोला करो।
Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? अरे वो रिश्तेदार इज लाइक देखो बिरयानी खा रहे हो और मुंह में बिरयानी खा रहे हो और मुंह में भाई तुम्हें इलायची पड़ जाए, वो उस टाइप का है भाई. इट्स लाइक तुम एंजॉयिंग बिरयानी और तुम्हारे मुंह में भाई इलायची पड़ जाए या कुछ कहते हैं ना, इस टाइप का कुछ पड़ जाए, पूरा बिरयानी का स्वाद बिगड़ जाए. तो वही होते हैं रिश्तेदार भाई. तुम्हारी सही जिंदगी चल रही है, बस आके वो टांग अड़ा देते हैं, बस वो बस हो गया भाई खराब. सौद तुमको सुनने के लिए ही मिला है. एग्जैक्टली उन्होंने इसलिए दिया कि भाई इतना प्यार से भाई हमारा प्रवचन सुना, इसकी वजह से इसको 100 रुपए दे देते हैं. It was so delicious the last time we tried it. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. I'm sure it'll be great. Can't let anyone get ahead of us. Okay. One slice of cake, please. Huh? Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, Moi. are you here to buy cake too? Hey, Pinky Pong. It seems Welcome Monsieur to the Nervalet was stream. right. Guys, You really moi can हो गया. eat. सब मोय कर दो यार. Did he really say something like that? मोय कार्तिक भाई. That's right. Even he has his own Prakash preferences when it comes Prakash to food. अरे भाई As for मोय me, guys. I Yes, love the मोय. cake and coffee here. सब मोय Do you कर दो. come here संदेश often? भाई. Yes, मोय हो गया guys. मोय हो गया. पूरी गैंग आ गई Usually लगता every है. day. फिजी भाई मोय लगता है पूरी गैंग आ गई Every guys. day? It's मोय part of हो my गया daily मेरे साथ schedule, फिजी apart भाई. from work. I shall have my cake Oh and my coffee. goodness. मोय guys. मोय. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon and you wouldn't get to eat cake here अरे anymore? सबका स्वागत है. What सुशी would भाई you रेड think? उड़ मारे हो क्या? हाँ But सुशी why भाई की would it तरफ से लगता है close? प्यारा सा रेड आया guys. Well, थैंक यू सुशी भाई. Paimon doesn't know मोय either, but ठीक है भाई. अंडी मंडी से maybe- जिसने भी मोय बोला उसकी maybe the समझ waters लो will तो rise बात साले tomorrow. ऐसे बोलेगा. बाद You know, मेरे से like in the prophecy. पूछा Oh, क्या the करोगे 12th के बाद मैंने तो बोल To be दिया. honest, I कुछ नहीं. haven't paid घर much पे बैठ के attention to फिर that. मम्मी ने No, really still, बचा लिया. even if there'd be no Red more from cake Sushi White, tomorrow, that let's wouldn't go. keep me from Sushi White having की तरफ some से today. रेड आया guys. No, Hashtag it's Sushi the no same check for कर eating पूछ in रहा. general. No. You might not be able to eat tomorrow, Kartik bhai, but if you can do Sushi so bhai. today, then you should Sushi carry bhai. on. That's what people call और living, प्रकाश you know. भाई, प्रशांत भाई, संदेश भाई, सबका स्वागत है. स्वागत है Don't सर, be स्वागत है हमारी sad. स्ट्रीम पे. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 Moi, moi. slices are for you. Sijween said that this kind of expression you're making is what humans call हेलो दुबई भाई, being बिल्कुल sad. स्ट्रीम मेरे साथ मोय हो जाता Oh, है. you अरे know कोई ना Sichuan? बचता यार. Konnichiwa. कितना पुल किया. अरे I sure 74 कर do. दिया. Mhm. This She way was 74 born before me, and she pull कर दिया. sometimes comes to the surface to teach us kind of things like 3-4 about पुल और humans. कर हो जाएगा. She said that humans are creatures that are saddened easily. Yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious Moi, moi, as in food. So हमारा please क्यों try खुलूस? the cakes here. I've got something else to do, so तो I'll कर be रहे, going हाँ, now. कर रहा हूँ, You कर do रहा try हूँ, to बस stay in a wait good कर mood रहा after हूँ. eating, all right? आर्कन क्वेश्चन की Bye. बात करने वाला हूँ. आर्कन कुछ कर लिया ऐसे सुशी भाई आपने? Can you review Furina novelet after this dialogue? And Okay, there she sure. goes. अभी कटसीन कंप्लीट होता है ना, उसके बाद हम करते हैं. all Bye right, bye. Sure. let's dig in. Paimon's sure this cake will be delicious. F2P bro, simple Welkin से. Small spender, It's only more Welkin. delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. मैंने बोला क्रिस्टल उड़ा पीसी ऑन करके मोए. ओके वेट, जरा मैं देख लूं दुबई का. दुबई अपना यूआईडी बोलो. नो टॉप अप्स. यप, नो टॉप अप्स. जिगली सुची भाई आपके पास रे कोइंस नहीं है. लुल बहुत तेज हो रहा है सुची भाई, उसके लिए रे कोइंस चाहिए होते हैं, ऐसे रेडियम नहीं मार सकते. हेलो 8413 किसी के पास नहीं है रे कोइंस. सुची भाई मोए हो गया. 8984. ओके ये वाला है राइट. यही है ना राइट. Okay, Favonius, very nice. 62, 173, 200 energy recharge. Very good. Hope is golden. 39, almost 40 kg. Crimson भाई, welcome to the stream. Boy, let's go. बहुत तेज, ये तो boy हो गया.
ओके डैम काफी अच्छा बिल्ड है यार। जस्ट चेक योर ओके नाइस काइंड ऑफ इसको भी बेटर कर सकते हो ठीक है। 7 ओ भाई डैम काफी अच्छा पीस है भाई। क्रिट डैमेज क्रिट रेट एंड एचपी परसेंटेज के साथ एचपी डबल डैम ये भी अच्छा पीस है बहुत खतरनाक। यहाँ भी एचपी वेरी नाइस एंड क्रिट डैमेज क्रिट रेट एचपी एनर्जी रिचार्ज डैम पीसेज अच्छे हैं। C0 है डबल क्राउन कर देना पर पहले अल्ट को कर ओके। बाकी आपका फोरिना एकदम मस्त है परफेक्ट है। फवोनियस नाइस पर मैं कहूँगा फवोनियस आप किसी और को दे देना। पाइप फार्म कर लो आई मीन पाइप इस पे अच्छा दिखता नहीं है फवोनियस ज़्यादा बेटर दिखता है आई गेस यही चला लो कोई दिक्कत नहीं। नोवेलेट ओके F2P वेपन 34 ओ 228 नाइस हंटर सेट डैम पीसेस तो काफी अच्छे मिल रखे हैं भाई आपको। एचपी सैंड्स डैम टू डैमेज गॉबलेट ये भी नाइस है बहुत अच्छा एंड डैम गुड डैम आपका नोवेलेट भी F2P एज F2P बहुत अच्छा शॉट टैलेंट ओके। अभी आपने सिंगल ग्राउंड रखा है इसके अल्ट को भी क्राउन कर देना मैं 40 के एचपी भाई डैम नोवेलेट भी आप काफी अच्छा है डैम बहुत अच्छा दुबई बाय। अरे कोई कर दो 20 के रिडीम्स लॉल भाई कि जिसके पास है वो है ही नहीं चैट में। सबसे बड़ा बात ये नहीं कि जिनके पास रे कॉइन्स है ना वो चैट में ही नहीं है तो कोई रिडीम नहीं मार सकता सिवाय पाइप ना इतना ग्राइंड ना। हाँ वो एग्जैक्टली एक्चुअली फवोनियस वो कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। काइंड ऑफ लाइक पाइप ज्यादा कुछ नहीं करता बस इट्स लाइक क्रेट रेट और एनर्जी रिचार्ज देता है। अगर ऑलरेडी आप 60+ हो तो आपको डजंट मैटर आप फवोनियस यूज कर सकते हो। इट्स अल्ट वर्थ यस इज डैम दुबई भाई अल्ट वर्थ इट है। अल्ट ही तो है सब कुछ फुरीना का का अल्ट मारोगे तो फुरीना का भी डैमेज बढ़ता है और पूरे टीम का डैमेज बढ़ता है। अगर आपका क्राउन है तो इट्स लाइक 75% डैमेज बोनस मिलता है आपको 75% ठीक है 75% इट्स लाइक काजुआ का बफ 40% समझ रहे हो। काजुआ 40% बफ देता है जब आप 1000 EM होता है ना काजुआ पे तो आपको 40% देता है ना उसी तरह का बफ है वो ठीक है ना। पर ये है कि ये सब कुछ बफ करता है इट्स लाइक नॉर्मल चार्ज सब कुछ बफ करता है ये बफ फुरीना का। तो इसलिए फुरीना का अल्ट बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे पहले फुरीना का अल्ट उसके बाद फुरीना का ही नो आई मीन नोवेलेट का अल्ट ओके नोवेलेट का अल्ट ओके आई सी नोवेलेट का अल्ट ओके नोवेलेट का अल्ट भी वर्थ इट है काइंड ऑफ वर्थ इट है। उसका डैमेज है उसका भी स्केलिंग है। फुरीना एनएच के लॉल क्या लिख रहा है क्रिम्सन पागल है क्या। पढ़ तो रहा मैं ऊपर का चैट ऊपर से पढ़ता हुआ आ रहा मैं। एक बंदी का स्ट्रीम देख रहा था फ्री फायर का स्ट्रीम कर बेकार एक फ्री फायर का स्ट्रीम बेकार रही थी आईपैड से बेकार कर रही थी क्या ये कह रहा है क्या बेकार कर रही थी आईपैड से। किस बंदी का देख रहा था भाई फ्री फायर। आइजन सुनो पूरा बात बोलना बाकी है एक सेकेंड वेट व्हाट मैकेनिक्स भाई एनिमे फ्री फायर नो आई मीन ओके तुझे भाई कर देता मैं अगर होता तो देख रहे हो गाइस होता तो कर देता भाई ठीक है। ये सुपर चैट 30 से स्टार्ट क्यों होती है काइंड ऑफ लाइक 29 रुपीज होता है वैसे तो सुपर चैट तो। ओके गाइस आगे चलते 11 मीटर्स इधर जाना है नीचे अरे फ्री फायर Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. ओके लेट्स गो चिंचिन मार घर लेके जाए एक वेट ओरेट्रीज मैकेनिक डेनलीस कार्डिनेल भाई माउथफुल नेम है भाई ओरेट्रीज ही बोल लो इसका शॉर्ट फॉर्म ओरेट्री। Charlotte, I am coming. Wow! If Tell it me, isn't the event, come Traveler home. at Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Ha! You've got some nerve! You just used us to make some quick mora! Can we negotiate a profit? अरे इनको दिमाग में कौन बड़ा भाई ये बात? Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? नहीं देखो पाइमन पिघल गई इधर ही। तो iPad से कर रहा था स्क्रीन क्वालिटी बेकार दे रहा था तो मैंने बोला कि सेटिंग देखना शायद You'd be in trouble now, you know. क्योंकि iPad से क्वालिटी बहुत बेटर आता है। मैं मेरे को बोलते तो मैं Still, what brings you here all of a sudden?
Were you looking for me? तुमने When कभी Mona स्ट्रीम mentioned किया you, we आईपैड thought of coming to see you at work. आईपैड है क्या तेरे से पूछी या तेरे को ट्रोल की है पहले I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. रियांश So she पुत्र mentioned me? What did एक she say? सेकंड रियांश पुत्र She आज said that नहीं you're तुम्हें a real daredevil of a तुम्हें श्राप देता हूँ journalist. कि तुम हर बार चीची से 50-50 हारोगे एक सेकंड Nice. In which case, can this एक सेकंड daredevil मेरा journalist मेरा dare बात to कहाँ से आ request गया an है चिंचुन exclusive मारू interview with बेर the legendary ये traveler बात and कहाँ से आ गया Paimon? भाई किसने सच कहा है बंदियों के So दिमाग your गुट्टे में ही article in the रहते paper भाई मैंने today बोला है वो doesn't बात मैं कभी झूठ बोला क्या Oh, of course मैं it बोलता हूँ doesn't. बंदियों That का was more दिमाग like घुटता live होता है भाई photography. What I'd like to do is फिर मैं क्या dive मतलब deeper उससे बोल and रही ask you थी to what talk about कर the रही things हो? you've seen and experienced. अबे लोल ओके नो मोर मजाक गाइस ठीक है नो मोर मजाक ठीक है सीरियस ओके आर्कन क्वेस्ट पे फोकस करने दो भाई सालों तुम लोग चैट पढ़ूंगा तो मैं आर्कन क्वेस्ट समझेगा नहीं मैं ठीक है तुम लोग चैट पढ़ने के चक्कर में भाई मेरा डायलॉग चेप रहा शेर भाई तुम्हारा डायलॉग मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ ठीक है आपका बात नहीं है मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि हाँ बंदियों का दिमाग गुट्टे में होता है आपका डायलॉग मैं नहीं लिया मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ आप मेरा स्ट्रीम पीछे का भी उठा सकते हो ठीक है Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, अरे so भाई that's a yes? Ooh, Arkan- splendid! I'll tell the editor-in-chief कैसे immediately. बकचोदी चल I'll have रही to है apply भाई for lighting, माउथ a खोल venue, यस some props, कार्तिक and भाई किधर जा रहे हो गलत बात अरे कार्तिक भाई की तो अभी मैच so देख much रहा to है get done now. माउथ Talk to आई you मीन later. माउथफुल कहने का मतलब काफी लंबा नॉट इंटरेस्टेड इन देयर ब्रेन I've बट अ still got a बिट question टायर for you. एक सेकंड नॉट इंटरेस्टेड इन देयर And what's बट ओके Just for brain, but a example, bit higher Fontaine than were to be their flooded tomorrow, समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं what would you घुटने do से थोड़ा सा today? ऊपर की बात कर रहे हैं आप कार्तिक भाई Huh. लेकिन That's the ब्रेन नहीं prophecy होगा you're तो फिर talking about, कैसे isn't it? कैसे काम चलेगा विदाउट mean, I ब्रेन भी do तो hear थोड़ा about बहुत it चाहिए often, ना but तभी तो I've never इंटरेस्टिंग once होगा thought that the day ये could तो be फिर कोई फायदा tomorrow. नहीं कार्तिक भाई If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave वो Fontaine. उसका नाम नहीं बता रहा Oh, but I'm still a journalist first and foremost. एंड बाय अरे That means I लाइट have a duty to be reporting from the scene. लाइक करके जाना And secondly, I ब्रो जब wouldn't भी कुछ forsake my महंगा homeland that खरीदने को easily. बोलता हो घर वाले From what I've हम seen, अंबानी most बिरला people नहीं है don't know क्यों what सुनाने they do मिलते should the भाई यू worst come to स्मार्ट pass. यू सो स्मार्ट In अरे truth, it might be better just to अरे behave like अभी normal क्या rather समझ than लिए worry कार्तिक over भाई such an यार end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the मैं कुछ office नहीं for that कहेगा। interview of ours. I know what पूरा you're मोह thinking. गाइस पूरा That मोह sounds हो a गया bit ठीक sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just गेम think वर्ड भाई about मोह it. मोह If ठीक है this घर nation वाले को really कह were देना to be मोह suddenly मोह destroyed tomorrow, और but I डैम मेरे को still आर्कन क्वेस्ट पे successfully फोकस करने finish दो an यार मैं एक भी exclusive डायलॉग interview नहीं with a ध्यान दिया मैं truly सिर्फ unique चैट पढ़ने में person, रह गया यार then the story I would wind up writing would truly be timeless. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. रियांश मराठी का पुच्ची मास्टर है That's so nice. नहीं बिल्कुल All of a नहीं sudden, ए I'm हेलो actually व्हाट kinda डू यू मीन envious भाई her. मराठी का मेरे यार Anyway, पुच्ची मास्टर let's go हेलो and take a look मत at the बोलो sea, ठीक shall है व्हाट डू अरे यार तुम सीरियस भाई पिटवाओगे मेरे को हे लॉस्टी मोए मोए क्यूटी हेलो मोए मोए लॉस्टी वेलकम टू द स्ट्रीम दैट इज मोर इंटरेस्टिंग अरे यार The sea तुम breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? तुम आर्कन क्वेस्ट नहीं कर रहे थे गाइस Hyman's been ब्रो thinking. थिंक्स सी इज पिट अप आकर ओह हाय गॉड पिट अप आ गया भाई मैं ना अभी रुको भाई तुम लोग भाई चैट कुछ ज्यादा ही बकलोली कर रहे हो भाई जस्ट मेरे को चैट रीड करने दो उसके बाद आर्केड क्वेस्ट की तरफ जाएंगे भाई नहीं तुम लोग आर्केड क्वेस्ट मेरे को समझने नहीं दोगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाऊंगा फिर मेरे को मोए मोए कर देगा तुम चैट में ठीक है भाई मैंने आईपैड यूज नहीं किया बट आई एम अ मोबाइल मैकेनिक करे भाई काइंड ऑफ यार आईपैड में तो फिर भी यार आईपैड काफी स्ट्रांग है तुम अच्छे से अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम कर सकते हो मैंने काफी दिन तक किया भाई मैंने मेरा स्टार्टिंग यूट्यूब भाई आईपैड से ही करता था मैं स्ट्रीम जिनको पता है जो अर्ली गेम में जो मेरे को अर्ली मतलब इट्स लाइक 1 ईयर से जानते हैं तो मैं पहले आईपैड से करता था फिर स्विच हुआ पीसी पे फिर उसके बाद PS5 पे आई मीन आईपैड फिर PS4 Pro देन PC देन PS5
काइंड ऑफ लाइक पीसी एंड PS5 दोनों सेम ही है। मैं खुद को ही कोस रहा था कि क्यों हेल्प करने जाता हूँ बंदियों को। तुम भाई तुम गए थे कुछ और कराने, तुम्हारा कुछ और हो गया भाई सीन है। पुची मास्टर ऑफ महाराष्ट्र, फिर सब बोलेंगे रेयान दल्ले। एग्जैक्टली वही, मेरे को नहीं बनना वो चीज हरकतें। हेलो रेविन भाई ऐसे मत करो, गलत बात, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ओके। ये नाम मेरे को मत दो, ये नाम हमारे सुशी भाई का, पुची मास्टर। भाई पुची मराठी में कुछ और होता है और बीसी भाई अब पंजाबी में पुची कुछ और होता है भाई। डूड भाई दोनों अलग ही है भाई, और दोनों एकदम क्वाइट डिफरेंट। आई मीन काइंड ऑफ डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, पर मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। इसमें क्या गलत है, सच्चाई है। मराठी में गाली नहीं, आई मीन तू ही पुच्ची दे रहा, फिर तो मैं नहीं दे रहा पुच्ची। हेलो मैं नहीं देता पुच्ची उच्ची, ठीक है। तू जा आइला पुच्ची मार ये लाइन मैंने हॉस्टल में सुनी थी एक बार। अरे भाई आईफोन इतना कैपेबल है, आईपैड तो और ज्यादा कैपेबल होना चाहिए। एग्जैक्टली आई नो नॉट क्लिप मत करो गाइस, डोंट क्लिप इट, ओके। मैं एक्सप्लेन कर रहा, इट्स लाइक हाँ मराठी में गाली होता है, और आई मीन और पंजाबी में पुच्ची इज लाइक किस, ठीक है। इट्स अरे क्या कर रहे हो कार्तिक भाई, गलत बात। और पंजाबी में इट्स लाइक किस होता है वो, ठीक है। चुम्मी जिसको कहते हैं ना, चुम्बे। गाली दे रहा मराठी में, ये जी गाली दे रहा है मराठी में। अरे अब तो भाई पंजाबी में चुम्मी दे रहा है। हेलो अजी पंजाबी में चुम्मी दे रहा है। हेलो भाई वो वाले डायलॉग याद आ गया। अजी गाली दे रहा है पंजाबी में, सॉरी मराठी में। गाली नहीं है फीमेल में। आई नो गाली बोलते हैं, मुझे मालूम है क्या होता है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, आई नो आइजन, मैं भी जानता हूँ भाई। ये देखो भाई रियान पूछ, अबे शट अप, ओके गाइस। रियान साहब डू द क्वेस्ट। गाइस मेरे को क्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम लोग भाई एकदम टॉपिक से डिफरेंट हट रहे हो भाई, क्या कर रहे हो गाइस? गलत बात गाइस, गलत बात। स्टीमर पाजी दे रहे थे और स्टीमर पाजी दे रहे थे भाई, स्टीमर पाजी दे रहे थे जॉय भाई को। मैं भूल भी नहीं सकता भाई, इतने हरामी क्लिप कर लेंगे भाई। अरे रुको मैं सुनाता तुम लोग को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तुम लोग को अगर डिस्कॉर्ड खोल के सुनाता हूँ सिमर पाजी क्या कह रहे थे। जस्ट सिमर पाजी आगे ना, तुम लोग को दिखाता हूँ भाई सिमर पाजी क्या। डिस्कॉर्ड खोल ले तो और सुनो तुम। ओके ओके डू द क्वेस्ट। बस ये सुन लो, बस ये सुन के जाओ, बस ये सिमर क्या कह रहा था वो दिखाता नहीं। रुको गाइस जस्ट सुन लो तुम लोग, ये बस सुन लो, ठीक है। जॉय भाई हमारे जॉय भाई का क्या था, मोरी नाम था ना, राइट? मोरी हमारे जॉय भाई। वेयर आर यू मोरी? वेयर इज मोरी? सॉरी होरी है। ओके ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं खोलता हूँ इसको। ओके डिस्प्ले कैप्चर ऑन करता हूँ, ठीक है। कम ऑन खुल जा भाई, फटाक से खुल जा, ठीक है। ओके अभी दिखाता तुम लोग गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। डिस्प्ले कैप्चर ऑन, ये देखो गाइस, ये देखो ये सुनना बस तुमने, ठीक है। शिवबाजी का सुनना है भाई। 10 महीने का चैनल मेंबरशिप, वाह भाई वाह, सही है। तुम्हें पुच्ची दो आप अभी। ये ले भाई जॉय भाई पुच्ची ले, ये ले भाई गीली पुच्ची ले भाई, गीली पुच्ची भाई। सुदेश भाई जॉय भाई तेरे लिए। अब तो वेलकिन हारने का तजुर्बा हो भाई। 10 महीने का चैनल मेंबरशिप, वाह भाई वाह, सही है। तुम्हें पुच्ची दो आप अभी। ये ले भाई जॉय भाई पुच्ची ले, ये ले भाई गीली पुच्ची ले भाई, गीली पुच्ची भाई। सुदेश भाई जॉय भाई तेरे लिए। अब तो वेलकिन हारने का तजुर्बा हो भाई। 10 महीने का चैनल मेंबरशिप। सिमर पाजी को बताएंगे कि क्या होता है उसका मतलब। सिमर पाजी 4 गाली देंगे। जॉय भाई थे हमारे भाई, सिमर का लग गया ये बच्ची देख के भाई। जॉय भाई
जॉय भाई ले रहे थे गाइस, जॉय भाई ले रहे थे हमारे। बहुत 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 चालू है जॉय भाई हमारे, बहुत चालू है जॉय भाई गाइस, समझे गाइस? जॉय भाई हमारे बहुत चालू आदमी है भाई। ये रिडीम में डालने वाला हूँ गाइस, रुको कल मैंने कल रिडीम में डालेगा। किसका बिल्ड है ये? नाहिदा का बिल्ड है क्या? आइजन नाहिदा का बिल्ड भेजा है क्या? ये नाहिदा बिल्ड लग रहा है। ये हाइजू बिल्ड है कि नाहिदा बिल्ड है बे? शिट। ये पीछे तुम्हारे जेंडर पे सवाल उठा सकता है। आप भी सुदेश भाई को पीछे, अरे सुदेश भाई भी थे, वो तो गलती से सुदेश भाई को दे रहे थे, तो सुदेश भाई से मतलब मिस करके जॉय भाई के पास चला गया। अब भाई डैम डूड, मैं नहीं कुछ कहेगा भाई, हो गया बहुत हो गया भाई। भाई मेरा ओ जबड़ा दर्द करने लग गया भाई, तुम लोग यार इतना हंसा दिया भाई मेरे को। शिट भाई, बहुत देर बाद ऐसे हंसा यार, पता नहीं उस एक बार कब हंसा था, लेकिन इसी तरह भाई हंसा था भाई। ओ एक आदमी के चरित्र और कलंक लगा दिया लल भाई। जॉय भाई को आने दो, फिर अभी हम बात करेंगे जॉय भाई से गाइस। चलो अब आर्कन क्वेस्ट पे फोकस करते हैं। नो मोर गिल्ली पुच्चिया, ओके? नो मोर किसिंग। अबे गिरता भाई पानी, अभी मैं गीला गीला हो जाता भाई। अभी गिलास पानी करके भाई, पानी पी लिया भाई। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू ऑन आर्कन क्वेस्ट, ठीक है? नो मोर पुच्चिया, ओके? नो मोर गिल्ली पुच्चिया, नो मोर किसेस। यू जोकिंग? नहीं, मी नो जोकिंग, ओके? ठीक ठीक, आई वांट से रियांस लव्स, ओके ठीक है, ओके 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 ओके। नो मोर चैटिंग, ओके गाइस, ठीक है? अब आर्कन क्वेस्ट पे फोकस, ओके? If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Damn, what a question. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. मैं नहीं पढ़ रहा रेविन भाई आपके चैट, ठीक है? ओह माय गॉड, तुम तब मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है? You mean still traveling? Yes, cherishing every single moment. Huh. नाइदा, Wait, isn't that what we've always been doing? देख लिया बिल्ड अच्छा है। वहाँ पे तू एनिमो डैमेज गॉबलेट क्यों दे रखा पहले ये बता? वहाँ डेंडरो होना चाहिए ना? ओह भाई, ठीक है रेविन भाई, थैंक यू थैंक यू। आ गया होगा, ओके ओके ठीक है, कोई ना, मैं देख लिया, ठीक है? बिल्ड अच्छा है, एकदम परफेक्ट बिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. Salty. क्या चक रही थी तू पाइमॉन? हाँ? So the two of you are still here. Wonderful. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillat sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the Fortress of Meropide. Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. Yes, inside the Opera House.
The Marechaussee Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Lady Furina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Furina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But देख लिया the इसे, moment मैंने people देख लिया feel actually. threatened, gods तू are भेजा ना, also तभी the देख लिया first मैंने. to be blamed. So what happened after that? Is Furina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Furina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, Nice, you mean zero she's throw, still no. missing? We are at 75. That's right. Pity. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much अच्छा, to ठीक है, मैं worry देख लेता about. हूँ वापस. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Don't worry, this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the palais now. Just one pull, I guess. Hey, smug Paimon. Damn. Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. You sure got on quickly. If we know Furina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervillet was talking to her तो in अभी the मैं Palais review करने जा रहा था मैं Marmont, तेरा. and she तू heard जा रहा about है? Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Furina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. ठीक है देख ले. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Cool, huh? So, I see. Becoming a detective can use some gun. In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come! अभी तो इसको नींद आ रहा था. Okay. Just give me a second. मैं जरा देख लो इसकी Furina नहीं नाहिदा. Okay, 3 piece crit damage, crit rate, ठीक है. Elemental mastery. Crit damage, crit rate, elemental mastery, ठीक है. Crit damage, crit rate, energy recharge and attack, ठीक है. Pieces तीनों अच्छे हैं रे, अच्छे तीनों pieces हैं, ठीक है. Nice piece. ठीक तो रेशियो एकदम अच्छा, elemental mastery piece भी एकदम अच्छा है. You can say that was a heated yes 100% Raven by सर्वर में प्लीज रुक जा भाई हाँ सलमान खान वाला रुक जा यार क्या. हाँ भाई जान लोगी हमारी लग रहा है तो. नहीं कर रहा. This place Thank you. looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Could Furina really be here? Let's try to find her as soon as possible.
No, Furina. There you are. That's Furina, right over there. She really is here all on her own. Hana. Wait. Yes, fine. Should I just give up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I am so sorry. Give up, Furina. There's no point in holding out. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? क्या गुंडा बनेगा रे तू? Lol. Who's that? Don't worry, Furina, it's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Furina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. What do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I will have order. To process it. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. They even dared bhai to sab kuch tout their try kar rahe hain kya? Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. I Oh, see. and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them, too. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Lol. Quick, after her! Huh? Furina, those people seem to be मैं after बोल you. दूंगा कुछ कार्तिक लॉल. They are... Next thing. They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. One-liner must suggest कर. Furina just ran off. एक मीम देखा उसने we have सारे to catch फीमेल up with her. आर्कन रो रहे हैं एंड वेंट इन जंगली पे गिगा चैट. हाँ मैंने भी वो देखा है मीम. भागने की मैकेनिक भाई एनपीसी की कैसे कितनी फनी होती है रे. लोल भाई कैसे भाग रहे वो. मैं तो कुछ बोला ही नहीं. This should be the place, right? Hey, Furina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. मैं नहीं पढ़ रहा चैट ट्रेविंग भाई का. भूत वाले टीटो ट्रैवलर भागते हैं. Paimon's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl.
shaking. Is it an earthquake? हम तुम एक कमरे में बंद हैं और दरवाजा लॉक है भाई. Yeah, a quake of this points kind नहीं कार्तिक भाई, preceded the exclamation flooding mark in RC. Poisson, didn't it? Exclamation It mark can't RC. be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Neverlette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... Reach the limit now. That's just talking about actual feelings is starting to far less stiff. We begin to talk amongst yourselves. It's true. Hmm. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. But even then, Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. Raven bhai, The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I jokes कम will ससी keep chat hope ज़्यादा थी alive वो for है ना कार्तिक everyone भाई. until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Reality थी but I could have sworn you were actually had it being in jokes. honest just now. more like lip reading. Furina. Although I don't know what you might be keeping from everyone. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. Yo Spark Bhai, welcome to the stream. कैसे हो? Hello Priyank, welcome to the stream. क्या हाल चाल? दोनों कैसा रहा आज दोनों का दिन? Spark Bhai. Oh, how to join giveaway? Membership and watch hours complete कर लो. Simple. こんにちは。लिप रीडिंग नहीं समझे. ये नहीं समझा. और लाइक लिप रीडिंग ये नहीं समझा मैं. एक्सक्लेमेशन मार्क आरसी से आवर्स चेक करते हैं अपने. उससे आवर्स और रे कॉइंस दोनों पता चल जाते हैं कितने वॉच आवर्स हैं. माउथ वाटरिंग लिप सिंग. A witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Teyvat nope. is in its entirety a show on a stage, You are then wrong. you're just a spectator, aren't you? समझ गया आप समझ गया. If that's the case... I mean, kind of, yes. Okay, bye.
Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. You would draw your blade against a god? वो सारा ड्रामा चल रहा है. I see. It seems like you have made up your mind. Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Furina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. Yes, I was exactly. unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, I will protect you. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera Plzzz is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Woohoo! Oh, now we're making history. मोन Why does करने it पे feel like Furina just took कैसे over the redeem whole मारा thing? तूने एक सेकंड. Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? Yep. All right, then. like so. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Okay, let's see. Let's go on trial. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Okay. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day.
I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean... the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Furina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Cloran, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Okay. Let's see Furina क्या dark secret reveal करती है इस trial में. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this
anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. Super practical gift. Let's go. Quickly confirm the information. सुदेश भाई रोने लग गए तुम चैट में Think of अभी it से. as a refresher, all right? You defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in. I didn't think this is the... Okay, wait, what? A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. You defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. This is the first time Monsieur Nervillette had a difference of opinion with the oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Nervillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Okay. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervillette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? Konnichiwa. Hey. Whoa. I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking our duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Lady Furina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah, even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? Huh. An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender.
If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? Okay. And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Nervlet? ये सही गेम है चैट में. तो Furina. Lady Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Oh. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Child. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all.
She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Furina फंस गई यहाँ पे. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. While exploring the ruins of Ocean. Irrelevant. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Furina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But
If you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Furina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Lady Furina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course you had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Furina, you may... Hey! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Furina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Furina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Furina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Furina could have... I can't believe... You... Listen to me, everyone! Please don't give me such cold and disdainful looks! What happened just now didn't prove a single thing! Think about it! How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? रहने दो तो this one. Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon.
it. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Furina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. Is too stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is guilty. Wow, she's really crying. Yeah. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Furina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty to be punished via the death sentence. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah! Even Fauché wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Excuse me, if I may interrupt. Is the trial still going? Fremine! You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Is that the first prophecy slate? Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate.
Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. Oh damn, Anit bhai. Huh? So what do you see? What is it? Oh my वो क्या बोलते हैं भाई? Oh my वो मुसिंदेव ऐसे कुछ करके है भाई वो. This looks like the previous Hydro Archon releasing her divine power. Turning the Oceanid into human being? Wait, what? I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kinda talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Let's do the content. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. क्या मतलब फॉन्टेन के सारे पीपल ओशनेड है? Okay, I see. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater, and the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Okay. That doesn't sound quite right. Okay.
let's think about this some more. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? इसका मतलब आप वाटर में विश कर रहे थे? The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. Hey, Kron bhai, aise karoge? The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Damn, verification complete. Biggest moi coming. Seriously, Karthik bhai? Huh? Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. अरे कुछ दिन से मोए चल रहे हैं सिर्फ. आर्कन क्वेस्ट में भी मोए ठीक है. Incredible! Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of oceanids. Indeed. Damn, dude. Second slate reveals the crime of the Hydro Archon. Yeah, and it follows from the content of the first Nice, slate Sudhanshu bhai. that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the opera epic Plzzz. The twists of history are often the most unexpected of all. Exactly, the power of water can take form of any shape. Now you know Oceanid को हम लोग जब मारते हैं तो वो क्या कहती है. Dude, damn, क्या फोर्स भाई, क्या फोर्स है. Damn, dude, क्या फोर्स ऐड किया था भाई उन्होंने. Oh my goodness, bro. भाई उसके डायलॉग में पूरा फॉन्टेन का हिस्ट्री है भाई. पूरा फॉन्टेन का हिस्ट्री है भाई उसके डायलॉग में.
as long as water leaves. क्या बोलती है वो? as long as water leaves. उसके बाद क्या था एक और डायलॉग? That mean I was killing human? We don't know. उसको फाउंटेन से भगाया गया है, तो तभी आके वो लियो में है. उसको फाउंटेन से भगा दिया गया था, तो आके अब लियो में रहती है वो. उसका एक और डायलॉग है ना, एज लॉन्ग एज वाटर रिमेन्स, ऐसे कुछ करके डायलॉग है ना, राइट? समथिंग लाइक है उसका. फुल डायलॉग मेरे को याद नहीं आ रहा. आज ascension from homeland or a fool who trespasses the water, और कुछ था एग्जैक्टली. यस, इन दिस वे वाटर विल पनिशमेंट. हाँ, ओशियन. डैम डूड, उसने पूरा फोरशैडो कर दिया भाई आर्कन क्वेस्ट को. तो किडिंग मी डूड. डैम डूड, वी नेवर सी दैट कमिंग भाई. वो इसके बाद उससे फाइट करना. As long as Ryan Sharma say Furina, I am happy. I will save Furina. Don't worry. Dude, let's continue. Isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Okay. Well, did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. Whoa. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Bolo Subhajit Chan. Human form. That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. कोई cutscene है क्या?
Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. And yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Fuck, bhai. Huh. What's going No on? matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. The ultimate proof. What? This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. That doesn't sound quite right. Let's think about this some more. That doesn't sound quite wait. right. Let's think about okay, this wait. some more. It was both dream and reality. Message tagged me. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? Ajax incoming. Wait, guys, no The spoiler. truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Was हमारे नोयर भाई, वो हमारे वेल लोग. रूट कॉज ऑफ डिजास्टर इज हमारे वेल लोग भाई इस गेम के. ओह माय गुडनेस, क्या ही कर सकते हैं. चाइल्ड का दूसरा नाम है. What the hell?
That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Teyvat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. Battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, Battle maniac. now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. What do you mean? Oh my goodness, Childus! क्या किया तूने भाई? इसमें भी क्रिट नहीं किया. हाँ, इसी क्रिट कर देता तो वन शॉट हो जाता भाई. यो चचा, वेलकम अर्पण भाई. क्या हालचाल? कैसन बा? डैम Childus सा. ओके, आई सी. कौन नोयर भाई को टैग कर रहा है रे? ओए, अब से ना कल से क्लिप वाला हटा देता. कोई क्लिप ही ना करता है मेरा. Damn, dude. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Teyvat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. Oh my goodness. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? ये वेल किसी दूसरे वर्ल्ड से आया, इस वर्ल्ड को डिवॉर करने के बाद दूसरे वर्ल्ड की तरफ चला जाएगा. What the fuck means दूसरे वर्ल्ड की तरफ चला जाएगा? क्या मल्टीवर्स यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं क्या? होएवर्स? हाँ, नो फकिंग वे. अब मोए मोए होगा. रुको, आई एम कंफ्यूज राइट नाउ. फ्लोरेंट, तू पानी बन जाएगी. नली क्या फाइट करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, फ्लोरेंट पानी नहीं बनने वाली भाई. डैम, इतने सारे लोअर डंप कर दिया इन्होंने यार एक बार में. मेरा ब्रेन भाई इधर उधर दौड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. फक बीसी, व्हाट डू यू मीन? में दूसरे वर्ल्ड से आया. इट्स लाइक हमारी तरह ये भी वेल. और क्या बताऊं, दूसरे वर्ल्ड से आया. ओके, आई सी. इट्स लाइक ए क्रिएचर. ओके, ठीक है. लगता है नाविया हमारे साथ नहीं, हमारे हाथ नहीं लगने वाली है. नेक्स्ट बार मिल जाएगी. अभी तो लोअर डंप बाकी है. एग्जैक्टली, अभी तो लोअर डंप बाकी है यार. ओके, आगे चलते हैं गाइस. The prophecy. Yes, what has been prophesized will be fulfilled. You may view such things as the history of the future.
ये हमारा एन, ये हमारी एन है भाई, जो अब हमें बता के गई थी कल। Still turn out to be like this. We couldn't fight against fate. But wait, but if this is all about fate, just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Moi guys, looks like moi hone wala hai. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Exactly, Sudhanshi bhai. We all need is fate, intertwined fate. Welcome Manan, कैसा है रे? काफी दिन से मिस कर रहा था. How are you, dude? सब ठीक है ना? खाना वाना खा लिया लौंडे? सब बढ़िया चल रहा है ना मनन? Even if the professor will fulfill, there will still be a way to save everyone. Exactly, there will be a way. It has to be a way. चल अच्छी बात है मन. The fate is Rion Sama win my 50-50. Yeah. Did I miss something? Looks like though. What is her real secret? क्या पता What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Furina! No! No, I still need answers. Where the hell we are? Furina. You. No. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. Not Furina. I couldn't help myself. Yup, she's Furina. You are not Furina. Yup. Who are you? The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, I knew it. The god. Focalor. Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes,
As you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. But why are you flat? Oh no, why? But why? It's okay. But why are you flat? Huh? Why? Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, He is God, guys. sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. ओ तभी वो फाउंटेन ऑफ मतलब फाउंटेन ऑफ लूशियन में जाके वो रोती है वहां पे, कहती है हाउ मच लॉन्ग, मतलब कितना देर तक और एक्ट करना पड़ेगा ना वाइस। ओके, तब वो जाके रोती है, तब हमें वहां पे आवाज सुनाई देता है फाउंटेन ऑफ लूशियन में ना वाइस। वाई फुरीना क्राइस। अब इसका भाई एक्ट मेरे को समझ में ओके, गॉट इट। Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. But why? Why do you deceive heavenly principles? Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Neil, bye. Welcome to the street. Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is
in a sense, me in human form. I must Exactly. definitely owe her an apology for it. देखो गाइस, इसने कहा ना, फोर्सलर ने कहा ना, इट्स लाइक फोर्सलर इन अ ह्यूमन फॉर्म, तो वो गॉड है, आर्कन है वो, ठीक है, बस उसके पास पावर नहीं है. इट्स लाइक जोंगली. जोंगली जब अपने ड्रैगन वाले फॉर्म को छोड़ के जोंगली फॉर्म में आया. इट्स लाइक सेम लाइक राइडन शोगन जब अपना कॉन्शियस मतलब उसने अपने जब अपने पूरे पावर्स बॉडी सब कुछ छोड़ के एक रोबोट में डाला. इट्स अ सेम, इट्स अ ह्यूमन फॉर्म. सी इज अ गॉड. जो भी भाई नहीं है भाई, तुम ऐसे रहने दे भाई. यू आर भाई, तेरे से आर्ग्यू करना भाई, इट्स लाइक भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पकुड़ा. तो तुमको भाई तुमको समझाना इट्स लाइक यूजलेस. बाकी तुम्हारा अपना चॉइस है. नहीं, मैं सेम सी इज नॉट गेम. व्हाट डू यू मीन बाय सी इज नॉट गेम? इट्स लाइक गन विदाउट एमो. आर्कन. व्हाट डू यू मीन बाय गन विदाउट एमो? आर्कन एक गॉड के दो फॉर्म. एग्जैक्टली. फुरिना पे कोई पावर नहीं है. जोंगली पे भी जोंगली अभी भी पावर है. वो बोलता है कि नोसिस कुछ नहीं करता, उसका पावर वापस आ रहा. नहीं, इट्स लाइक स्पार्क भाई, फुरिना के पास पावर क्यों नहीं है? इट्स लाइक अभी क्योंकि फोर्सलोर अभी यहाँ पे है ना, इट्स लाइक इसलिए पावर नहीं है. लेकिन फिर भी उसके पास कुछ तो पावर है ना, राइट? उसके पास कुछ तो पावर है. उसके पास तो कुछ तो पावर है ना. ऐसा थोड़ी कि उसने पूरा अपना पावर ही खो दिया है. वो बस एक ह्यूमन फॉर्म में. इट्स सेम लाइक वेंटी. वेंटी एक छोटा सा विंड था, उसके बाद उसने ह्यूमन फॉर्म लिया अपने फ्रेंड का, क्योंकि वो फेक है इसलिए पावर नहीं है. अबे जो मूव पावर नहीं है तो उसके पास वो हाइड्रो पावर कहाँ से आ रहे हैं? अभी आगे चलते हैं. आगे मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा और जज नहीं करूंगा. इट्स लाइक अभी आने दो, आगे चलते क्वेश्चन फिर आके. फुरिना इज अ ह्यूमन काउंटर पार्ट विदाउट पावर. एग्जैक्टली. यू कांट से कि वो आर्कन नहीं है. सी इज द आर्कन. बस उसके पास इट्स लाइक अभी ये फोर्सलोर है, ठीक है. सॉरी स्पॉइलर दे दिया. कैसा स्पॉइलर दे दिया? जोंगली पे अभी पावर है. वो बोलता है कि नोसिस कुछ नहीं करता. ये जोंगली का ये कोई स्पॉइलर था? मेरे को तो लगा जोंगली तो ऐसे ही नोसिस दे दिया था. उसको नोसिस की जरूरत भी नहीं थी. वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल था. क्योंकि भाई नहीं, दूसरा चैट. ओके बेटा, नहीं कुछ नहीं, उसका पावर अरे लोल भाई, तुम गजब आदमी हो यार. किडिंग में स्पार्क भाई, वापस से मैसेज रिट्रैक्ट कर लेते यार डूड. नहीं लेकिन फिर भी अगर जो भी है ठीक है, तुमने बताया उसको विजन मिलता है. इट्स ओके, ठीक है, विजन मिलता है, ठीक है. बट सी इज अ हाइड्रो आर्कन. बस उसके पास उसके पावर नहीं है. उसने डिविनिटी इसके पास है, फोर्सलोर के पास. सी इज द पावर. इट्स लाइक राइडन शोगन, ठीक है. राइडन शोगन है, पर क्या बोलते हैं वो हमेशा नहीं रहती है ये सॉन्ग या प्रो. बट पावर नहीं है फुरिना के पास कुछ भी एज पर बट पावर नहीं है फुरिना के पास. बस कुछ भी एज पर स्टोरी ना. ठीक है, मैं देखता हूँ, आगे चलते हैं. अभी कुछ भी जजमेंट नहीं बोल सकता. नहीं समझे लोग, आप कंटिन्यू करो, ठीक है. सर लोग नहीं समझे, आई गेस नहीं समझे, फिर अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी. जोंगली भी लाइक ले जाओ सिर के इसके जैसा 4 बना लूंगा. एग्जैक्टली गाइस, तुम लोग अभी भी आई मीन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे मेरा कहने का मतलब. लेकिन आगे कंटिन्यू करते स्टोरी, ठीक है. मे बी मैं पूरा स्टोरी समझ जाऊंगा तो मे बी तुम लोग को अच्छे से और समझा पाऊंगा, आई गेस. तो लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी. ओके, लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी, फिर मैं आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा. आप कंटिन्यू करो वरना स्पॉइल हो जाओगे आप. एग्जैक्टली मेरे को लग रहा नहीं भाई. इट्स लाइक मेरे को करने तो कंटिन्यू, फिर मैं समझ जाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को भी समझा पाऊंगा. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Count. ओके देखो, Furina, I know.
So, who permitted you to come onto this stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. वेंट और राइडन भी सेम है। नोसिस जाने के बाद भी है पावर उन पे। फुरीना नॉट अ आर्कन ह्यूमन इन वेस्ट फॉर्म, इसलिए वो प्राइमोर्डियल से भी उसको अफेक्ट किया। वो भी ओसिनेट ही वैसे सॉरी भाई फॉर दैट। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुदेश द फिश का काम कर ले भाई। आप नहीं समझे सर, अभी मेरे को कंप्लीट कर लेने तो फिर मैं इस पे कोई कमेंट करेगा, ठीक है? फिर मैं इस पे बात करेगा, ठीक है? Come on, it's me. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me? What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will.
And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed? Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but She is like the true form of a human. I'll try to do this. this. Archon का true form. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial? Huh. How exciting. I'll be looking forward He is to a it. human. He's like avatar of a god. ठीक है? God है वो, but avatar है, human form है. उसके बाद कोई power नहीं. But she is a god. Okay. So, run. हाँ exactly. Basically आर्कन ने अपने दो भाग कर दिए, एक को जो ह्यूमन था और एक जो डिवाइन. यहाँ पर अवतार बोल सकते हैं, बट अवतार ऑफ गॉड आर नॉट गॉड्स. एग्जैक्टली. I mean, avatar of gods are not god. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people.
What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Not an avatar, she was created by her. I kind of, yes. उसने कहा ना, उसने खुद कहा कि उसने सेपरेट किया, मतलब कि अपने आप को खुद को सेपरेट किया। उसको कुछ डायरेक्ट पहले उसने खुद ही कहा था ना कि हाँ, उसने अपने आप को सेपरेट किया। एक टोटली उसने अपने आप को डिवाइन रखा और एक को उसने ह्यूमन फॉर्म में किया। तो उसने कहा ना, काइंड ऑफ लाइक उसने क्रिएट करने का मतलब लाइक avatar कि हाँ, एक उसने टोटली एक ह्यूमन फॉर्म रखा। यस एग्जैक्टली, उसने एक अपना एक ह्यूमन फॉर्म रखा और एक का जो अलग किया वो डिवाइन फॉर्म। सी इज avatar। रिया दीदी एक येलो कार्ड सेंड करना प्लीज। ठीक है, मैं करता हूँ। पहले खत्म कर ले फिर स्पेकुलेशन कर लो। हाँ एग्जैक्टली, पहले खत्म कर लेते, ठीक है। Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclase. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people,
Whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Avatar are rare of a single constant, but there are no two. ऐसा थोड़ी है. राइडन शोगन का ही देख लो. राइडन शोगन को ही देख लो. 2 हैं उसमें. एक रोबोट है और एक ए है हमारी. जरूरी थोड़ी अवतार का. इट्स नॉट लाइक अवतार की सिंगल यही होना चाहिए. ब्रो व्हाई जीसस विथ आर8 रिवॉल्व. क्या बोल रहे हो? हेलो. पर गॉड का ह्यूमन फॉर्म भी है वो आइजन. वेट, अरे इसको छोड़ो, आइजन को छोड़ो. आगे चलते भाई अपना. पहले हम अपने क्वेश्चन. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. You're earnest. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. Yes, Neil, bhai, sure. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine! There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of this world! Damn. Scene 3 Opera House Furina. Lady Furina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Lady Furina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him.
Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. Ah, you're such a gentle and wise god. Thank you once again, on behalf of my son. Lady Furina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods, after all. Still, their spirit is praiseworthy. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Furina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. कितने सीन्स हैं यार? Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Furina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Furina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today, too. Oh, no fucking way. Lady Furina, it's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, almost 20 generations ago.
And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Furina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. So interminable. Exactly. Daily ये चीज करती है बेचारी. अभी So तो lonely. Fountain of Lucine में हमें सुनाई दे रहा था यही चीज. Exactly word. How much longer? Hundreds of years must have passed by now. Damn, dude. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. अरे स्ट्रीमलैब भाई को टपका दिया स्पार्क भाई को. हेलो. Furina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... वहाँ पे ये सब कुछ He's हमें right. बताने वाला. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Furina. You shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Furina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows. Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never
come by again. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness, and Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Knew it. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. What? I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be, accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. Wait, what? She's destroying the Hydro Archon throne. You mean कि भाई ये हाइड्रो आर्कन का जो प्लेस है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट? No fucking way, dude. It's like Hydro Archon है ही नहीं. Oh my goodness, you're kidding me? No fucking way. Now I see. Exactly. Okay, it's like Hydro Archon है ही. Now I see.
There is no god in Fontaine. वो भाई throne destroy कर दे रही है. It's like okay. तो ये throne destroy कर रही है, खुद को मार रही है. खुद को मारेगी तो हेवनली प्रिंस. आगे चलते. So the Oratrice's call for death was for neither Furina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. But... Nice plan, Focalor. No, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. No. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervillet, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalor. A devious one, Focalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common.
Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Judex Nervalette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the Primordial Sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. You obtain the power. Oh, no. They killed Senora. They killed Hydroar. They destroyed the throne. What the hell is going in Genshin Impact? Oh my goodness. Oh my god. Child abuse coming. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring Narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. अब यस नील भाई कर रहा है यार. डैम डूड, मेरा अभी ब्रेन लिटरली काम नहीं कर रहा. मेरे को कुछ टाइम देना पड़ेगा यार. It's like I have to process everything. But how are we going to do that? It's huge! I've already done my best to separate the power of the Primordial. I cannot reach the power source.
find a way to attack it from within. I shall share a part of the dragon's power. We shall look for an opening. Take it easy. I can feel its sorrow turning into hostility. Cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger resistance. Chance will present itself. Take it easy. Bust it. Seize the moment and use my power to suppress its Wait, what? Oh my goodness. Scorpio. What? अरे lol. Huh? What? अरे child को डालो फेंक दी सवाल. Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Wait, just a second. Master pet. कहने का मतलब कि what the हाँ? किसका मास्टर का पेट कौन है तुम्हारा मास्टर? हेलो डिसाइपल तो चाइल्ड पता है मेरे को. Why you looking so hot, Skirk? Oh my goodness. हाइड्रो आर्कन अथॉरिटी आर्कन के पास है. अब जब आर्कन ही नहीं है तो हाइड्रो अथॉरिटी आर्कन के पास हाइड्रो ड्रैगन के पास वापस है. हाँ एग्जैक्टली, वो तो समझ गया. अथॉरिटी यूज करके फाउंटेन के लोगों को रियल ब्लड दे दिया. आई मीन काइंड ऑफ लाइक उसने ये कर दिया ना, ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, माफी दे दी. Oh my goodness, भाई dude, उसका मास्टर मैं हूँ, always ready to train है भाई. सब सब थोरकी हो रहे चैट में. नो थोरकी पना भाई. Damn, she looks hot. कोई विजन वगैरह है क्या इस पे? कुछ है क्या? कुछ घूम के देख सकते क्या? सिन को फॉरगिवन कर दिया ना. हाँ एग्जैक्टली भाई. देखा नहीं, पेट को गोले में कन्वर्ट कर दी दीदी ने. उसका मास्टर पेट ही रखेगा उसको. अरे उसको तो क्वांटम अगर कोई होंकाई स्टारल खेलता है ना तो भाई क्वांटम जो है ना, क्वांटम एलिमेंट, उसका सिंबल सेम है, एग्जैक्ट सेम है. न्यू एलिमेंट है इसका. न्यू एलिमेंट है. ओके आई सी. न्यू एलिमेंट है. कौन सा नया एलिमेंट आने वाला है भाई? आई मीन आई थॉट इट्स अ डार्कनेस होगा और एक लाइट एलिमेंट आएगा, पर वो लास्ट में होगा. आई डोंट नो. ड्यूरेंडल टाइप कॉस्ट्यूम.
आगे चलते गाइस, आगे चलते, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। डिसाइपल, जो मास्टर पे डिसाइपल तो पता है भाई, आई नो डिसाइपल हु इज, आई वांट मास्टर्स पेट। That power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. Take the I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. हाँ भाई, what the fuck? भाई रेस कर रहा है, कौन रेस? That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. Pet sitting, the only thing that creatures. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk, I think you might have missed the point. Missed the point. Exactly, I just missed the point. What the heck is going on here? The point being? Why you are so hot? Huh? And कब आ रही हो तुम गेम में, huh? The point is कब आ रही हो? कब हम तुम्हारा, कब हम खेल सकते हैं तुम्हारे साथ? Huh? Our point is that. तो कब आ रही हो तुम गेम में? जल्दी बताओ यार। She used quantum. Okay, Karthik bhai. She used quantum. Okay, I see. Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Child master's master. Exactly. That's right. Child master's master. Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. You did. We never met by the way. Naughty हो रहा रियाज भाई, बिल्कुल नहीं, मैं dirty नहीं हो रहा guys. Me no naughty. His name is Surtology. Wait, what? Surtology? Surtology? Okay, ठीक है, अगली बार से याद रहे. Primordial one का ये नाम है क्या? I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl तो वो तो Fowl Legacy उसका तो child का है. The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhine-Daughter? हाँ, Rhine-Daughter सुना है हमने. Okay. Oh, that one we've heard. Rhine-Daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Yeah. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine-Daughter. They are both pursuing some form of perfection. Okay, ठीक है. Primordial one नहीं है. Okay, ठीक है. नहीं, मैं बस just ऐसे guess कर रहा. अभी चैट पढ़ता गाइस. 5 पॉइंट के बाद इसकी उम्मीद है. अरे यार अंश भाई दिल मत तोड़ो यार. Oh my goodness भाई बैक देखो रे उसका. वो दोस्त था इस दोस्त भाई कमर. Oh my god. No more. Wait, didn't you also mention a
visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Huh. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. Wow, this angle is very, very good. Nice angle. I like this angle. Game, love it. The game fan service deta hai na, I really love it. Thank you, game. Thanks a lot. I mean, I want to post this angle. बस का क्या कोई एलिमेंट नहीं है समझो कब एसएस ले लो यस श्योर व्हाई नॉट वेरी वेरी गुड एंगल जब गेम फैन सर्विस देता आई लाइक इट थैंक्स अ लॉट गेम थैंक यू आई मीन इट थैंक यू वेरी एड स्मैशर्स स्क्रीनशॉट टाइम यस श्योर श्योर तो ले लिया भाई Game knows it's based too well low. Thumbnail material, yes. इससे better है मेरे पास actually. I like it. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Nope. Never. What? No. Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong.
the Spina di Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Hey, Rox, Edwin's thank you. assistant, Thank you for Jurier, the 40. created a true flying ship, 40, while thank Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure अरे that पूछ these रहा हूँ stories total could draw कितने हैं? even your well-traveled eye. कितने कटसीन है डायलॉग के बीच में आई डोंट नो पर दे रियली डिड ड्राउन फाउंटेन फाइनली आई मीन फाइनली उन्होंने कुछ किया यार इट्स लाइक यस दे डिड इट फाइनली उन्होंने फाउंटेन को भाई फ्लड किया एंड भाई अभी उसका यस वी आर सीइंग एवरीथिंग दुख तो नाविया का भी है 4 कटसीन है ओके डैम एंड नाउ वी हैव ओनली 6 आर्कन देयर इज नो हाइड्रो आर्कन थ्रोन डिस्ट्रॉय हो चुका है इट्स लाइक जो 7 सीट थी उसमें से एक सीट गई हाइड्रो आर्कन ने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने साथ और वेयर द फक इज हेवनली प्रिंसिपल किधर सोई है वो तो किडिंग में ही आना तो चाहिए ओह माय गॉड ब्रो थिंक्स ही इज मंकी डी लूफी किसका बात कर रहे हो मंकी डी लूफी रिजली का मतलब damn dude oh my Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. वो 500 साल से सो ही रहे हैं हाँ मेरे को लग रहा है wait what did I get मेरे को तो कुछ तो मिला भाई what was that sorry guys time to wish for Furina okay it's time to wish for Furina can we get a Furina okay here we go guys wish karo yes time to get a Furina C2 okay it's a really good time can we get a Furina C2 here game we just almost finished the quest and can we get a C2 please डेंसलिफ के बैनर कब आएगा BCA मोबाइल में टाइप करना मुश्किल है मोबाइल छोड़ो सोचो ये मोबाइल पे कटसीन चलेगा तो मोबाइल वालों का क्या हाल होगा भाई ये कटसीन अगर मोबाइल पे चला मोबाइल तो भाई पटाखा बन जाएगा क्वेस्ट फिनिश नहीं हुआ है अभी एक्चुअली फिनिश नहीं हुआ है बट स्टिल वी गॉट वन विश ओके गाइस हियर वी गो अगेन कैन वी गेट अ Furina please we are begging you please give me my Furina oh no मोबाइल पे मस्त चल रहा भाई सीरियसली मोबाइल पे कैसे मस्त चल रहा भाई आई एम कंफ्यूज भाई बेइज्जती कर दी
75. Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Okay, he's our from residents are Snezhnaya. hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clorand? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Furina, so she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision-makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. एक्चुअली हेवनली प्रिंसिपल जो अपनी पावर यूज कर चुकी है इन कांडे इंसिडेंट जस्ट लाइक रुका देवता डिड टू रिमूव अननोन नॉलेज एंड देयर फॉर्म बिकम स्मॉल एक्चुअली यस यू आर राइट भाई हो सकता है मे बी स्मॉल हो गई हो या मे बी रेस्ट कर रही हो चाहे आई डोंट नो यार लेकिन इट्स लाइक हम जितना भी कुछ कर रहे हैं वो कुछ अपने को लिटरली वो हमें कुछ भी नहीं कर रही है इट्स लाइक हमें कुछ भी रोकने भी नहीं आ रही है और हम बस पास थ्रू कर रहे थे तब हमें रोकने आ गई थी मैंने प्रिंसिपल और कोई नहीं पाइमोन स्मॉल मे भी हो सकता है पाइमोन स्मॉल हो सकता है यस ये थ्योरी तो हमने भी सुना है यार कि सब कह रहे कि हेवनली प्रिंसिपल इज पाइमोन तो फिर व्हाई शी विल हेल्प अस ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाहे भाई आप वे की थ्योरी देखो सब समझ नील भाई देखेगा श्योर देख लेगा ओके कार्तिक भाई वेट I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Clorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. Hey. How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Nope. Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. Oh my god. कितने स्नैप लेगी All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. देखते क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूँ इसका आशिकाए का मैं थ्योरी देखता हूँ ज्यादातर You're very quick.
Speed is of the essence when it comes to the news, and क्योंकि वो freshness is ज़्यादातर the on key. point होती है. Also, not to अगर कोई brag, but theory I'm वगैरह pretty भी good at होता है building तो I watch connections. आशिका. Who knows? I might eventually get that Okay, interview Veka भी with देख you लेंगे. after all, Miss Clarand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. You tell me, पाइमन जैसा और क्यों नहीं है त्योहार? पाइमन का एक और थ्योरी है, ये लॉन्ग लॉस्ट सीली के इसमें भी आती है, काइंड ऑफ लाइक लॉन्ग लॉस्ट सीली की रेस हो सकती है ये, उनमें से बची हुई एक सीली है ये भी एक पाइमन का थ्योरी है, राइट? बाकी सारे स्पेकुलेशन है, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है? Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in तो नहीं कह exchange. सकते ना, it's like clothes is like, क्या ही कह सकते हैं अब, अगर आप पैसे देखोगे तो फिर तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगा? I guess क्या ही कह फिर, मैं भी पहले वे की वीडियो देखता हूँ पर दूसरे मैं थ्योरी अगर किसी का देखता हूँ ना, अगर मैं किसी का अगर लोअर एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, मेरे को आशिका ही सबसे ऑन टॉप लगती है, ठीक है? उसके बाद ही किसी का, आई मीन उसके बाद किसका देखूँ मैं, किसी और का देखा नहीं। वे का भी एक दो थ्योरी वीडियो देखा है मैंने, लेकिन मेरे को आशिका ही का एकदम ऑन टॉप लगता है। इट्स लाइक वो एकदम एक्यूरेट होती है, 99%, नॉट 100%, हाँ 90% वो एक्यूरेट है, नॉट 99, 90% वो एक्यूरेट ही रहती है, ऑन पॉइंट होती है। वो वीडियो देखते हो आप, हैं? Guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you've been missing us. Duke! Did you come all the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse नहीं, आपका भी ये नहीं recommended कह to. रहा है कि पाइमन हो It's सकती an है honor आपको। to finally meet the much rumored मैं भी अपना Duke. वाला बता रहा है कि हाँ Thank you for पाइमन ये भी हो consenting to my सकती है। मैं visit to आपका the ये fortress, शॉर्ट आउट नहीं sir. कर रहा है। It's not No like कि need मैं to thank आपके me. थ्योरी But को that कह रहा है said, कि आपका I गलत है, shouldn't be आपका the भी सही हो focus of सकता your है। interview. और मैं आपको बस I कह रहा trust कि you मेरा भी recall सही our हो सकता है। agreement? Of course, of course. All right then, this way. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jury. Archon quest almost done game Sir, by. please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview ठीक है, be देखता very हूँ, थानस को important भेजता to हूँ। you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh! Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop.
I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Damn, see, he's a clever one. You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. आंटी हो रहा है जॉब है चैट में I've seen आप this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Zijui. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Sijuane, over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? naughty हो रहा है joy by naughty, full naughty. Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurrier? Miss Lurvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. I'll just leave the spotlight to you two. And it's a real I see. have done. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? Zero throw by खा लिया खाना. I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. ये कह रहा है कि rainbow string Paimon पे attached है from heaven. Are things Paimon is being controlled by heavenly prince. What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Furina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, maybe I haven't done we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Okay. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right. Last stop, the docks. शायद मैंने नहीं किया है. लिफ्ट आने में काफी टाइम लगाता है. गुड नाइट नील भाई. अरे पता नहीं किधर जाना है ना, दिक्कत क्या है. Boring. Exactly, boring. Isn't there anything else more interesting to do? Okay, wait.
धनुष चचा हमारे किधर का है? और कितने हैं मेरे पास? अरे मेरे को नहीं पता तेरा पर्पल कैसे है लोल भाई। मेरे को नहीं पता मेरे को तेरा पर्पल कहाँ से मिले। Oh, I have no idea, bro. एक दो दिन में मिले हैं मेरे को, सबने गिफ्ट किया एक्चुअली। Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? You know what? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. Okay, The water level has returned to normal. But if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. मेरे ख्याल से सबने कल ही कर लिया था, सब You कल ही could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, PS वालों को Fremine? ज्यादा मिलता है लो, ऐसा कुछ नहीं है। फैनस भाई ने मेरे को कुछ भेजे थे और मैंने उनको सारा रिटर्न कर दिया। I'll help you make some more friends. To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Underage है वो, Please, Charlotte. Write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. So, how have things been, Traveler? Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Furina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. Wait, what? A diplomatic gift? Gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. That's true, but The only father every boy seem for name. irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Hali hai, Neuvillette knows about? Hali? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the Fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that.
The gnosis was given to the knave, right? What about child? हाँ वो तो They पता है say मेरे that को he's नोवेलेट returned को to नोसिस की Snezhnaya जरूरत है. to recover from Wait his guys, wounds. स्पॉइलर I मत hear दो that यार the मेरे ख्याल recent से ये disaster स्पॉइलर हो गया really मेरे did a लिए. number on I his know that health. कि नोवेलेट को नोसिस की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको अथॉरिटी मिल चुकी है. But still guys, just okay wait. Don't spoil me for don't spoil. हाँ? Just क्योंकि अभी भी कुछ डॉट्स मैं पॉइंट जोड़ रहा हूँ. Loads of run-ins with the Fatui. ओके ठीक है. नहीं मैं अभी भी कुछ डॉट्स मैं खुद जोड़ रहा हूँ तो मेरे को जोड़ने So दो. shocked by अगर मैं such a गलत होता हूँ simple फिर बताना switching आप of लोग, ठीक है? sides? Hey, Father. Mommy bol. Well, That's- well, yeah. what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes. Father. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourself ये to इतनी be हार्ड great मॉमी है partners. कि भाई डैडी बन गई है. हेलो. ये इतनी हार्ड मॉमी है गाइस कि ये डैडी बन गई है. I get it. Damn dude. A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. Oh, child का vision, okay. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Damn, she looks hot, yeah. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear Single magicians parenting is so hard, and yes. our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I really want to I was Karthik giving back. out magic pockets when we first met too. And what do you know? Nani? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. हाँ, मेरे को भी जल्दी We will करना all है. follow our own paths. अब इसमें And serendipity will lead you 1.5x to नहीं your कर सकता fated ना. friends. अब All जितना right, चल रहा then. है वैसे ही चलने दे We'll be सकता handing ना. out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. और तो गाइस सुसु करके आए रे. कितने सेकंड?
a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Me back, Londo. Look for no millet, okay. You hold all travelers. C2 NHK. Chat miss बेटा, एक चीज अभी तक क्लियर नहीं है, चाइल्ड का विजन माल फंक्शन क्यों हुआ? नार्वल की वजह से वही माल फंक्शन कर रहा था, उसकी वजह से ही माल फंक्शन हो रहा था। हाँ मेरे को भी लग रहा है यार, वाटरफॉल का कुछ ज्यादा ही है। किसका बर्थडे रे? रिजली का बर्थडे। भाई SFX माँ की आंख भाई। SFX मेरा 100% पे था। Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Paimon's glad that you remembered. पर मोना का on your mind, what with you being busy and all. विजन malfunction नहीं कर रहा। Let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Whoa. So that's what happened? I only saw Furina part myself. Fusillor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. नहीं रे एंड्रोस, अभी विश करने वाला हूँ। हिक्लोर इनकमिंग बाय। किसने मेरे को स्पॉइल कर दिया था उस समय कह के कि भाई हाइड्रो ड्रैगन ने ये कर दिया। गलत बात, तुम लोगों ने स्पॉइल कर दिया मेरे लिए। मैंने वो ब्लड वाला अभी बता रहा है ना भाई बंदा। गलत बात गाइस। In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Fusillor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. ये सब स्पॉइल करता है। क्या स्पॉइल किया? कुछ नहीं है।
मेरे को लगा जजमेंट से बच गया, ये नहीं पता था इसने ब्लड को आई मीन वाटर को चेंज करके ब्लड में किया था। इट्स लाइक मैं सोचा कि जजमेंट दिया उसने। सॉरी मैं गलती से ब्लड वर्ड यूज कर लिया था मैंने वहां पे। एक्चुअली मेरे को लगा बस एज ए रेफरेंस दे रहा हो, ठीक है ना कार्तिक भाई, मेरे को लगा एज ए रेफरेंस दे रहा हो। मेरे को लगा उसने बस जजमेंट सुनाया जिससे वो मतलब कि पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। मेरे को नहीं पता था सच्ची में उसने अब कर दिया ना मेरे इसलिए स्पॉइल। Child is the reincarnation and have foul legacy. Narwhal somehow malformed due to the foul legacy. फाउल लेगेसी तो उसका ऑलरेडी अलग फॉर्म था, वो विजन से कनेक्टेड नहीं था वैसे। अबे काय को टेंशन ले रहा है? इट्स ओके कार्तिक भाई, मजाक कर रहा है। इट्स ओके, उतना थोड़ा बहुत हो जाता है, हो जाता है, गलती हो जाती है यार। फ्लो में आदमी लिख देता है कभी। You could say that it was that the Fontanians were finally truly born. Yeah, and in a manner of speaking, Fosulor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. No other transfer. अभी तक हमने किसी को देखा नहीं है वैसे। अभी हमने कितने लोगों को देख लिया है, कितने हार्बिंजर से तो फाइट कर लिया है। फाउल लेगेसी जैसा ट्रांसफॉर्मेशन इसका था ना, क्या बोलते हैं डिल्यूजन का, क्या बोलते हैं इसका, शिन्योरा का। शिन्योरा डिल्यूजन से पहले ये करती है क्रायो एलिमेंट यूज करती है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं वो फिर वापस से फायर विच बनती है। तो है भाई शिन्योरा RIP है ना, दूसरे भी यूज करते हैं। फाउल लेगेसी जैसा है सिनियोरा का भी ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक हार्बिंजर का 2 ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक होगा उनका खुद का विजन का और एक होगा डिल्यूजन का, समझे? स्कारडूस और कौन आया है? और कोई अभी तक नहीं आया वैसे। फतोई वाला ट्रेलर नहीं देखे क्या? फतोई वाला ट्रेलर नहीं देखे क्या? देखे तो है गेम गॉड भाई, देखे तो है। अभी तक अभी जो भी मतलब प्लेएबल हुआ है, चाहे एज अ उससे फाइट करना हुआ है, उसका बात कर रहे हैं। का तो क्रिम्सन विच वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, फाउल लेगेसी वाला अलग है। नहीं वो ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनका भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन है। डिल्यूजन क्रायो है, हाँ एग्जैक्टली डिल्यूजन क्रायो है। वो हम बता रहे हैं कि सबके 2 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो फाउल लेगेसी का ट्रांसफॉर्मेशन उसका यूनिक है, यस उसका यूनिक है, चाइल्ड के लिए यूनिक है। फाउल लेगेसी इज लाइक डिल्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, ठीक है। ओके आगे चलते गाइस, इस पे बाद में भी बात करते। हाय कियाना भाई देवे, वेलकम। कर रहा है जीरो भाई। It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Yup, I have lots of things to ask. पहले ये बच जाने था, कोनिचिवा बच जाने थी। Ask away. I will tell you the truth as I know it. Okay, now here we are. अब आया भाई, about the initial verdict that was passed on childhood. Delulu transformation, hydro, electro, delusion and foul legacy. इलेक्ट्रो डिल्यूजन एंड फाउल लेगेसी, एग्जैक्टली। फाउल लेगेसी डिल्यूजन से रिलेटेड कम, अबिस से रिलेटेड ज़्यादा है, पर हाँ डिल्यूजन उसको मतलब ट्रिगर करता है ना, एंड उसको डिल्यूजन ही ट्रिगर करता है ना। हम अभी तक 3 से फाइट कर चुके हैं, हाँ 3 से ही फाइट किए हैं एग्जैक्टली। हम अपने लॉर बना रहे हैं यहाँ बैठ के, काइंड ऑफ यस। तो वही होना ही चाहिए भाई, अपना लॉर बनाना चाहिए। जरूरी थोड़ी है दूसरे का लॉर फॉर्म करना चाहिए, सुनना चाहिए कभी कभी, अपना भी सुनना चाहिए। चाहे आपने जो किया क्वेस्ट, जितना आपने समझा आप बता सकते हो दूसरों को भी। डजंट मीन कि आप दूसरों को सुन के उसका बात दूसरों को फैलाओ, नॉट लाइक दैट। आप अपना भी समझ सकते हो, राइट? एम आई राइट गाइस? सही बोला कि नहीं? नथिंग दैट सेज कि डिल्यूजन उसका ट्रिगर करता है यार, करता है डिल्यूजन। मेरे ख्याल से जब हम लोग फाइट लेते हैं तो वो डिल्यूजन वाला होता ही है यार। वी आर डूइंग सम बिग ब्रेन शिट, एग्जैक्टली। चलो भाई इस पे और आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे मैं तो दूसरों का ही बोल रहा था अबाउट चाइल्ड रीइंकार्नेशन। अबे चाइल्ड का रीइंकार्नेशन का कहाँ बात आ रहा है? चुप रहे अभी तो। मरा नहीं है कि रीइंकार्नेशन वो नॉकडाउन हुआ था और उसको भाई ऐसे उछाल के फेंका, ऐसा लगा जैसे कि भाई
कोई कचरा उठा कर नहीं फेंकता है, जैसे कि भाई वहां पर डस्टबिन पड़ा हुआ और यहाँ से हम लोग कागज नहीं फेंकते कि भाई डस्टबिन में चला, ऐसा उठा कर फेंक दिया स्कर्क ने उसको, और उस नार्वल को भी भाई, वो वेल को, व्हाट द फक। इसका सैंड्रोनी वो रोबोट वाली का बॉस फाइट देखना है। इमेजिन उसके रोबोट से फाइट करने का फनी डिफरेंट होगा, काइंड ऑफ स्टाइलिश रीइंकार्नेशन और समथिंग इम्पोर्टेंट। चल ठीक है, चुप रहे आइसन, अब बकचोदी नहीं, ठीक है। उसका विजन अलग है, डिल्यूजन अलग है, फाउल लेगेसी भी अलग है। हैं क्या बात कर रहा, 3 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है सर चाइल्ड के। फाउल लेगेसी इज टोटली डिफरेंट, जो स्पेक्ट ने उसको सिखाया। रियली मेरे को लगा डिल्यूजन ही ट्रिगर करता है उसका फाउल लेगेसी, डिल्यूजन नहीं, मेरे को लगा उसका ट्रिगर करता है भाई। आई गेस मेरे को देखना पड़ेगा वापस से। चलो ठीक है, इस पर आगे बात नहीं करेंगे। फाइनली कोई बोला क्या फाइनली? नहीं, मेरे को लगा कि उसका फाउल लेगेसी ट्रिगर करता, आई मीन डिल्यूजन ट्रिगर करता है उसको फाउल लेगेसी को। वेट गाइस वेट, आई मीन उसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं, वेट पहले ये वाला कंप्लीट करने दो, उसके बाद बात करते हैं। सो मैं तो फाउलेस तक उसके स्टूडेंट है, सो वेटिंग फॉर फाउल। तो वेट, I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Focalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. इसलिए फोसलोर ने ये किया, ओके, उसको ये किया। I see, now I see. I mean फोसलोर ने सोचा वैसे। ओके वेट, मैं इलेक्ट्रोकास्ट समझ, जितने भी यूट्यूब में थ्योरी करते हैं लोग और करते आ रहे हैं, आज तक किसी का सही हुआ है क्या? फर्स्ट में उसमें हाइड्रो रेजिस्टेंस होता है, सेकंड में इलेक्ट्रोएशन, लास्ट फॉर्म में दोनों। हाँ, चाइल्ड के 3 फेज हैं, विजन, डिल्यूजन, फाउल लेगेसी। आइजन बिना बात की ट्रेन की हो, एक सेकेंड, बिना बात की ट्रेन की होगी। यस, कम ऑन सर, द फाउल लेगेसी एंड द फाउल लेगेसी, the fall and foul legacy resemblance, right? Thanos, नहीं, मेरे को ये लगा था ना, मैं नहीं कहूँगा, मैं बेबी तुम लोग सही हो, मैं गलत हूँ, तो मैं ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम लोग गलत हो भाई। मेरे को लगा कि फाउल लेगेसी, आई मीन फाउल लेगेसी ट्रिगर होता है डिल्यूजन की वजह से। आई गेस अभी लोर का पता चला फाउल लेगेसी के बारे में, तो हाँ ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि यार वो अलग फॉर्म है। मेरा यही सोच, ये मानना था। अब जल्दी आगे बढ़ता, तेरे को किस चीज़ का जल्दी है? तू चला जा सोने भाई, तू बाद में आके स्ट्रीम को ओपन करके देख लियो। फालतू का फोर्स मत कर यार आइसन, ठीक है? फालतू का फोर्स मत कर प्लीज। Guess Focalor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. मैं जाने का क्या करूँ? चाइल्ड से आज तक फाइट कौन करता है? बोल भाई, मैं जान के क्या करूँ? Hi. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Okay. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed oceanids? Kind of, yes. क्योंकि तो भाई ब्लड की जगह वहाँ तो पानी दौड़ रहा था। Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Ah, yes, you are right. Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. Ah, yeah, Lynette and that one. Wait, ब्रो, ये फाउल और वो मिरर में हम अपने सिबलिंग को देखते हैं, उस पेस्ट में फाउल को मेंशन किया था शायद, इतना ध्यान नहीं आ रहा यार। फॉर सीनियर शी वाज बेसिकली अ प्योर pyro element being and her power hurts herself, so Fatoi gave her, हाँ exactly, उसका पावर उसको हर्ट कर रहा था, इसके वजह से उसको क्रायो डिल्यूजन दिया गया था कि उसको मतलब पायरो पावर, हाँ यस, उसका पायरो पावर सप्रेस्ड कर सके। यस, वो तो पता है मेरे को एंड्रूस, उसके बारे में आई नो।
ऑनेस्टली आजकल लोग चाइल्ड से फाइट ही नहीं करते, इनकेस मटेरियल चाहिए हो। हाँ अभी कौन फाइट करता है यार। अच्छा तुम सब अभी जो डिस्कस कर रहे हो, कल मैं और सैडो सेम डिस्कस इस टॉपिक पे कर रहे थे डिस्कॉर्ड में। ओह नाइस, अच्छी बात है। In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. about Fontaine future. Yeah, about that. Risley said Furina has already left. What's that all about? Ah, Lady Furina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Damn, अब मेरा मन कर रहा है यार फुरीना का क्वेस्ट करने का. Having said that, she then packed her things and moved out of the opera house, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Exactly. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? वेल से बचने के लिए स्टैमिना बचा के रखते थे लोग. सीरियसली भाई नींद में कुछ भी लिख रहा हूँ. लोल मैं तो चाइल्ड से फाइट करता, बस वीकली क्वेस्ट कीजिए. Dude is too easy. Exactly. As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Damn. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? वो नर्फ हुआ फिर जस्ट बाद जोंगली बफ. अभी हाथ वेट व्हाट एक टाइम था जब चाहे वो बहुत नर्फ हुआ है. वो पैच में बहुत एनिमीज को नर्फ किया. फिर 2-3 पैच बाद डेफ का डैमेज एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा दिया, जिससे डैमेज कम. आइजन सो गया क्या? वो सो नहीं किया होगा. Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Oh, New Musia, okay. Numa and Usha, okay. दोनों को मिला दो तो New Musia, okay. Wow, this ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Fontaine Gnosis, let's go. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis.
Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. लो भाई यहाँ पे बता ही दिया. Here we go, exactly. अब होगा lower drop. As such, it has lost all meaning for Fontaine. Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations? Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan, I presume? Yup, Nat. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. Okay, Natlan के बारे में सुनने दो guys. वहीं पे तो अपना ये है ना, क्या बोलते हैं यार? Mayor Jivari, right? As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. Wait, what? Holy shit! Nation of Dragons, हाँ, Lord Drop नहीं है, लेकिन kind of interesting है भाई. A nation of dragons? You mean like you? वार का कहाँ है? I don't know. No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Oh. वहाँ पे guys अपने को भाई dragons and damn, that's good. Natlan is also the nation of war. War. War ravages those lands like an God of undying war. flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the Knave that I believe may be useful to you. The Harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. Oh, Captain, I see. उधर Cap. Okay, now. भारका की लाश मिलेगी नेट लैब अबे साले. अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता है. A dragon on new age. You can say, The captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui Harbinger doing their thing. Exactly. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Ask away. I will tell you the truth as I know it. I have no more questions. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. Okay, When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Okay, ये अकेले के लिए बात कर रहा था क्या? Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of.
Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains of third descender. Wait, what? Remains? I've never heard of any such thing. Remains? Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Wait, what? Gnosis, third descender. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. Exactly. I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Wait guys, मैं chat पढ़ रहा हूँ तुम लोगों का. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing, but once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Okay. So... That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. She mentioned one of them. I am the fourth. Okay, here we go. By flexing, I am the fourth descender. And one that knows is related to... I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Comparing the Traveler to the dead third descender and all. Okay, wait, क्या लिखा है स्पार्क भाई ने? Basically Gnosis कुछ भी नहीं, बस एक सर्वेलेंस टूल था, इसलिए सारे आर्कन के पावर अभी भी हैं. Gnosis देने के बाद भी इस Gnosis के वजह से नाइस स्पेकुलेशन. मेरे को लगता है Gnosis इज लाइक इट्स लाइक अ पावर कैप्चर, कहते हैं ना, जैसे कि पावर रखने वाला. मेरे को लगा जैसे कि ड्रैगन का पावर होल्ड करने के लिए Gnosis एज अ वेसल बनाया. वैसे फ्रॉस्टी वेलकम, कैसा है? मेरे को ये लगा जब उसने कहा ना कि ये 10 थर्ड डिसेंडर का है, तो मेरे को लगा काइंड ऑफ लाइक वो एक वेसल है जिसमें जैसे कि क्या बोलते हैं,
अपना नोवेलेट का पावर लेके उसको कैप्चर करके आर्कन को दे दिया, काइंड ऑफ लाइक जोंगली या इनको दे दिया। लेकिन यू आर ऑल्सो राइट, काइंड ऑफ लाइक वो भी हो सकता है भाई सर्वेलेंस के लिए। तो सारिसा फंसने वाली है गंदे तरीके से इसका, अगर ये सच हुआ। ब्रो ये फाउल और इन्वेंटेड स्टैचू में ना ऐसा इन्वर्टेड स्टैचू में लिंक है क्या? आई कांट से फाउल या बिस बोल सकते हो काइंड ऑफ। नोवेलेट अबाउट टू कट अस अप एंड चेक। वैसे काइंड ऑफ लाइक हम लोग भी एक नोसिस टाइप की हैं यार, काइंड ऑफ लाइक हम सारे एलिमेंट्स कंपैटिबल हैं, जिसको भी टच करो भाई काइंड ऑफ लाइक उसका एलिमेंट हम ले लेते हैं। इट्स लाइक वी आर ऑल्सो लाइक ए नोसिस, राइट? कैन होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स, यस ट्रैवलिंग कैन होल्ड। पर गेम वाले साले देख क्यों नहीं रहे? सेल्सियस ट्रैवल को मार के चेस खेलेंगे, लग रहा है मेरे को भाई वही होने वाला है। मेरा तुम्हारा ही है क्या? एक मेरा तुम्हारा ही है डार्लिंग बेटा, वही है लगा क्या? पैक बनाने के लिए रखा लिख रहे हो क्या? रखा क्या? फर्स्ट सब्जेक्ट में भी कार्तिक भाई यू आर राइट, नोसिस है पावर इन इट, नहीं तो स्कारा गॉड नहीं बनता। यस एग्जैक्टली वही मैं भी सोच रहा हूँ कि वरना स्कारा गॉड नहीं होता, क्योंकि मेरे को लगा काइंड ऑफ लाइक नोसिस पावर तो होल्ड करता है, वरना स्कारा गॉड नहीं बनता। यू आर राइट, सम काइंड ऑफ पावर होल्ड करता है नोसिस, इसलिए नोवेलेट ने दे दिया, नहीं तो फाउंटेन को और पनिशमेंट मिल सकती है। मे बी काइंड ऑफ यू आर राइट। इट्स लाइक मेन बात ये है ना कि अभी तक बाकी जो आर्कन ने नोसिस दिया ना, उन्होंने काइंड ऑफ लाइक हाइड्रो आर्कन की तरह उन्होंने अपना सीट नहीं तोड़ा। इट्स लाइक उन्होंने हाइड्रो आर्कन को इट्स लाइक उन्होंने आर्कन को नहीं तोड़ा है, चाहे उसका जो सीट है, जो 7 सीट है, जो कहते हैं ना, जो 7 थ्रोन है, उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने बस एज ए नोसिस गिफ्ट कर दिया है। तो अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या बोलूँ। मेरा दिमाग अभी लिटरली बहुत कुछ से भरा पड़ रहा है। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। सस्टेनर हैव अ प्लान फॉर अस, यस यू आर राइट, सस्टेनर हैव अ प्लान फॉर अस। फर्स्ट डिसेंडर है ना? हाँ यस। हु नो सारिसा कलेक्टिंग नोसिस टू रिवाइव थर्ड डिसेंडर विच वाज हर लवर। ये भी हो सकता है फ्रॉस्टी, यू आर ऑल्सो राइट, मे बी। अच्छा तो सारिसा क्यों उसका झुंझुना बनाए कि ये जो तुमने बोला थ्योरी फुल्ली रॉन्ग है। अगर उसने ड्रैगन चाहिए तो वो इसको ही किडनैप। ड्रैगन है क्या सारिसा? अरे सारिसा किसी कुछ और करना चाहती होगी नोसिस से, ऐसा कुछ नहीं है। सारिसा का कोई और प्लान होगा नोसिस से, ऐसा थोड़ी कि उसको ये करना है। बहुत कुछ हो सकता है नोसिस से यार। आगे बढ़े क्वेस्ट के, आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते। चैट पढ़, बेब्स पढ़ रहा है। Who knows सारिसा? अरे ये भी तो चैट पढ़ लिया, और कौन सा चैट पढ़ो तेरा? Did I miss something? और आइजन रिया डार्लिंग से मिलू भी नाम है। हाँ तो एक एलिमेंट होना चाहिए, नहीं एक सेकेंड रेवन भाई मैं समझा नहीं। वही था, पढ़ लिया तूने। ओके सेकंड कौन है? सेकंड कौन है? फिर जोंगली डिसेंडर नहीं है भाई, जोंगली आर्कन है, वो तेवत से ही बिलोंग करता है। द ओनली सॉल्यूशन। अच्छा इस पर कल डिस्कशन करेंगे काइंड ऑफ, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। हाइड्रो आर्कन को करना पड़ा थ्रोन डिस्ट्रॉय की, नोवेलेट को पावर वापस मिले। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अगर ड्रैगन को उनको पावर वापस चाहिए तो मेरे ख्याल से काइंड ऑफ लाइक उनको थ्रोन अपना पहले मतलब गिव अप करना पड़ेगा, या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या कुछ तो करना पड़ेगा। तब भी मेरे ख्याल से जो राइटफुल ऑनर हैं, जो ड्रैगन्स हैं, उनको वापस मिल पाएगा उनका पावर, ना ही कि नोसिस दे देने से। मेरे को जहाँ तक अभी मैंने क्वेस्ट किया तो मेरे को समझ में आ रहा है। इट्स लाइक भाई राइडन शोगुन को अपना थ्रोन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जोंगली को अपना थ्रोन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नाहिदा को अपना थ्रोन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी जाके सारे ड्रैगन्स के जो राइटफुल ऑनर हैं, जो राइटफुल रूलर हैं, उनको मिल पाएगा। राइट स्पार्क भाई? यप ओके यप। एलॉय 5th डिसेंडर है, यस एलॉय 5th डिसेंडर है गाइस, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आई है। मैं कह रहा है कि एक एलिमेंट मिसिंग है, काइंड ऑफ लाइक एंट्रोटेस वेट। सारिसा ड्रैगन कैसे किडनैप कर लेगी? नोवेट यहाँ से है। साले पागल है क्या बे? एड्रो सराबी कार्तिक, तब तो सस्टेनर भी उठ जाएगी। सस्टेनर पता नहीं क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो सस्टेनर का क्या चक्कर है, आई हैव नो आइडिया।
अबे चुप बे भाई साले, आराम भी पत्ती नहीं, ठीक है फ्रॉस्टी, नो 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 फालतू बात। ओके अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया, हिट दैट लाइक बटन, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुमारो। ओके अगर आपको कोई डाउट्स है, चाहे आपके पास कोई थ्योरी है, आप जो जानते हो, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हो आके, डेफिनेटली एक्सप्लेन करना। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को भी सही करना। विलिंगफुली भी दे सकते हैं वो अथॉरिटी, बट सलिच्चा करने नहीं देगी। हाँ यस यू आर राइट, विलिंगफुली भी दे सकते हैं, पर वो सस्टेनर आ जाएगी ना भाई, मारने उड़ने भाई। इट्स लाइक भाई हम अपना भाई आर्मी भेज दे रहे भाई, ऐसे कैसे तुम दे सकते हो भाई, तुम अपना अथॉरिटी। यस कार्तिक भाई यू आर ऑल्सो राइट, विलिंगफुली नहीं दे सकते, लेकिन हाँ यू हैव टू भाई, तुम लोग का ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे पास इनफ पावर होना चाहिए कि तुम भाई हेवनली प्रिंसिपल को भाई चैलेंज कर सको। क्योंकि अभी तक मेरे को लगता है आर्कन के पास उतना पावर नहीं है हेवनली प्रिंसिपल को चैलेंज कर सकते, नहीं तो भाई जोंगली कब का कर देता होता तो, क्योंकि भाई सबसे पावरफुल आर्कन वही है। अभी नेटलन आएगा 5.0 में मैप, पर तब तक हम क्या करेंगे जब मैप में एक्सपेंड नहीं होगा? कुछ नहीं करेंगे भाई, अभी सारे फीलर पैच, ठीक है अभी सारे फीलर पैच होंगे, इधर उधर भाई एरिया आएगा, थोड़ा बहुत आर्कन क्वेस्ट का थोड़ा सा मिलेगा, एक और आएगा, एक और पैच आएगा जिसमें हमें सिबलिंग्स के बारे में पता चलेगा कि हमारे बहन क्या कर रही है। काइंड ऑफ लाइक मैं अभी ईथर ले रखा, तो मेरी लुमीन क्या कर रही है, मेरी सिस्टर क्या कर रही है, उसमें उसके बारे में पता चलेगा कि हाँ हमारी लुमीन क्या कर रही है। तो इट्स लाइक ये तो आर्कन क्वेस्ट हो गया। अब आएगा जो हमारे बारे में रहेगा, तो 1-2 पैच में वो हमें पता चलेगा वो क्या कर रही थी फाउंटेन में, समझ गए गाइस। जोंगली इज इन कॉन्ट्रैक्ट विथ हेवन, एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट में है, पर आई डोंट थिंक सो कि जोंगली ज़्यादा उतना पावरफुल है कि वो डिसेंड आई मीन हेवनली प्रिंसिपल को चैलेंज कर सकते। ईथर कैनन एमसी रियांस, हाँ यस ईथर इज अ कैनन एमसी, इसीलिए मैंने रियांस भाई मेरा 21 CR का फ्लावर फीड हो गया। तुम भाई अलग दर्शेडी हो, लॉक क्यों नहीं करते भाई हमारी लूमीन, ओ माय गॉडनेस। यस नाहिदा धमाका रही थी कि धमका रही थी, ओके धमाका क्यों पड़ रहा, धमका रही थी कि डटोरे को क्या मैं भी इस नोसिस को तोड़ दूंगी, तो फुरीना जान के ड्रैगन को दे दिया, बट ये चोमू ने वो धमका रही थी, डटोरे से नेगोशिएट कर रही थी, उस समय अपने को ये सब आइडिया नहीं था ना, और इस चोमू ने इसलिए दे दिया। कियाना तुमने अभी तक समझा नहीं, क्योंकि ड्रैगन अथॉरिटी मिल चुका है उसको, उसका जो रियल पावर है ना नोविलेट का, उसको वापस आ चुका है। इट डोंट नीड नोसिस, उसको नोसिस की जरूरत नहीं है, नोसिस इज लाइक अ यूजलेस थिंग टू नोविलेट, इसलिए उसने दे दिया भाई। इट डोंट केयर अबाउट नोसिस, उसको नोसिस की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही फेंक सकता है वो उसको। आर्लेचिलो ने नोविलेट को प्लान पर, ये भी हो सकता है इन फ्यूचर पता जाए, बट आई प्रेफर क्वांटम लुमिन वाले चैट भी था। अबे भाई कितने लोगों का चैट पढ़ हुए साले, तू सोया नहीं साले, हरा भी है क्या रहा है फ्रॉस्ट, कहा गया हमारा मुल्कू साले, नोसिस ईथर है, एग्जैक्टली भाई नोसिस ईथर। अब पता है बस नोसिस का नहीं, बस चोमू बोलना था लोल। अब ये गलत बात है, ऐसे बोलोगी तो फिर तुम्हें लोग चोमू समझेंगे, ऐसे बोलोगी तो। अरे नोसिस तोड़ दिया तो हेवनली प्रिंसिपल अवेक हो जाएगी, काइंड ऑफ यस यू आर राइट, ऐसे भी तोड़ देती तो यस यू आर राइट, कि तोड़ देती तो हेवनली प्रिंसिपल ऐसे भी अवेक हो सकती थी, देने से नहीं अवेक हो रही है, ठीक है देने से नहीं अवेक हो रही है। चोमू कहीं का ड्रैगन आर्कन के अंडर काम करता स्टार्टिंग से, बाकी के ड्रैगन आइदर सील्ड हैं या तो बात नहीं, या तो मैं आपके श्रेष्ठ पे चैट नहीं समझा, मैं चला मेरा फ्लावर आपको बात लाइट भाई, इट्स ओके आपको मिल जाएगा 23 CV वाला मिल जाएगा अगर होता हो तो। चैट पैड पर सारे 7 एलिमेंट लाइट रम से कनेक्टेड है, तो अगर 8th एलिमेंट आने वाला है तो वो होगा आई मीन 8th एलिमेंट तो वैसे भी हमें पता है, डार्क एलिमेंट होगा ही वैसे यार, डार्क और लाइट एलिमेंट तो आने वाला है रेंड्रोस, वो तो हमें पता है। हमारा जो ट्रैवलर है वो लाइट एलिमेंट को कंट्रोल करता है, काइंड ऑफ लाइक यू आर राइट, आने वाला अबिसल एनर्जी होगा, एक होगा अपना भाई क्या बोलते हैं लाइट एनर्जी, ये दोनों एनर्जी तो आएंगे भाई। 3rd डिसेंबर आएगा तब बवाल होगा भाई, देखते हैं भाई, देने से नहीं होता, देने से नहीं होती, मैं आया लेके उसकी क्या ना सिर्फ तुमने लुमिन को सेलेक्ट किया एज ए ट्रैवलर, श्रेष्ठ ने राइडन को मेंशन किया, ओके
वेट सीरियस मैंने क्या लिखा? ड्रैगन आर्कन के अंडर काम करते स्टार्टिंग से, बाकी के ड्रैगन आइदर सील्ड हैं या तो बात नहीं मान रहे हैं, तो एक ने तो काट दिया। राइडन शोगन, अच्छा राइडन शोगन ने तो काट दिया, पर राइडन शोगन ने किसको काटा? वो तो सांप को काटा ना राइडन शोगन ने। तो सांप ड्रैगन था, काउंट होता है? मेरे को इसके बारे में नहीं आइडिया था। वो जो अपना वो सांप था वो ड्रैगन था, वो ड्रैगन था। अलमित भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। अब वो ड्रैगन में काउंट होता है सांप? वो सोवरेन ड्रैगन में से एक था आई गेस। दूसरा ड्रैगन सोवरेन ड्रैगन पैदा हो गया आई गेस, क्योंकि ये तो भाई वापस से जन्म भी लेते हैं ना। इट्स नॉट लाइक कि हाँ वो हो सकता है। यप यू आर राइट। बट यू गाइस नो द नेम ऑफ अननोन गॉड? नहीं, लॉर्ड मुल्कू है साले। नहीं बताता हूँ कौन है मुल्कू। रुक, लेट मी टेल यू। डॉग पूपिंग इन द विंड। चाइल्ड होगा, और कौन हो सकता है भाई? चाइल्ड की बहन। देख मैंने कह रहा है कि नोवलेट नेवी में सेंस, एक सेकेंड, नेवी में सेंस थे। अजदा को सिल मार दिया, वेंटी को करप्ट, तो राइडन वाले ने भी सीन था। ओके वो तो समझ गया, वो समझ गया। ओके समझ गया आप क्या कर रहे हो। नोवे में सेंस थी, अजदा को सील मार दिया, वेंटी के करप्ट था, राइडन वाले को भी सीन था। यू आर राइट ना, सोवरेन नहीं होगा। मेरे को नहीं लग रहा वो सोवरेन होगा यार। मेरे को सांप सोवरेन नहीं लग रहा था। अजदा सोवरेन हो सकता है, ठीक है। वेंटी वाला भी सोवरेन होने का चांस है। मैंने वो बोला था कि अजदा और वेंटी का दोनों चांसेस है सोवरेन होने का, पर कंफर्म नहीं हुआ है कि वो सोवरेन। राइडन ने तो आइसलैंड काटा था। आई मीन उसने पूरा आइलैंड ही काटा था। यस यू आर राइट, उसने आइलैंड काटा था और भाई ओरोबाशी को काटा। यस ओरोबाशी नाम था। यस ना ओरोबाशी इज नॉट अ सोवरेन। हाँ ओरोबाशी को काटा था। 2019 में ज्वाइनिंग इन दिस गेम ऑन अक्टूबर। अननोन गॉड का नाम ही एडवर्टाइज है भाई। अननोन गॉड का नाम है, जानने की जरूरत नहीं। भाभी बोला करो उसका लग। Imagine 500 of power need to destroy the Hydro Archon throne and the Archon. मजाक कैसे है भाई? वो तो रॉक था। मेरे को लग रहा है भाई अजदहा रॉक नहीं था। अजदहा रॉक में जान थी। जोंगली ने उसको रिफाइन, आई मीन रिफाइन क्यों बोल रहा भाई? काइंड ऑफ लाइक जोंगली ने उसको ये किया, उसको एक बॉडी दी। तो यू कैन से दैट अजदहा हो सकता है। मैंने ये नहीं कंफर्म नहीं कहा, लेकिन अजदहा हो सकता है। ओरोबाशी का एक डिस्क्रिप्शन है, ड्रैगन लाइक सर्पेंट गॉड। हाँ डिस्क्रिप्शन तो है, क्योंकि वो तो भाई इकोनोमिया के लिए गॉड ही था ना। ओरोबाशी तो इकोनोमिया के लिए गॉड ही था। वो तो लास्ट में ओशिनोको का ट्रीटमेंट ना दे बस लोग। वेंटी ने भी आइलैंड उड़ा दिया था भाई। यस वेंटी ने भी उड़ाया है। यस ये सोवरेन क्या है? प्राइमोडियल का कोई वजूद नहीं। सोवरेन इज रियल रूलर ऑफ तेवात। रियल रूलर ऑफ तेवात हैं सोवरेन ड्रैगन। जो 7 एलिमेंट जो ड्रैगन थे वो रियल रूलर थे। बाद में प्राइमोडियल ने एज अ TLDR बता रहा हूँ तुम्हें क्या ना, बाद में जब प्राइमोडियल फर्स्ट डिसेंडर आया तो उसने हरा दिया सारे 7 ड्रैगन को, और उसको हरा के इसने अपना खुद अथॉरिटी बताया जो कि आर्कन से। अब समझ में आ गया। एज अ TLDR आपको बता दिया मैंने, एज अ शॉर्ट फॉर्म। अननोन गॉड का नेम एज हॉन्काई इम्पैक्ट MC। रियली ऐसा मुल्क ऐसा क्या? हाँ नहीं मेरे को लगा डॉग पूपिंग इन क्या बोलते हैं, टोर्नेडो क्या बोलते हैं, हरिकेन। सॉरी हरिकेन ना, हाँ वो था। अजदा वाज अ रॉक। नहीं रॉक नहीं, वो अजदा इज लाइक 200 लगे भाई। आई डोंट नो भाई, मे भी हो सकता है यार। लॉर्ड सेंटा भाई भाई अननोन कैसे हो सकता है? इससे ऊपर की गहरा वीडियो बनाओ, लाइव वीडियो बनाना, सेपरेट वीडियो क्या? आई गेस बनाना पड़ेगा इसको लेकर यार। काइंड ऑफ लाइक मेरे को भी थोड़ा बहुत लॉर एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके मामले में। ठीक है कोई ना, बनाएंगे इसके बारे में वीडियो, डोंट वरी। तो सोवरेन यस जोंगली का खुद का एक फॉर्म है सोवरेन ड्रैगन। आई मीन वो पहले ड्रैगन ही था, उसके बाद वो नॉर्मल जोंगली बना, उसने फॉर्म लिया। यू कैन से दैट कि जोंगली हो सकता है सोवरेन ड्रैगन। पर ऐसा क्यों करेगी कि भाई सोवरेन ड्रैगन को हराने के बाद उसको एज अ आर्कन बैठा दे? ये भी काइंड ऑफ लाइक पर हाँ जोंगली इज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो ये भी हो सकता है जोंगली ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया कि हाँ तुम मुझे नहीं मारोगी, चाहे मेरे पीपल्स को नहीं परेशान करोगी। काइंड ऑफ यस उसमें ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यस यू आर राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। हाँ यस काइंड ऑफ या यू आर राइट, वही वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि तुम मेरे पीपल्स को डिस्टर्ब नहीं करोगी तो मैं तुमको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा।
Yeah, kind of like, yes, you are right. Zhongli was the most powerful. Yes, you are right. Zhongli is the most powerful. वो कॉन्ट्रैक्ट बना, उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा कि हाँ मेरे लिए पीपल को हार्म मत करना, समथिंग लाइक दैट. यस, यू आर राइट. वो सिंप होंगे ना, जैसे आप लोग उसके गलती करने के बाद भी सिंप हो, इसलिए एक साथ कॉन्ट्रैक्ट. यू आर राइट. काइंड ऑफ लाइक जोंगली भी हो सकता है. दिस इज ऑल्सो यो आर्कन क्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा कल पेपर है. अरे फैटम भाई. एंड वाइटी तो मैं कौन हूँ, मैं जिंदगी छोड़ दी हूँ, छोड़ दूँ. कह सकते हो यार. यू आर राइट. जोंगली इज रियल. इंटरेट क्या, एक सेकेंड. जोंगली हो सकता है. यस, वन ऑफ ए सोवरेन ड्रैगन हो सकता है, क्योंकि जोंगली का पहला फॉर्म ड्रैगन ही है. आई थिंक होयो वालों की स्टोरी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. हाँ, वो किधर भी जा सकते हैं भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है. अगर सीनियरों को भाई पेल सकते हैं वो, तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अगर वो $1 मिलियन भाई $1 बिलियन को लात मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते. थ्योरीज बनाते रहो कि एक ही थ्योरीज बनाते रहो कि एक ना ठीक मिली उनमें से, एक सेकेंड, एक ना ठीक मिलनी उनमें से क्या ही फर्क पड़ता है. इंटरप्रेट. ओके, आई सी. ओके, गेम गॉड का मतलब जोंगली इज अ रियल इंटरनेट. ओके गाइस, आगे चलते. ओके, आगे चलते हैं, ठीक है. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Bad luck. Okay, I see. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. Exactly. Let's go to the I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems कुछ नहीं फैंडम भाई. स्ट्रीम पीछे करके देखो जाओ. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. I suspect not. But once in a while I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? ढोकला क्यों कह रहा है? धोखा दे दी. चैट पढ़ गोटे. क्या हो गया भाई? जोंगली अगर होता तो सबको उठा के पटक देता, कॉज उस पर नोसिस एंड सब था. हाँ, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना रे साले फ्रॉस्टी. उसने कहा ना कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है भाई. वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वो अकेला उतना पावरफुल नहीं है. वो ऑलरेडी हार चुका है. अगर ऐसा देखे तो वो प्राइमोडियल वन से ऑलरेडी हार चुका है, ठीक है. उसको ऑलरेडी हरा दिया है प्राइमोडियल वन है, तो वो कैसे फाइट बैक करता? तू ही बता मेरे को, कैसे अकेले फाइट बैक करता? तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है मैं ऐसे आर्कन रहूँगा और मेरे पीपल्स को तुम मेरे पीपल को तुम कुछ भी नहीं करोगे. काइंड ऑफ लाइक उसने ये नहीं कहा ना भाई. मैं चला समझ. ओके, अरे वरुण भाई देख के तो जाओ. अब तो एक फुल बचा है भाई. ओ, ये भी तो हो सकता है ना. है लेकिन अब प्राइमोडियल तो है नहीं. क्यों नहीं है भाई? ऐसे कैसे है कि नहीं है? किसने कहा प्राइमोडियल नहीं है? प्राइमोडियल तो चल अभी तू फाइट बैक मत कर. विश कर C2 फुरीना इनकमिंग. लेट्स गो गाइस, C2 फुरीना इनकमिंग. एक सेकंड, C2 फुरीना से पहले कुछ तो हुआ भाई. रुको गाइस, रियल वेल तो मैं हूँ. देख लो भाई, C5 हो गया मेरा ट्रैवलर भाई. कितने लोगों का भाई ओके, नूविलेट के सामने पुल करते, क्या पता फुरीना आ जाए. गाइस सोचो अगर फुरीना नहीं आई तो कितना स्कैम होगा भाई. मेरा ही सेट 2 पुल नहीं है भाई. गेम वाले कुछ भी कर सकते हैं. हेलो, C2 का वेट है. 1 चीची प्लीज. नहीं, प्राइमर के 4 शार्ट्स हो गए हैं, जिसमें से एक गॉड ऑफ टाइम था जो वेंटी का दोस्त था, एंड वो अब पाइमोन है. अरे ठीक है फ्रॉस्टी, तू अपना ही दिमाग लगा रहा है. ठीक है, चल. Here we go guys, let's go. 100 people थारा किधर गया? अरे पुल मार दिया मैंने पुल मार दिया एक्चुअली. हाय प्लीज, बहुत एंटी क्लाइमैक्स
एंटी क्लाइमेट हो जाए, एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा गाइस अगर फुरीना नहीं मिला तो, ठीक है ना। वी वांट फुरीना। माय प्राइमोडियल वन ने ड्रैगन को पावर से डिफेक्ट नहीं किया, उनके साथ कुछ स्कैम किया होगा। काइंड ऑफ लाइक यस, जो भी किया हो लेकिन उसको तो डिफीट किया ना, तो वो फाइट बैक नहीं कर सकते थे। काइंड ऑफ लाइक C6 लॉल। जल्दी फुरीना इनकमिंग गाइस। इनका का लॉर नहीं पता क्या? रिया तुम्हें मत बोलना कि वो बुक नहीं पढ़ी। बुक तो नहीं पढ़ी साले, तू तो ऐसा लग रहा है तूने बुक पढ़ी होगी साले, तूने भी कहीं वीडियो देखा होगा, ऐसे बैठ के तो बुक तो नहीं पढ़ रहा होगा, इतना फुर्सत पे तो नहीं है। 7 सोवरेन इज प्राइमोडियल 1। एक सोवरेन एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन कर रहा है यार, 7 ड्रैगन को उसने हरा दिया एक प्राइमोडियल 1 ने, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक जोंगली अकेला क्या उखाड़ सकता है प्राइमोडियल 1 का? सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग समझो तो सिंपल वर्ड में तुमको रखे था। अब फ्रॉस्टी पता नहीं तूने किधर का इनका कलर पढ़ा है। हाँ बुक पढ़ा है मैंने, बैठ ठीक है भाई, पढ़ भाई तू, ठीक है। सस्ते वाइट लोअर मत देगा, जनहित में जा रही है, खुद से ढूंढे। हाँ गाइस, खुद से ढूंढो, खुद से समझो स्टोरी। अगर सस्ते लोअर भी काफी है, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक यू आर राइट। अगर तुम गलत हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर तुम गलत हो तो इट्स ओके। स्टोरी इतनी दर्द जाने वाली है गेंशिन की, क्या ही बोले, एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर विल डाई। ऐसे मत बोल साले, तेरी गेट तोड़ देगा मैं। ये मुल्क बहुत हरामी है भाई, किसको बोल रहा है? चाइल्ड मरेगा भाई, पूपिंग हरिकेन इन चाइल्ड पूपिंग इन हरिकेन होगा उसके साथ, तब जाके रहेगी। ओके गाइस, हियर वी गो। खुद से ढूंढने बुक है एक इनका में मिलते, बिल्कुल नहीं ढूंढने वाला। अरे पुल करो यार, पीछे चैट पड़ता। अरे ठीक है, हियर वी गो गाइस। कितना एंटी क्लाइमेक्स होगा भाई अगर मेरे को फुरीना नहीं निकली इस पुल में तो। ओह माय गॉड, अभी मैं तुरंत लॉग आउट करके पीसी में जाऊंगा और भाई वहां से पुल मारूंगा भाई, लिख के दे रहा है। हियर वी गो गाइस। हाँ अबे 4 स्टार की लगता है गया। Okay guys, we got one more pull. कितना पेटी है? One more pull. अबे one more pull. जा रहा पीसी पे एक्स्ट्रा, आई मीन नहीं यूज करना चाहता गाइस, मैं को एक्स्ट्रा नहीं करना चाहता हूँ। 75 हो चुका है गाइस, 75 हो चुका है, 76। ओह माय गॉड भाई, धक हो रहा है भाई यार, व्हाट रियली बैडली भाई। यहाँ पे फुरीना मिल जाए। हियर वी गो गाइस। या ओह माय गॉडनेस, एंड हियर, oh my god, thank you, we got our C2 Furina guys, finally, damn dude, भाई मेरे में जेम्स बच गए। yes, oh hi, let's go, got it guys। जीजी बोलते लॉर्ड, डैम मिल गई, नाइस। यप साले मुल्कू देख ले, C2 Furina मेरे पास ही। अब चलो कुर्ता फाड़ के नाचो। भाई C2 Furina आफ्टर सो लग गया। C2 Furina finally, oh my god, oh my goodness, finally C2 Furina। One more, नहीं बिल्कुल नहीं, अब से सेविंग गाइस, अब से सेविंग फॉर क्लोरेंड। ओके भाई, एक्टिवेट भी कर दिया मैंने। रुको, आर्टिफैक्ट चेंज करना है, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे को फुरीना के। आई नीड हाइड्रो डैमेज बोनस नाउ। हाँ मेरे पास हाइड्रो डैमेज है क्या? अच्छा पड़ा हुआ भाई, एक अच्छा पीस नहीं है मेरे पास। ओके ये वाला पीस है, इसको इनहेंस करो क्या? Do I have a one? तो यह पीस फीड करने के लिए भाई इधर। अभी क्या फायदा, मैं तो इनफ सेटिस्फाइड हूँ। तब बुमली कर दिया तेरे को साले, तेरी ऐसी की तैसी भाग, कोई बुमली ले क्या। लेट्स गो गाइस, क्या ये अच्छा रोल होगा प्लीज। फ्लैट HP, ठीक है। कौन डेफ कह रहा है भाई, कौन डेफ कह रहा है?
पढ़ रहा वेट आपका C2 Furina, what did it cost? Everything about Pucci. Oh hi, it cost me everything. Okay, let's go. Crit damage, very nice, love it. Hey, what do you mean by deaf, guys? ऐसे करोगे यार तुम लोग यार, शर्म नहीं आ रही? हालांकि ये देख क्या कह रहा है इधर, फ्लैट HP फ्लैट Furina भाई, सब साले डेफ लिख रहे भाई, सब डेफ लिख रहे भाई, इतनी हरामी है भाई। ये लो, और भाई और अच्छा क्रिट रेट और क्रिट डैमेज पे जा रहा भाई। लेट्स गो, तुम लोग जितना डेफ लिखोगे भाई उतना अच्छा रोल हो रहा। लेट्स गो भाई, सब लिख रहे भाई, सब ठीक है भाई, लिखो, आई डोंट केयर। Let's go. ओके, डिफेंस में भाई प्लीज एक बार बस क्रिट डैमेज पे रोल हो रहा लास्ट। ओके ठीक से परोदी लगाओ। ऑलरेडी गुड इनफ पीस है भाई देव गाइस, ऑलरेडी गुड इनफ पीस है, आई एम हैप्पी। ठीक है, बस ये वाला रोल हो जाएगा तो और भी बेटर हो जाएगा। मोए शड़ा हो गए, नो मोए गाइस, नो मोए। अच्छा रोल होगा गाइस, अच्छा रोल होगा। आई नो मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है भाई, एकदम परफेक्ट रोल होगा भाई। कम ऑन, ओके क्रिट रेट, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट, काइंड ऑफ लाइक 34 CV, नॉट बैड। $78 188 78 ओवर क्रिट नहीं हो रहा ना? हाँ, ओवर क्रिट तो नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ ओवर क्रिट तो नहीं हो रहा है, बट आई कैन चेंज विद समवन एल्स। मैं ये वाला गॉबलेट किसी और के साथ चेंज कर सकता हूँ। किससे चेंज करूँ? बिकॉज आई नीड क्रिट डैमेज, सॉरी क्या बोलते हैं, इससे कर लूँ क्या, इस चोमू से? 68-207। हाँ, ये रेशियो कैसा है गाइस? ये रेशियो ठीक है, 68 और 207। आई मीन 70% क्रिट रेट अच्छा लगता है यार देखने में। रुको रे एक सेकंड, या यलान से चेंज कर लूँ गाइस? यलान पे HP परसेंटेज भी है यार ये वाले पीस पे, तो काइंड ऑफ ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा रे। क्रिटेड एंड क्रिट डैमेज, नोवलेट से नहीं चेंज करने वाला, नोवलेट का भाई नोवलेट पे रहने देते हैं, काइंड ऑफ लाइक गुड। HP कम है, फ्रॉस्टी C2 उसका HP इंक्रीज करता है। प्रशांत भाई चैट का मोए हो गया है, चलता आप सोने। ओके फ्रॉस्टी जा, चैट की हाय लग गई यार डायरेक्ट को। पारस साले तो सोने वाला था, इधर क्यों मर रहा है? कर वाल चालू एशिया का, एक सेकंड, कर वैल चालू एशिया का है। मोए नहीं हुआ, मोए ओके वेट, मुझे गिनना है लास्ट कौन सा पेज में तेरे आंस हिस्ट्री शोकेस करो, कौन सा क्या मिस लिप, ओके अनबिल्ट वे वाले। I'm confused right now. अरे ये तो इलेक्ट्रो है, ओके मैं सोचा हाइड्रो है क्या ये? यार पहले मेरे को लग रहा था यार जेट कटर ओवर क्रिट कर देगा, अभी तो ठीक है यार, काइंड ऑफ ओके, नॉट बैड। 68 207 174 ER। रुको जस्ट एक बार चेक कर लें, दो कहीं और से क्रिट रेट निकाल सकते हैं क्या? हाँ मच बेटर गाइस, 71 210 162 ER। आई मीन यार थोड़ा सा लॉस हुआ बट इट्स ओके, वी कैन यूज दिस पीस।
ना इधर नहीं जाएगा क्योंकि और मेरा ये चला जाएगा एनर्जी रिचार्ज। यहाँ पे मेरा और भी बेटर हो सकता है बट आई गेस यहाँ पे एचपी है। ये वाला भी पीस नॉट बैड एंड एचपी पर देख रहे हो गाइस कितना एचपी है मेरा यहाँ पे। सिर्फ एचपी है भाई, क्रिट रेट तो है ही नहीं इधर, सिर्फ एचपी परसेंटेज एंड एचपी। मच बेटर गाइस। 71 210 162 ईयर नाइस। अरे फोन बेड के नीचे में कोई नहीं। गाइस फाइनली माय फुरीना इज C2 भाई। शोकेस में डाल देने गाइस, शोकेस में डाल देने दो। मेरे को ना फुरीना का क्वेस्ट करने का मन कर रहा है गाइस, लेकिन अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है यार कि मैं फुरीना का क्वेस्ट करूं। शोकेस पहले रो में डालते भाई फुरीना को। तो फुरीना भाई ऑफ कोर्स राइडन शोगन के बाद ही होगी क्योंकि भाई राइडन शोगन इज जॉड। कोई भी होगा राइडन शोगन के बाद ही होगा। फिर यूला, फिर नीचे आते हैं, नीचे नोवलेट को रख देते हैं, फिर याइमी को, तन्हे, जीन 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 को रख दे क्या गाइस? काइंड ऑफ लाइक जीन को रख देते हैं यार। जीन भी खुश हो जाएगी, कुछ दिन के लिए रहेगी तो। जीन या योइमिया, हु इज द बेस्ट? आई मीन योइमिया। बाद में नोवलेट को भी हटा देंगे यहाँ से, यहाँ जीन रख लेंगे फिर। वाइफल वाइफू भाई जी क्या ना क्रोम की वेट हिस्ट्री दिखा रहे हैं। लास्ट वाली पेज कौन सी लास्ट वाली पेज? कैसी लास्ट पेज? पिटी की लॉल क्या करना है? 76 पिटी 77 पिटी गया क्या हुआ? एक सेकंड गाइस जस्ट मेरे को ना, अरे यार मैंने बेकार C2 बेकार एक्टिवेट किया। बस मेरे को एक बार चेक कर लेता यार डैमेज टेस्ट यार कितना इंक्रीज होता है। अच्छा कोई ना। ब्राउजर हिस्ट्री देख रहा है तुम लोग भाई? डॉट नहीं हो रहा है चैट में तुम लोग? हाँ डॉट नहीं हो रहा है चैट में ब्राउजर हिस्ट्री। हाँ 76 पिटी, हाँ एग्जैक्टली 76 पिटी। Take it easy. Gotcha. Take it easy. पोर्चुगल नहीं टच करेगा। हेलो बहुत तेज हो रहे हो, कुछ ज्यादा तेज नहीं हो रहे हो। पोर्चुगल सर्च कर रहा है। अब और 2 दिन लगेगा। Take it easy. Things are about to get dicey. Let the world collide! Clouds high, the birds call, wind strike. I swear by my sword! 73 के दिख रहा भाई 50। ओ भाई 73 के दिखा मैं। नो वे डूड। अरे भाई अभी तो मैंने क्राउन भी नहीं किया है भाई। अभी तो मैंने क्राउन भाई what the fuck was that damage भाई? अरे मैंने 73 देखा है। अरे अभी तो बाकी है बहुत आगे जाना। चैट वालो मत दो प्रशांत। वेट नींद नहीं आ रही है इसलिए देख रहा हूँ स्ट्रीम। अरे क्या लिख ही रहा हूँ कि अब क्या ही। एक सेकेंड है C0 लेवल 8 में 60 के। क्या ट्रस्ट इश्यू होगा? अरे 74 पिट्टी 75 पिट्टी है। अरे सच्ची में 76 पिटी गया है, सच्ची में 76 पिटी गया। यस वो अभी नहीं शोकेस करेगा किया ना, एक्चुअली अभी शोकेस नहीं करेगा। तुम काउंट नहीं कर पाओगे, उसको टाइम लगता है लेने में। 76 पिटी थी। यप
ना मेरे को नींद आ रही है अब भाई। डैम डूड, अभी मैं क्राउन करूंगा डबल क्राउन तो भाई क्या डैमेज जाएगा यार इस कैरेक्टर का। डैम फुरीना। गाइस कल फुरीना का क्वेस्ट करेंगे, ठीक है? मजा आएगा कल फुरीना का क्वेस्ट करके, क्योंकि और भी बहुत कुछ पता चलेगा फुरीना के बारे में यार। और भाई कल से सेविंग चालू भाई क्लोरेंड के लिए भाई, क्लोरेंड और राइडन शोगन के लिए भाई, राइडन शोगन C3 के लिए गाइस सेविंग चालू। पहले न्यूविलेट का क्वेस्ट, पहले न्यूविलेट का, ओके न्यूविलेट का करो, ओके ठीक है न्यूविलेट का करेंगे फिर फुरीना का। या यू आर राइट, पहले हम लोग न्यूविलेट का करेंगे। न्यूविलेट का पहले आया ना, पहले न्यूविलेट का, नहीं तो वी विल मिस समथिंग, हो सकता है मैं भी मिस कर सकते हैं। तो पहले न्यूविलेट का करेंगे फिर फुरीना। या यू आर राइट, पहले न्यूविलेट का करेंगे, नहीं तो दिखाओ 2 पेटी एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अच्छा दिखाता मैं। डैम, अरे विश्वास नहीं हो रहा लोल भाई, उसको लगा कि मेरा हार्ट बीटिंग, अरे नहीं सीरियसली। काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? ये देखो ऐड कर लेना। अगर आपको आता है तो 15 × 5 करोगे तो 75, 75 + 2 ऐड कर लेना। कितना हुआ? नहीं 75 नहीं, 75 ना राइट? 2 किया कि हमने 1 किया? हाँ 77, हाँ यस 77। वेप कर एक बार, वेपराइज करेगा बाद में, पर अभी नहीं। अरे टेस्टिंग करने बैठूँ ना यार, काफ़ी टाइम लग जाएगा। खेलेंगे पहले एक एक करके राजेश भाई, एक एक करके गेम खेलेंगे, ठीक है? अभी चलते हैं सोने यार, काफ़ी लेट हो गया, नहीं तो यार कल अपना वॉट भी लग जाएगा यार। काइंड ऑफ लाइक वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन फिर ओ भाई 6 घंटे की स्ट्रीम हो गई, व्हाट द फक भाई। गाइस लाइक नहीं किया गाइस, कितने लोगों ने लाइक नहीं किया गाइस? गलत बात है यार, गलत बात। लाइक करना था ना ऐसे। ओ भाई लो भाई, रिफ्रेश भी हो गया गाइस, रिफ्रेश भी हो गया, 1:30 बज गए भाई, व्हाट द फक। रिफ्रेश हो गया लॉन्डो, और मैंने रेजिन भी यूज नहीं किया। नो फकिंग वे गाइस, मैंने रेजिन भी यूज नहीं किया। ओह एल भाई, एल बहुत बड़ा है। वेल, नो वेल गाइस, नो वेलिंग। फ्लेक्स भाई 6 आवर तो है, कोई फ्लेक्स नहीं गाइस, कोई फ्लेक्स। अरे वो ग्लिच था गाइस, वो ग्लिच था गाइस, दैट वाज अ ग्लिच, ओके डोंट वरी, दैट वाज अ ग्लिच। चलो चलते गाइस, ओके? पहले ये बैकग्राउंड सॉन्ग बंद करते, ठीक है? उसके बाद चलते, ठीक है? सोने चलते। काइंड ऑफ लाइक काफी लेट हो गया है, मेरे को भी टाइम का पता नहीं चला रे कितना टाइम हो गया, नहीं तो वरना मैं कब के जाता। तो चलो लॉन्डो चलते सोने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं कल नए स्ट्रीम के साथ, ओके? एक सेकंड में अपना लेवल ऑन कर दूं, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इसको, जस्ट टू बी कंफर्म। यप, तो मिलते हैं गाइस कल नए स्ट्रीम के साथ, ओके? बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट। इतना सपोर्ट दिखाने के लिए यार, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल नए स्ट्रीम के साथ, गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो। कल करते हैं भाई, कल थोड़ा बहुत देखते कल क्या करते हैं, आज नहीं बताऊंगा कल के बारे में, लेकिन कल बताएंगे, ठीक है? मैं तो डिप्रेस हो गया था, कल का एग्जाम कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पास हो जाएगा भाई, जय माता दी करके भाई सब काम हो जाएगा, टेंशन ना ले। हाँ वही चलते हैं, आजकल कर लेना वेब एंड फ्रीज, हाँ वो कल ट्राई कर लेंगे, ठीक है गाइस? मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, हैव अ स्वीट ड्रीम। आज जिनको नींद नहीं आ रही भाई, जाओ सो जाओ रे, लोरी सुनो जाके, फिर नींद आ जाएगा, वरना भाई तुम्हें पता ही है भाई कैसे नींद आएगा, यू नो दैट, ठीक है गाइस? मिलते हैं। हाँ वही ना, 3 दिन से 5 दिन से मुझे लगेगा लेने में, होप एक गुड इवेंट आ जाए। इवेंट तो अभी नहीं आने वाला मेरे ख्याल से, क्या ना, आई गेस टाइम लगेगा इवेंट आने में।
स्वीट ड्रीम नहीं आएगी, अरे कोई बात नहीं, गुड लक, ऑल द बेस्ट आइसन, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो एंड हैव अ स्वीट ड्रीम। आ जाएगी स्वीट ड्रीम भाई, आ जाएगी, टेंशन ना ले, स्वीट ड्रीम आ जाएगी। तब तक मैं अपना बैकग्राउंड सॉन्ग ढूंढ लेता हूँ, किधर गया भाई, इसको ढूंढने में टाइम लगता है भाई। You and me hanging from the willow tree, quiet. मिलते हैं गाइस, गुड नाइट। कल इवेंट आया नहीं आ रहा, आई गेस कल आ जाएगा मेरे ख्याल से, एक ही इवेंट तो आएगा कल मेरे ख्याल से, एक इवेंट आएगा, आई गेस एक आएगा। थैंक यू, पास हुआ तो कल पूरे दिन स्ट्रीम हुआ, अरे भाई पास हो जाएगा, टेंशन ना ले। चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर लवली लवली भाई लाइक्स एंड सपोर्ट। ओके मिलते हैं कल गाइस एंड हैव अ स्वीट ड्रीम। ओके गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट आइसन भाई, गेम गॉड, वरुण भाई, एंड्रोस, थैनस भाई, रिजिस भाई, अंश भाई, और कौन कौन है चैट है भाई, सभी को गुड नाइट, और किसी का मिस तो नहीं किया, कियाना आप भी गुड नाइट, प्रशांत भाई गुड नाइट, और कोई तो मिस नहीं किया ना मैं, कार्तिक भाई, स्पार्क भाई, सभी को गुड नाइट। ओके गुड नाइट, ओके लव यू ऑल। Born from the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see? This is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn.